Ross, sauce it up. Pull up in a ride, yeah, painted with some decals. I ain't never stopped, can't be trusting any females. Got a shorty blog, had her texting through the email. Walking right on top, I won't fall, that's the detail. You can call me or send a text, love. Going solo, but I wish you all the best, love. Now this ain't just perfect timing, place it best, so I've been riding in my diamond, that's my Tesla. Yeah, hit it lick, make a band, yeah, that's what I'm all about. I ain't trust a middleman, had to cash it all out. Black with gang style, had to let the dogs out. Strapped in, blast off, yeah, I'm finna ball out. Yeah, we used to talk a lot, whole thing, same thing. How my lady iced out, neck cold, no games. I always wanna talk about new bags, new things. Now I gotta walk you out, you been so fake. Understand, I don't need you no more. Make a band, I ain't sharing no more. What's a 10? Without me, you a whole 4. You got a plan, now you ain't in it, yeah. Pull up in a ride, yeah, painted with some decals. I ain't never stopped, can't be trusting any females. Got a shorty blog, had her texting through the email. Walking right on top, I won't fall, that's the detail. You can call me or send a text, love. Going solo, but I wish you all the best, love. Now this ain't just perfect timing, place it best, so I've been riding in my diamond, that's my Tesla. That's my Tesla, baby, I ain't next up. Steady, always blowing the money like an investor. Shawty is a tester, always trying to catch up. Now she's always stuck in the past, seeing she messed up. Yeah, you can tell you why you want me, I don't wanna hear it. Yeah, riding in that drop top, headed for the finish. Yeah, rolling with Miami in the back, yeah, we winning. Yeah, put me on a high spot, yeah, I'm finna kill it. Wants some cash quick, put it on a blacklist. If you got a problem with me, I got attachments. Sick of with them ad-libs, I'ma pull a fat trick. Yeah, I'm just doing me, now you cannot match this. Pull up in a ride, yeah, painted with some decals. I ain't never stopped, can't be trusting any females. Got a shorty blog, had her texting through the email. Walking right on top, I won't fall, that's the detail. You can call me or send a text, love. Going solo, but I wish you all the best, love. Now this ain't just perfect timing, place it best, so I've been riding in my diamond, that's my Tesla. Yeah. Adora yoga voice. एक teaser, art effect.
एक PD watch and compass. And what else? I have to repair kit. कैमरा भी है. Okay. और तो कुछ बचा नहीं ना. That's it. नाइट इधर कितना जल्दी खराब होता है भाई. खुल क्यों नहीं रहा है? वाह भाई. मत बोलना I'm gonna crash PL12. ये भी ठीक है. Don't go, don't. एक सेकंड ना, मैं ना थोड़ा फैंस को कर दूं. ठीक है, I mean जो लापी के फैंस है, कूलिंग फैंस पोस्ट पे. चौड़ ये देगा, पता था मेरे को. काम करते हैं, एग्जिट लैग बंद करते हैं, जरूरत नहीं एग्जिट लैग का, और उसके बाद कनेक्ट करते हैं वापस ही आएंगे. भाग भाई. Let's see, इसमें पिंग अप डाउन हो तो नहीं करेंगे. ठीक है, फिर से I'll change the server. पावर रेंजर. हाँ भाई निकित, क्या हाल है? वेलकम टू द स्ट्रीम. भाई मैं दिन भर सोया हूँ, पता है. ये लोगो वाला साइज कुछ ज्यादा बड़ा लग रहा है मैं. राइट. अब ठीक है, छोटा सा. नहीं हुआ है, PLI तो नहीं हुआ है. If it is getting approved, contact the leading SWAT members, Jake Maverick and Peter Smith, because we have a lot of warrants pending about raid warrants, siege and search warrants. So make sure those are cleared, and let's begin with the new ones which are coming in.
because I see a lot of them are still pending and nobody's approaching the SWAT regarding that. Okay. ठीक है. Sure. Acknowledge him, guys. Acknowledge Yes, sir. We'll be going up Yep. for it today, right? If anyone of you has any pending warrant, let me know. You can mail him actually, and you can also be the part of SWAT. The reporting officer has approved. If reporting officer's siege and search warrant is approved by the Leo. Sorry, DOJ department. Then you can also be part of the SWAT they are doing. Regarding the situation regarding the 80s, which is happening on Radio 1, I guess it is happening too much again. So make sure it is not happened, and do a 311 when you get involved in a chase like those. Make sure you have always a partner. Do not go solo, so that he can be of use somehow. That you keep driving and keep eyes on the suspect's vehicle, and the partner will do 311 requesting for backup on the different frequency. That primary frequency, which is 1, which is always not. Make sure it is not for some other things. Okay. Anybody else has any points to be made today? If no one, then I will go. Come you are. Yeah, first thing is about the radio etiquettes, which I am seeing is completely fucked up. As I told you, I need Radio 1 to be there, but you guys are still not understanding. So, tomorrow, as mentioned, we're just gonna have a meeting on Discord, okay? In which we will be joined with a new dispatcher who will be helping you out in a different way of dispatching. Along with it, Yuva will be assisting him as well. So you need to be. It's better you present over there. Else, from the next day, it will be difficult for you to understand how the new dispatch system is working and all that thing. And if somebody is fucking up, we just gonna take directly actions on it. So it's better not to miss tomorrow's meeting. Okay. Next thing is about the this professionalism. That is which I personally feel is being violated too much. Like during the promotion ceremony as well, we are having what we say grenades and all that thing. The person who is like putting up the nails, are you authorized to do that? Like my personal smoke grenades and all that stuff. No one's authorized to take anything of that. Yep. So why the fuck they are why the fuck they are being used during the meetings? Huh? Like you don't know your own SOPs, then trust me, I'm just gonna take SOP exam all of yours. I don't care what rank you are in. 3 of them are today demoted by myself only, which is Jake Maverick, Steve Smith, and one more guy was there. I think it was Matt Cordell. So unless you know your own SOPs, I don't know how the hell you are in the command team. So better if you fail in today's exam, you will be demoted, and during the next exam you should be well prepared for it. Yeah, Mr. Prem. सर नीचे एक इम्पोर्टेंट सिचुएशन चल रहा है, 3-4 सिविलियंस हैंडकप्ड हैं, 5-6 उल्टा पीडी के बाहर. Okay, we'll do one thing. Ash, you there? Ash Anderson. नहीं है सर. No. पीछे बैठा हुआ है सबसे. I guess he's in his mind. Okay, you and Steve. He's here. Sir, hello. मेरी आवाज आ रही है सर? Yes, Ash and you just take care of the situation. What's happening right now? Sure. Yep. Right now, go. You both. Okay. About the warrants, which units are looking into this warrants? Because like any of you were allocated just to clear out these warrants. Just for the 8 warrant. Hello, Maverick. You are not audible. Can't hear you, Maverick, sir. Okay, let it be. Yep. How many current sergeants we have? Sergeants plus 1 is Trey. 1 we have what we say, Hardy and Ash. All okay. Distinguish among yourself which guy you wanna take in. I need all of these today.
because 2 of the warrants are anyways expiring it today itself. Okay. And one is for like shootout inside MRPD. Like he came inside Okay, then PD to shoot. good talk to judge and put his account on monitor, man. If that is the case, seriously, then just do that things. For the shootout in MRPD, we are going to raid him today, so probably we are going to find him over there. Yeah, okay. One more thing regarding account monitoring. So suppose if a warrant has been there for a very long time and you are not unable to catch that person, you can request judge to put account monitoring. So how the account monitoring system works? So whether that person go to any nearest bank or ATM, the system gives you a location of that exact place where he tried to transact. Okay, whether he tried to access his account. So you will get a notification and you can easily go and bust him up over there. So you need to start working on the account monitoring stuff as well for the like long awaited warrants. Am I clear? Yep. Okay. Okay, I think that's it from my side. Okay. So I have a few more points that I've seen is some of the officers are in one situation and once it gets over MRPD, repair your vehicle and just stay in the MRPD, but you do not respond to 37 calls. They are getting ignored by you guys and 71 calls also. There are 71 calls, 37 calls. You stay at MRPD, but when the 99 vehicle, a dispatch call is coming, then you will respond ASAP, like without even hesitating. So don't do that, guys. Respond to 37s also. You will get chased in that things also. Okay, so just avoid ignoring them and the 71s also. So please respond to those calls also. There because they are also important. Okay. Method भी हो रही है and Oxy भी ये कर रहे हैं वो लोग. They are doing a lot of things which are illegal. Okay. I just got one more point. So you remember what a situation happened in which one of our officer was put allegation for trespassing the area and trying to steal something from some place. Okay. I don't know whether it has been done or not because investigation and inquiry is still going on. But I wanna tell if it would have been happened, I won't tolerate it. Like it depends on the report which comes. We're just gonna simply take up actions against you. So as being a cop, you have some integrity, you have some professionalism which you need to maintain. So again, I'm saying I have no idea whether it has been done or not. It depends on the report. But in case even if you think or try to do something, just think twice because your line of duty depends on it. Okay, so stop indulging into criminal activities. Is that fine? Yeah. Fine. Perfect. Yeah, right. Yeah, anybody else has any points to be made today? So if you have, please come forward. The podium is free. Yeah, I'll again repeat After the this point. meeting is over, the spot guy just stay in the room, right? Yeah, just one point from again it was announced yesterday also. So if you are in a reporting, you are not a reporting officer, or if you are the reporting officer, please complete your MW by 24 or 48 hours. If you are not the reporting officer and someone asks you to create one, please change the reporting of. If you are not knowing about the situation, please change the reporting officer in the MTW and in person go and talk to him that he was the reporting one and he needs to write about the situation and inform him directly. Don't just change the name and leave it. Otherwise it happens that after 4 to 5 days when I check, or 3 to 4 days when I check it, there is nothing written, and one of you says that there is he wasn't the reporting officer, and the other one says it's like 4 to 5 days. Don't even know my name was written there and I don't remember the situation now. So when it's not completed, there will be warning given to both of you. It will if it happens again. It was announced yesterday also. I just repeated it. Take it seriously, guys. This one also. One more thing: if if I am the reporting officer and my suspect is not pleading guilty, and if a lawyer is coming up and asking for the report of my incident report, and
just try to contact me by mail or any other. Just I'm giving an example, okay? Because that report might be incomplete. अकाउंट So just मैटरिंग में तो contact the बच्चे मेटा reporting बोलेंगे officer and tell him लॉल that भाई the मैट lawyer मैं was भाई here to डिमोट हो गया take the भाई report, लम्हा so that he will get the देखना रुक मैं information रोस्टर and खोलता he will हूँ complete it. So please, okay? कि रोस्टर वो खोलता हूँ रुक रुक ऑफिसर को ये ना हो जाए कि what if he has to put some more points in the MDW or वो lawyer को मिल जाएगा और he can't do anything. The officer can't put any more points in that. That is why. Okay, so take care of this also. Please make sure you mail the officer who is reporting who has made the report and tell him to complete the. It depends on the report and him that he has completed it or not. Just inform him that he was the lawyer was here to ask for his report and he will do the further procedures whatever has to be done. Okay. Alright. Anybody else? Has any points to be made? Right. Captain, should we dismiss? Yeah, I think you guys are dismissed. So what do we say? Ash, you come with me. All the other officers can go. 4 officers stay behind as well. ReX. Tracer. इसका हाँ yes. Yeah, go ahead. मैंने Yep. अपनी जो शिफ्ट रोस्टर है मैंने I applied for the evening one and the night one. So before the meeting and after the meeting one. And it shows my name Shift in... timing. I didn't look at timing. Let me see. Evening timing is 6 to 2 a.m. and 2 a.m. to I think 10 a.m. right? I did the Morning? afternoon and evening. I put for afternoon. Okay. So who did you send the first? Yeah, you have to send a request for that. Yeah. जो See, there are three. announcement डाली Listen. थी, देखो Rockstar 3 ने, शिफ्ट मैंने है. उसमें दोनों के लिए करा था. देखो 3 शिफ्ट है एक्चुअली. You have to now apply अगर तुम उसमें नहीं कर पाए थे. देखो 3 शिफ्ट है एक्चुअली. One is the morning shift, another is the evening shift, and the third one is the NA shift. Okay. Morning shift. Like morning shift starts I from. applied for 2 and 3. I put on for 2 and 3, but I only got put into Yeah, number the 2 morning shift in is the like roster. from the morning shift or the NA shift is from 2 a.m. to 10 p.m. or 10 a.m. sorry, and then AM. afternoon one is 10 a.m. to 6 p.m. and then after that the evening shift is from 6 p.m. to 2 a.m. So you want it for the afternoon and the evening, right? Yeah, I put it The for thing is, afternoon and evening, like but we I have only a got lot of into- officers, okay, which need to be in the evening also. It's just like balancing, okay, officers balancing officers all shifts. So let me talk to the captain Lamo. and let's see in this, because if you're done already duty in afternoon, there might be someone else who wants to do shift duty on evening time, right? Because he's also willing to do duty. That is why. Okay. Or you can talk to person who is not coming in his evening shift. You can shift like exchange कर सकते हो आप बस उस दिन के लिए, okay? Balance it. Balance the officers on duty. Evening Like in or the afternoon. Yeah, भाई Cordell है. for the past week and 2 weeks, I have given a few shifts, not every single day, but sometimes in the evening. Sometimes, not every single So day. just for now, if you are clocked in right Oh, now, Jake Maverick you are सही में part head of sergeant से sergeant हो the गया. Lol afternoon भाई. shift, clock count, like digital वाला clock out कर देना, because we don't count duty hours for the shift 3 if you are not part of shift 3, okay? And if I want to in future move from afternoon to evening shift, would that be possible? Yeah, that will, yeah. Just permanently help into चाहिए था. evening. Can I get permission only if possible for Explorer if no one is available to use? Because at times when we come in the afternoon or Sure. after 5, today, what huh? happens is that no, not Yeah, today. it's okay. I'm asking. So what happens is that किसी के पास Explorer नहीं होता है, we have off-road vehicles जो off-road चले जाते हैं, Cronwick spin out हो जाते हैं. Yes, but do one If thing. possible. Today for now, just tell me 3-1 me how many. Just go down, check the garage how many Explorers are out, and if there are none, at least one now out, then take out one for today, okay?
तो मुझे बैलेंस करना होता है. If there is any opportunity already and he wants to take out a SCV, then I need to then वो उसको चलानी है ना, उसको फिर उसको भी देखना. नहीं अभी तो होगा. मैं अब तब बोल रहा हूँ जब कोई ऑफिसर नहीं होता जो निकाल सकते हैं. Yes, you ask for permission and you take out. No worries. No. Jason Fernandez was the 20. जैक तब तक मैं MDT कंप्लीट कर लूँ. He can, but if there are officers who can provide the charger, like जिसको allotted है, if they are ready to join, then they can join, because we can. You want me to stay or should I leave, right? Jake? Is there allotted charger? No, stay. Okay, no worries. By the way, Jake, huh? Yep. Yes. There is no, like, in any time there is no officers who are allotted for charges, so I allow some officers to take out charges. Because we need to catch up with the criminals. There's more than it is like. Yeah, just I'm allowed for charges at any time when there is S+37A. Yes. Even if without SIU. Next time don't do 311 because the information goes. There are SIU trials, and so I need to do my SIU trials. Assign them under yourself. Okay, or tell them assign themselves under you, and whoever is assigned under you to come in meeting room. Do not mention anything like raid or something, because the raid is something which should be, like, confidential. Yeah, no, sure. That is okay. See ya. Take care. Bye bye. इसको धरना है क्या? रेड मारनी है. मतलब 4 बंदे रेड मारेंगे. मार सकते हैं, क्यों नहीं मार सकते? ओए तेरे ट्रायल्स कब खुल रहे हैं? अभी तो 2 और काम हुए ना. वे शॉन फिर सिटी में है भाई, उसको कॉल करके बुला लेता हूं फिर. I don't think I have seen him जब से वारंट आया है. Well, तो यार. 7-4 to dispatch. Need officers to go on code 1. Also use the Go Pixel and find a partner. Do not go solo. 10-4, I will advise them they're still on them. क्या ही बोले? अरे और गणेश शेगर इसी के घर पे मारने आ रहे हैं. मतलब राजेश पे. ये नीचे खड़ा है. ये तो. ओए जेक, तो ट्रायल्स कब खुल रहे हैं? 2 तो गए ना, और कम हुआ ना. जेक एक बात बोलो. एक बार 3276 देखो. 3276 का एविडेंसेस देखो. कैन वी डू समथिंग टू दिस? महेंद्र सिंह का व्हीकल वाज, ये व्हीकल 2 बार हमको आज सुबह मैं खुद था उसमें. एक पहले बार मेरे को कांचा उस सिचुएशन में वेनिलियन को मैं दिखा, एंड मैं कांचा को देखा डाउन होते हुए, बट उसका एविडेंस मेरे पास नहीं है बिकॉज़ आई वाज द ओनली ऑफिसर. हां, इसी गाड़ी फिर इंपाउंड तो करती हूं. इतनी 12 इंपाउंड कर दे, कुछ कर सकते हैं. अरे उस पे स्ट्राइक. या विल नीड एक्चुअली जस्ट द फर्स्ट लोग स्ट्राइक्स डाल दो गाड़ी में, और विल नीड अ लॉट ऑफ इंसिडेंट्स टू एक्चुअली मेक अ अरेस्ट वारंट टू दिस गाय. महेंद्र सिंह का कुछ नहीं कर सकते हैं. नहीं, अभी नहीं. मेवरिक कैसा गया तुम्हारा? 3 more officers in the meeting. मेरे साथ 10 for 9. मेवरिक कैसा गया तुम्हारा? क्या गया? टेस्ट. I need food. Huh? Do you have any side? No, anything, nothing. I ordered like 10 murder meals. Zero लोग fishing. Congratulations, I'm on the same page. Yes, what up? भाई हाँ ऑफिसर्स भाई. You still need 2 more, right? I was having a word with the. ये वारंट जितनी जल्दी रेड खत्म करते हो नहीं जल्दी करना होता है भाई. इतना टाइम लगता है. डन टू सर को बुलाओ. डन टू सर. खांडू सर भी ऑन ड्यूटी. अरे स्टीव, तू डिमोट हो गया? हेलो ब्रो. प्रमोशन का वेट कर रहा था, डिमोट हो गया. 2 दिन के लिए एफटीयू से हटा दी. ऐसे क्या कर दिया भाई जी?
हक दिया मैंने कुछ। Alright, I think we are enough now, right? We are what? 8? Yeah, we're 8. Alright, guys, we're going on a garage raid, right? We're gonna be raiding multiple garages of a guy named Jesus, huh? Sean. Is any officer No, doing code a one guy right named now? Ganesh Shekhar. His what do you call it? State ID is 9017. वो अभी उसका 999 आया था कुछ तो भी। गणेश शेखर का हाँ पता है। हाँ क्या कहता? अरेस्ट वारंट नहीं है बस रेड वारंट। कह रहा है कि लैपटॉप नहीं मिला जिसने जेल करा था ऐसा कुछ करके। ये किस गाड़ी में घूम रहा है भाई उसको? वो लैपटॉप का बहुत चक्कर है गाइस। एक और चीज यार मीटिंग में अनाउंस करनी चाहिए, और जब किसी को प्रोसेस करो उसका लैपटॉप है ना, उसका लैपटॉप लेके रख लिया करो ताकि वो ये ना ऐश उधर भी बता दे क्योंकि सब मीटिंग में नहीं थे तो वहां भी अकबर मेरे साथ भी हो चुका है। सीज करने से वापस नहीं मिलता है। नहीं मिलता कभी। नहीं मैं वही बता रहा हूँ, कुछ चक्कर है, आई डोंट नो व्हाई। हाँ आई डोंट नो व्हाई नहीं मिल रहा। किसी लाइक क्वालिटी भी डिपेंड नहीं करती। एक बंदा का नया लैपटॉप तो वो भी नहीं मिला और पुराना भी नहीं मिला, एंड आई डोंट नो व्हाई दिस इज, बट मेक श्योर कि लैपटॉप जरूर उसको रख लेना, उसको बता देना क्यों रखा हुआ है, ठीक है, अलग से, एंड उसको बोल देना कि वापस आके ले ले। जस्ट उसकी केस फाइल में डाल देना एविडेंस ऑफ, जब लेने आएगा तो उसको पकड़ा देना, ठीक है। आई डोंट नो, मोस्टली जीटीए वाले चार्जेस में मोस्टली लैपटॉप नहीं मिलता उनको, पता है? नहीं उससे लेकिन कोई रिलेशन नहीं है ना, क्योंकि जेल टाइम तो लाइक सबका वैसे ही होता है। हाँ मैं बता रहा हूँ कि मैंने जब भी जीटीए का चार्ज लगाया तब भी बंदा बोला कि नहीं मिला मेरे को। और जेक्सर एक और छोटा सा डाउट था मेरा तो बहुत अलग तरीके से। एक वो है वारंट है शाहरुख पर वो 15 दिन हो चुके हैं, लाइक उस दिन करा था डिस्कस, तो वो लोग कह रहे थे कि जाएंगे, बट फिर वो सिटी में पॉकेट शाहरुख पे वारंट है दोबारा? कौन सा वारंट है? मेरे को तो नहीं दिख रहा। 2888 शाहरुख पे तो रेड मार के उसकी 3 गाड़ियां मैंने कर दी थी स्क्रैप। भाई वो तो पहले वाला था, उसके बाद भी एक और हुआ था। हाँ वो पहले वाला तो भाई वो तो सेनेट ने बोला था कि भाई रेड मारा उसको, वहीं पे खड़ा कर हमारे मार्क्स। 2888 तो उमर डाला है। नहीं अभी तो इसको 2888 इंसिडेंट नंबर। अच्छा इंसिडेंट करना था उस दिन बोला भी था, पर वो कुछ इशू हुआ तो वारंट एक बार देख ले वहाँ पे अप्रूव वाला दिखा दे इसको। नहीं अप्रूव है, मैंने भी, अरे मेरा भी अप्रूव है मेगल रॉड्रिगस का काफी टाइम से, लाइक 2 हफ्ते होने हैं, लेकिन अब तक रेडी नहीं कर पाया उसको। मेगल रॉड्रिगस कहाँ? मैंने पूरा लाइक सब कुछ लॉक भी कर दिया था। अरे वो रेसिंग करता पकड़ा गया था विंस क्रैच जगह में। रिपोर्ट नंबर पता नहीं गए। वही क्या जो अपन ने पकड़ा था वो केस। भाई 15 दिन निकल जाते हैं यार। वही रिपोर्ट नंबर पुराना इंसिडेंट। अरे वैसे जेक बैक टू सार्जेंट। कौन तू? कहाँ सार्जेंट भाई? हाँ सीनियर ऑफिसर। सीनियर सार्जेंट। अच्छा सीनियर ऑफिसर मैं। सीनियर ऑफिसर। ये कब हुआ? एक हफ्ते का डिमोट किया। आज ही डिमोट हुआ है ये कब हो रहा है? आज पता दिन में हुआ है। मुझे कब होता है? दिन में हुआ है। अभी वही सुना भी से 10 मिनट पहले भाई 4 क्वेश्चन पूछे। अच्छा रॉक्सर ने। हाँ अच्छा ठीक करना क्या इस पे? क्या नाम है इसका? सबको करते हैं एक बार, मैच सारे कर ही देते हैं। शाहरुख। हाँ भाई शाहरुख पे कंप्लीट करते हैं, सारे वारंट कंप्लीट करते हैं, ठीक है। मेरा एक मेगल रॉड्रिगस आ रहा था, उसके बाद एक और मैंने था, वो दोनों रहते हैं, ठीक है। ऑलराइट लेट्स गो, पहले शाहरुख पे चलते हैं, ठीक है। पहले शाहरुख पे चलना है, शेगर पे चलना है। नहीं गराज रेड वन तो होते रहेंगे। सुनो शेगर ज्यादा एक्टिव है, शेगर पे करते हैं। हाँ शेगर घूम रहा है इधर उधर। पहले शेगर पे चलो और उसके बाद फिर में कुछ करते रहता है फिर। इससे पहले और ज्यादा क्राइम कमिट करे, वी हैव टू स्टॉप हिम। शेगर पे भाई खाना दो। चलो अपने अंदर असाइन कर लो भाई मेरे को। अपने क्या? अंदर असाइन। अच्छा अंदर बोला, अंदर। हां अंदर। अच्छा भाई अंदर। हाँ नीचे आओ, सबको मैं अपने अंडर असाइन कर देता हूं। ए यार आवे राजुंदर। अच्छा मतलब ये सुबह से ही हो रहा है कि सरप्राइज टेस्ट? मेरा भी तो सेम यूनिफॉर्म राइट? हां तुम तो सेम यूनिफॉर्म में हो भाई। मैं उसमें जाऊंगा, डिटेक्टिव में जाऊंगा सिंपल। स्पेसिफिक रेडियो राइट एवरीवन हु इज इन द रेड कम टू रेडियो 6। हमें भी ये वाले कपड़े पहनने हैं ना, बेबी वाले हैं। 97 डिस्पैच। हमें गोली नहीं, ये गोली के लिए तो यह गोली की है, ये गोली किस कपड़ा है, कैसे बात कर रहा हूं? वेस्ट है ना, वेस्ट पहन लेता हूं। हमें भी डिफरेंट पहन लिया, ये देखो। चलो तो वेस्ट पहन लो, पहन दो। फ्रीक्वेंसीज एक्सपायर लुक आना चाहिए ना थोड़ा। आ जाओ। ऐसा है क्या? रुको मेरा काम हो जाएगा नहीं तो आज। कोई साइड है किसी के पास?
खाना साइड छोड़ भाई, यही ठीक है, उतना कौन ही चेंज करेगा। एक्चुअली आई थिंक सब में से सिर्फ मैं ही चला सकता हूँ कि ये भी डिमोट क्या। तुम चलो फिर। नहीं कोई ना इट्स फाइन। बैठो मैडम। भाई अबे सुनो, S प्लस में मत चलाना चार्जर, ब्रेक नहीं होती उसमें, ठीक है? A प्लस पे या जस्ट यूज कोई इट। का फर्क नहीं आता। हां एक्चुअली पासवर्ड ट्रैक वैसे ही CQ में चल जाए भाई, बड़ी बात है। भाई पहले क्या रिपेयर गाड़ी निकालो। तो क्या निकाली है? इसके अलाइनमेंट चेंज मेरे कर को नहीं दिख रहा था। टायर सारे बाहर कर। भाई अभी कोर्ट हाउस जाना पड़ेगा देखने के लिए कहां पे है। Alright, we moving to the courthouse. हाँ मैं रेक्स थोड़ा संभाल लेते, मैं भी आके बैठ जाता। संभाल लेते मतलब? रुक जाते। अच्छा रुक जाता। होरी बोलो। अब ब्लैक फ्लैग मार रहा था वो। व्हीकल डांस क्या चल रहा है बॉयज? हैं सब लोग जा रहे हैं, पैकअप हो गए सब? वेट लिसन अप लिसन कितने लोग हैं? Assign everyone to him, ठीक है? तब तक 3-1 करके डालो कि 8 units are going to be on frequency 6 slot rate। तो ना तुम लोग तुम्हें इतना डाल दो बस। हां नहीं पर श्योर नहीं है, जिसको असाइन करने दो। को भी देखने दो कितने। ठीक है 2 मैं 2 वो 2 ये 6 बाकी का। हर गाड़ी में 2 है राइट? इसमें कितने? नहीं इसमें 3 है ब्रो। हां इसमें भी 2 3 है। Alright, everyone assign yourself under me. एक बंदा का मैं तो आ जा। Alright. Listen, everyone assign yourself to him. 3 क्या नाम है? 3 2 1। हां साइन कर लो फिर मुझे बताओ हां जगह है या नहीं। है मेरे को ऐड कर दो फिर। इसी पे निकाल कर लेता हूं। पीरियड तुम्हारा क्या नेम है? 3-4 गाड़ी नहीं चाहिए। करनी चाहिए तो चलो इसी में चलते हैं। इसमें बैठना चार्जर। बैठो रुको तुम दोनों का नेम है। अरे एंड से जीत बोलने वाला था। हो गए ना? 3 चार्जर में 3 चार्जर में 3 एक्सप्लोरर में 2 ओपन है। Alright, we move to the courthouse. तेरी एलियस क्या बाय द वे मैवरिक? ब्लैकबीर्ड? Nope, we haven't decided any aliases. ब्लैकबीर्ड अच्छा है, रख ले। मेरा स्नेक है जैसा। let's go. मेव का वैल्करी है, कैश का क्लच आई थिंक स्ट्रोक था पहले। और हार्डी का होंडो है। रेनबो 6 खेल लेते हैं ना? अरे चलो मूव करो। भाई बहुत दिन हो गए खेल दिया यार। अपार्टमेंट में बैठ के खेल। हां ब्रो। अच्छा मैं ड्राइव कर रहा हूं क्या? हां पहले क्या गाड़ी बड़ा मैं ड्राइव कर रहा हूं क्या? ठीक है भाई। इसलिए होता है रेक्स होता है। देखो अगर तुम शूमेकर द एक्सपीरियंस मतलब पता है ना, अभी तो बहुत लोग हैं पुराना वाला उसको भी लेके आ गया ना, पीडी में गाड़ी में बिठा दे भागेगा वो ड्राइविंग में। सर पीडी मतलब भागास है। रेक्स बिल्कुल स्ट्रेस हो रखा है, जॉइंट के लिए फोन करना पड़ेगा। हेलो गनशॉट्स किधर हो रही है? फाइट चल रहा है पैसिफिक ब्लफ और डेविस। ग्रो स्ट्रेट चार्जर सीडी हो courthouse. ना झलक फिर लग रहा है एक्सप्लोरर का हैंडलिंग क्या चल रहा है आजकल। मैकेनिक क्या कर रहे हैं भाई एक्सप्लोरर के साथ रातों रात? बात कर रहा मैं वैसे बोल रहा हूं मैं। रूसी तो नहीं था वैसे भाई मन होता है इधर ही ठोक दूं। मंडी भाई
भाई मैं और एरन आज कोई चेज में थे, पीछे एक रेड कलर गाड़ी आती है, बोलता है इसको ठोक। अरे बड्डी बॉय गाड़ी लॉक करो सर अपनी, पहले गाड़ी लॉक कर दो। लॉक है भाई, लॉक है भाई, लॉक है भाई, लॉक we है are right भाई। over here, don't worry. SASPR। ओए रेक्स, हाँ why the hell are you driving like a bandi boys and the babes? हाँ भाई माया। अरे सारे टीम सब लोग का परमिशन हट रहा है ना इसलिए। हाँ सुनो सुनो, आज हम हाईवे पे थे, एक नॉर्मल ए प्लस की गाड़ी में, शायद एरन था, स्टीव था, याद नहीं आ रहा। पीछे एक रेड कलर की सुगोई आती है या फिर जगलर आती है, नहीं पता। भाई इसको ठोक, इसको ठोक, भाई क्यों ठोके, क्या कर दिया? जगलर जो गाड़ी भगाए ना वहां से होगी। FTO सेट आती है। Move. Let me drive. Sexy चलती है ट्रक। Yeah. मस्त चलता है ट्रक। क्या हो? Towards the, what do you call it, the fire station in the first lane. First lane station. Actually no, we're going to the first lane, right? रेक्स, बहुत अच्छा फीलिंग आ रही है मेरे को अंदर से, फर्स्ट लेन सुनते ही। अच्छा बिल्कुल, मेरे को भी। वहीं पे सारे 37 सेल्स होते हैं भाई, सब चला पता नहीं है, सारे क्रिमिनल भरे पड़े। अच्छी है ना, उस पे से मारा बुनता वाले भाई कोई है ही नहीं यहाँ, तो दिखते ही नहीं है। अच्छा क्यों फट गई क्या उनका मारा बुनता वालों की? एमजी की फटी क्या? पता नहीं। कल तो बहुत पीट दिया, इसको भी दूं क्या पीट? अबे हेलो, उड़ जाएगा फ्लाईओवर के ऊपर से, उड़ जाएगा। तुमको ठोकने की बहुत ख्वाहिश है ना? ऊपर जाना है। अरे कोई नहीं, पहुंच जाएंगे। अरे कोई नहीं, आगे से जाना चाहिए। देखो आगे से राइट ले भाई, आगे से राइट ले। राइट लेके नहीं सामने से चले जाएंगे। अरे नहीं, इधर से ऐसे जाके घूम के जाना पड़ेगा, समझ रहे? इधर से सीधा जाएंगे, सीधा जाके फिर राइट ले लेंगे। अरे भाई हटना भाई। अरे हेलो 76 को बेहोश कर दिया भाई तुम। एक्सप्लोरर में भाई इजी भाई, ऑफ रोड व्हीकल क्यों यूज करते हैं हम? नहीं हेलो क्या नहीं है, घुस गया। नहीं, मेरे लिए नहीं घुसा ना, टच भी नहीं हुई मेरे लिए। ना इधर ही रखो तुम। कॉपी। ओह माय गॉड, आराम। अरे मैं सर यार 37 कॉल्स पे बहुत आता है। अंकल पकड़े ना? गाड़ी में से एक बाइक निकाल के बंदा निकला यहाँ से। जस्ट देखा मैंने भी। ये है क्या? प्रॉपर्टी एक बार प्रॉपर्टी चेक करने दो। ये बाबे गलत प्रॉपर्टी की गैरेज में हाथ मत डाल दो। यप दिस इज द वन। यप जेट जाएगा, सेनेट आ जाएगा, सब आ जाएंगे पीछे। ठीक है ना? हां रुक, गैराज कहां है इसका? गैराज कहां है? यहीं पर है। यहां पर है क्या? स्टेट आईडी क्या है? इधर होगा 901। मैं दौड़। गाड़ी थोड़ी पीछे करो गैस अपनी। तुम्हारी गाड़ी। हां इधर पीछे करो। गाड़ी हटाओ सर। सड़क पिरामिड गैस का। Unsuccessful raid. कोई ना गाइस, मूव आउट, कम ऑन। नहीं ये एक ही रास्ता खाली है गैराज। हाँ अपार्टमेंट जब उसको
सिर्फ गैराज रेड है ना, तो जहाँ गैराजेस थे अनसक्सेसफुल भाई पिकअप मैं जो रखा वही डाल सकता उठा सकता 10-4 सी गैराज रेड नहीं है।409 to Maverick direct. Are we going to City Hall? Negative. Move to 10-4. Move to? Move to the apartments. 10-4. अभी किसका है? यही है गणेश या किसी और का? हाँ इसी का होगा एंड शाहरुख का भी करना है तो अपार्टमेंट्स में तो सबकी पार्किंग है। तो फिर उसमें डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? अरे तो लाइक एवरीवन हैज अ डिफरेंट अपार्टमेंट नंबर राइट? गॉट इट। तो उस नंबर के अंदर दे पार्क द व्हीकल्स। वी आल्सो हैव एन अपार्टमेंट देयर। हाँ है, दिख रही है मेरे को। हाँ तो उसके अंदर ही लाइक यू हैव अ एक बात बोलो, allotted, ये हाँ। पीडीएम क्या पीडीएम वाला को वैसे भी बिजनेस नहीं है, बूस्टिंग में सब लोग गाड़ी ले रहे हैं, तो हमको कुछ लोन वोन में गाड़ी देते हैं क्या ये लोग? अरे पीडीएम का सीईओ खुद विन में घूमता है। हाँ वो तो विन में घूमता है, मैं पूछ रहा हम तो गाड़ी ले लें। चिंता एकदम बोला तो। हमको एक्सप्लोरर मेन स्ट्रीट पे रहने बोला उसने। go around and go from the front of the apartment. हम लोग यहाँ पर बड्डी बॉयज। मैं सही साइड से हूँ वो गलत साइड से नॉट माय फॉल्ट। इसलिए ना मस्त अच्छा खासा पिट मारना था। Set up perimeter, set up barriers. I need 2 officers on each perimeter and 2 officers with us, right? मैट कॉडल है क्या? नहीं पहन के लौटे हर ग्रीन एक्सप्लोर मैट कोडल नहीं होता बता रहा हूँ लास्ट टाइम। अरे वो एक खौफ थक गया हूँ बता के। मैं डू नॉट एंटर। नहीं बाद में थोड़ी देर बाद। पार्किंग अरे मना कर रहा हूँ घुस। अरे माय बैड बबल मैं दिखाऊं बबल बनूं मैं मैट कॉर्डल? बबल मैं बनूं मैट कॉर्डल? चलो सर मिलते हैं बाय बाय। सर हमारा गन पे बबल होती है, दिखा है क्या? सीरियसली? हेलो हाँ क्या हो रहा है ऑफिसर यहाँ पे? जस्ट हम गैराज चेक इधर नहीं जाना है बैरियर लगा हुआ है कूद के चले जाओ तुम प्लीज मूव आउट। कहाँ पे? अभी डू नॉट एंटर। एक बंदे का गैराज। लेकिन एक बंदे का गैराज ना? अच्छा ठीक है करो। But I found 90 packets of meth inside. 10-4. Is everything good at the outer street apartments? I see 71 shots coming. What? Sorry? Yeah, this is 71 call right outside the outer street apartment. Just checking if it's good. Negative. Not even on to the next property. पापा मम्मा एक मेल आया है बताते थोड़ी देर में। हाँ अभी नहीं रहने दो। Yes, now we're going to smoke 303. My bad guys. Hello. Yep. Let's go. चलना है? हेलो बेरी हाँ हो गया। Oh my
नहीं मेरे को मेल आया कि Sandy Silla. there will be transfer of items from your 7 hostel to दूसरे hostel. तो give your consent. We will also make a recording जब हम shift करेंगे properly. तो just we need your consent. अगर तुम allow करते हो, नहीं तो फिर तुम खुद आके करो. नहीं तो बाद में करो ऐसा. तो वो रूम फिर allotted रहेगा ना, बात वो है. ऐसा कुछ है नहीं, सब कपड़ा और बुक ही है. हाँ हाँ नहीं होगा, वीडियो रिकॉर्डिंग होएगा, कोई दिक्कत नहीं. एक दिन वेट कर लेते हैं. हाँ वेट कर लेते हैं, चलो बताते हैं. छोड़ो रख जाओ अभी. नेक्स्ट स्टॉप सैंडी राइट. Cougar even इधर होता. खोजो. कुछ रियो. लिखा है लेकिन मिल नहीं रहा है. कोई नहीं, इधर भी ठीक है यार. वीसी होता है. आउटसाइड में है वो कहीं है. वो भी है. या इधर हाँ बग्गा, तेरा काम नहीं है. गाइस जॉइन पीडी मीटिंग. तू मैं जा रहा हूँ. जा सकता है तो जा. बैठना बैठ जा. जाना तो चले जाओ. यस अरे मल्लू आंटू को बैठने दो यार, मजा आता है. बैठना है तो नहीं, मैं ऐसे कह रहा हूँ, बैठना तो बैठ जा. तेरे लिए मैंडेटरी नहीं है क्योंकि ये तो एफआईआर लिखता है ना. बैठना है तो मल्लू आंटी के वॉइस में एक बारी बात करो. हेलो मेरा बहुत. अरे भाई ये मल्लू आंटी भाई, इसने बहुत दुखी किया है. जो मैं नहीं, मेरा काम नहीं है, मैं जाता हूँ यहाँ से अभी के लिए. बाय बाय. कोई बाबा. बाय बाय. आंस भाई रुला दिया बेचारे को. कोई स्ट्रीम कर रहा है ना तो बाद में मेरे को लिंक दे देना, ठीक है? कर रहा हूँ मैं लाइव. हाँ मेरे को लिंक दे देना, आगे फिर मैं पास ऑन कर दूंगा. रुक मैं ही शुरू कर लेता हूँ. मैं भी शुरू कर ही लेता हूँ. यार मैं डेढ़ के बीच में लोग रह जाएंगे ना तो. वो जरा गाड़ी का रेडियो बंद कर देते थोड़ी. स्पीडुल्स तेरे पे K9 है? नहीं K9 नहीं है ना? उसको चाहिए K9. हाँ तो फिर 15 के बाद तू एक K9 रख अपने पास, ठीक है? चाहिए तो मुझे भी वैसे. तू SRU में नहीं है ना? SCU SRU में है कि नहीं है? नहीं उसमें नहीं हूँ मैं. हाँ तो स्ट्रीट रेसिंग यूनिट वालों से हटा दो K9. मैं बात करके ना आरकेडी से उनसे मैं हटवा देता, क्योंकि उनको अलाउड नहीं है ना एसओपी में वैसे भी. उसमें एक आध बंदे के पास रहेगा तो रहेगा K9. अभी मेरे को चलो अभी पहले आई वांट टू नो यू गाइस पर्सपेक्टिव. Okay, first of all, this training is only because of I've been getting a lot of complaints and I've been personally seeing myself as well. Can I help you? That there is some fuck up happening on the especially the drug sale call. Especially the drug sale call. You can also the one thing which I have personally noticed is that. One second. Is anybody here who doesn't know Hindi? Yes. I guess Levi and. Yep, Levi. Okay. Yes, sir. Okay, so I'll keep it in English. करना है क्या स्ट्रीम को? नहीं चलने दो. Stream should be there. Stream should be there. It's okay. Stream is not a very big any issue. Even I am streaming for reference purposes. So the first thing which I've been noticing on my own without any third party feedback is that police is directly what you say seeing somebody handing over something to somebody and going directly, moving in directly and cuffing them up directly. And now here's the thing, if you see that action of what you say selling weed, right? Everybody knows here that emote the character does of selling weed. The emote is that way that the character is hiding that product and he's giving it
discreetly, right? That is correct. यहाँ तक everybody is with me. Yes. यहाँ तक till here everybody is with me, right? So he's handing it over discreetly. So we are not supposed to know that he's handing out weed. But according to our character progression, we know one thing, that whatever suspicion call activities are, most of them are only the drug sales. That character progression is there. I'm not hampering that character progression. What I'm saying is that instead of looking at somebody, clicking their photos, you do that. You keep on doing that. You are waiting for somebody to hand over some product. Keep on doing that. Don't directly go and start cuffing them, gun pointing them, and that push your hands up. I saw you handing over something. We got a suspicious call, and you cuff them up and you get them to sniff and you get them to search. That's it. That is not correct. Let me be very straight and very strict over here. That is not correct at all according to COP RP. Many people over here would understand that it is not at all correct. So what you have to do is that I'll tell you. Hello? Yeah, what jungle? Yeah, should I mute my stream or can No. It's yeah. fine. Yeah, what happened? I just received It's sort of a training for a particular situation. Okay? Yep, yeah. Sort of a, what do you say, back and forth feedback training. Right? Maverick, so now check here as well, anybody Maverick, check specify, here as well. especially the check these non-command, the senior officer, deputy, senior deputy. I want to know, anyone, please tell me how you respond to the drug call. I want to know. Anyone? Shall I answer? नहीं राणा सर, आप नहीं, आप सर एक्सपीरियंस्ड हैं. मेरे को कोई ऐसा बंदा चाहिए जिसको ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है कॉप आरपी का. मेक इट फिनिक्स फर्नांडिस, उसको वो पता है यहाँ पर वो. Anyone who doesn't have much experience of cop RP. बेबी गुप्ता बताना जरा, tell me. ड्रग सेल पे ना. और you only respond to the chases. नहीं ड्रग सेल पे देखो, जाते हैं सबसे पहले तो अगर वहाँ पर दूर से सिचुएशन देखते, वही जो बताया, जो बेसिक सब लोग फॉलो कर रहे थे, तो वही एविडेंस कलेक्ट करते हैं. फिर अगर हमें लगता है कि कोई बेच रहा है और वहाँ पर भी सस्पिशन एक्टिविटी आ रही है और कोई दिखता है, तो उसकी सबसे पहले फोटो खींचते ताकि कुछ रहे दिखाने के लिए. ठीक है, उसके बाद उसको पुल ओवर करते हैं, वो भागने की कोशिश करता है या फिर जाता है कहीं, तो उसको रोकते हैं, फिर उससे बात करते हैं. ठीक है, ये गाड़ी किसकी है, या जिससे ड्रग निकाल रहे थे या फिर क्या कर रहे थे. तो उसके बाद हम लोग प्रोबेबल कॉज नहीं तो रीजनेबल सस्पिशन पे फ्रिस्क करते हैं. सिर्फ अगर बल्ज मिलता है तो आगे करते हैं सर्च वगैरह. फ्रिस्क का मतलब क्या है? बल्ज का मतलब क्या है? टटोला मतलब जेब है उसकी. हाँ, सॉरी टू इंटरप्ट. ये स्ट्रीम कर सकते हैं क्या? हाँ अलाउड है, मैंने लिखा हुआ वहाँ पे स्ट्रीमिंग इज अलाउड. अरे वो तो मेरे को एक बात बता, टेल मी वन थिंग. व्हाट डू यू मीन बाय फ्रिस्क? बेबी गुप्ता, अक्षत. जेब टटोलना मतलब जैसे हाथ रखना ऊपर, जैसे लगे हुए हैं ऊपर से. क्या सीन है? So you found a bulge on somebody. क्या सीन है? You get a message like your character touched the other character. अबे मेरा क्या सीन है ये बताओ. You found a bulge. Does that mean that he has something illegal? मतलब ये समथिंग इलीगल और ये समथिंग टू नॉट इलीगल. आई मीन कुछ उसके पास ऐसा है जो मेटल का है या पोक कर सकता है, या फिर इलीगल जरूरी नहीं है क्योंकि नाइफ भी हो सकता है उसके पास. So how can you confirm that it's a drug? वो तो वैसा, क्योंकि ऐसी कोई सिचुएशन पड़ी नहीं, क्योंकि हमेशा बंदे भाग ही जाते हैं मेरे सामने, तो उसका आइडिया नहीं है हमें. जब तक पहुंचो बंदों पे तो वो भागने शुरू कर देते, तो वो अपने आप ही सस्पिशन में आ जाता है. You haven't had any. Okay, वेट कर जाते हैं. Who is this? Not Ray. Coco. Tell me now, like how you deal with the drug call. Coco, are you there? You want me to tell you how I do it? Because I'm kind of Yeah. Levi. First, I take pictures, a lot of pictures. I post them in markshot evidence, and then before I even make a move, I call 77s. I call make sure I call someone who's experienced, and then what I go is we approach the person, and I actually start questioning him first, because then is
a lot of the times with these 37 calls, they actually set up good RP scenarios where I let them go. So they're handing out some milkshakes, they're doing charity work, they're doing this and that. And if they give me the items, well, I don't check them, I don't face them yet because if their story matches, they have a good story, they're good to go. Like I haven't actually seen what they're given, and so I don't actually have any probable cause to detain to arrest them or anything. So I just go with that. If it turns into a 1080, yes, let dispatch be turned into a 1080. And if it doesn't, and I know for sure he's selling drugs and his story doesn't match, I honestly just try to corner him. I check his vehicle. Is it stolen? I actually try to find some reason to well, not really make an arrest, but to detain him and then further question him. And we request a K9 unit if the vehicle is flagged. We proceed with a Fendi stop, request a K9 unit. But the thing is, I never actually instantly jump the gun and frisk them. I just first you want to make sure you know who they are and get their identity, because half the time whenever they see a cop car, they just try to run away. So if you go and just talk to them first, that's what I do. I try to simmer down before we escalate the situation, turn it into a shootout. Just try to figure out, maybe they're trying to actually create a cool RP scenario, maybe, because at the end of the day, it's an RP server. It's not W chasing. You want to make sure they're not selling drugs, that's true. You want to stop them from selling drugs, but if their story is good enough, honestly, you just gotta, take the L and let it go. That's what I do. And if they are selling drugs, then I ask them kindly, hey, can I search your vehicle this night? Let's say if I am selling drugs, right? Yeah. And accent sorry? No, ignore me. Yeah, you respond to me and you check my ID and everything. I give some excuse, very good excuse, and you leave. Second time you get the same area, same suspicious call. What do you do with me? I'm gonna come back. I'm gonna dispatch I'm gonna request 77s, and then we're gonna, I'm gonna come over to talk to you, and I'm gonna actually maybe ask you inquire more details. And if not, if the story it doesn't start matching up, then I'm gonna request to I'm gonna actually request to further inspect you. Maybe request a K9 unit. I just want to make sure that you're not selling any drugs. So we'll do it the professional way. Request a K9 unit. If there's no K9 units available, honestly, I don't want to go as far as to frisk it and search it, because I don't really have any. I don't have any. Yes, there's suspicious calls, but you gotta keep it realistic. There's a lot of civilians in the area. Yes, you've been there twice, but realistically, we want everyone to have K9 units. Not everyone, but there'll always be a K9. So I'd request a K9 unit, and then the K9 unit comes, and if it senses something, then I'm gonna ask permission to actually, I'm gonna ask you why. Well, first of all, I'm gonna question you about why the K9 is smelling something, and then I'm gonna ask permission to search the vehicle and search you. How long you been doing cop RP? Couple weeks. Never done cop RP before? No. This guy knows more. This guy knows more than the people over here. That is exactly okay. So here's the thing. From now on, I'm setting up some thumb rules. Thumb rules means some in RP on situation rules. These are not like hard and fast rules. First of all, you have a K9. So I'm gonna. Where are we heading now? Yeah. That's Okay. let's go back. For the K9 handlers. I'm just gonna go back to a Okay. Especially. We should go to PD, right? Maverick, should others go back to PD, right? Yeah, hold on. Just need to check one thing. Then. There is one red card. वापस आ गया वो. भाई बीच रास्ता में रोक दे भाई, बीच रास्ता में गाड़ी चलाते जाते रोक दे। That's it. You ask them, what are you doing there? Blah, 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 and all that things. That's it. You cannot detain somebody under reasonable suspicion. Remember that, everyone. You just cannot. You cannot frisk them, search them, or anything, right?
And the next thing comes, let's say that person is, you know, what do you say? After questioning you, use your communication skills on them. As a cop RP player, you should have very good communication skills, according to my perspective. You start using your communication skills. If he's like making shitty excuses which are not matching up, which are not there, you know, which doesn't make sense at the end of the day, right? So that turns into a probable cause. Now there is a second thumb rule which we all should follow, and you all will follow, is that that person is continuously second time or third time seen in that same area handing out stuff. Then it becomes a probable cause. And then you can detain the person, fix them up, search them up, but that should be the last thing to do. That should not be the first thing to do. Now people are doing that, like the first thing they are doing is that directly going, gun pointing, cuffing, that's it, boom, the end. You don't know what he is handing over. He's hiding it. The character is hiding it. Remember that from next time. It is not always drugs. Maybe he's handing out some other stuff. Maybe he's making an RP out of it. Now server mechanics says that with that emote only drugs can be handed over. But that is like OC information. That is metagaming. Okay, so now comes the K9 handlers thing. Now what happens is, let's say this is a drug call area. Now we have an option to use the K9. So we look around. What you have to do, you have to go to the area, look around. If you don't see anybody, you take out your K9 and you tell them to track. Now there is a confusion among this regarding this, right? The first and biggest confusion regarding the track option of K9s is that people believe that the track option is that K9 goes directly to the drug seller. It's not that. K9 goes to the person. It is going to the drug seller, that is server mechanics, but you don't have to consider that. You have to consider that it is going to a separate person, a different person. You don't have to directly go and tell them, okay sir, my K9 I told him to track, and it directly came to you. Yeah, what? Just a thing, there are two specific things when you go to your K9 now. So suppose पहला होता है कि just to track a person, and different just to sniff someone around. So there are two different things. So अगर कोई sniff वाला directly कर रहा है, then yeah, they are misusing the K9. But they can use normal वो कर सकते हैं कि yeah, just find a person who is around. तो वो चीज़ है, वो ध्यान, वो इनको समझना होना चाहिए. वही बोल रहा हूँ ना. The K9 is not tracking for somebody who is selling drugs. The K9 is tracking for the people around in the area. That's it. It is doing that only. Nothing else. Okay, that you have to remember. Now you have come up to an area. You have seen nobody is there. You told somebody that there is somebody. You told the K9 to track, and it found somebody. And somebody is standing there. Okay, so what you have to do, you don't have to go and directly say that, okay sir, my K9 tracked you and you have drugs. No, you have to talk to them simply. What are you doing here? What's your name? If they're wearing a mask, tell them to remove their mask. Okay, look for signs. Let's say the person refuses to show his identity, but you have the proper right to check their identity. Remember that, because he's coming under reasonable suspicion. But if he's like acting sus, which means he's not removing mask, he's not showing his identity, ask him why. And if it doesn't have a very good reason means a very creative RP reason, it will convert into from reasonable suspicion to probable cause immediately. Okay, so the next thing is that, let's say the person complies, he's like acting and telling you, okay, I'm doing this and that, blah blah blah. You can directly tell them, okay sir, I've been getting a lot of suspicious calls from here. Like, it would be very good if you clear out the area. Hans, I'm really sorry to cut you in between. I think can you just repeat it again? Now you made me confused for some of the things. So can you repeat the K9 procedures? I'll repeat that. You have to reach somewhere at the reasonable suspicion call. Point 1. Step 2, you have to check that if there is somebody, you see somebody around the area. Step 3, if you don't, you take out your K9,
You tell it to track for person, people. चैट It भी goes देख रहा था क्या? track. Now पागल that RR409 step, क्या हाल है? point आवाज आ रहा number है, मेरे को नहीं 4. समझा. No, one no, check Hans, the not raid. this one. The starting one. किसका घर Like रेड हो the रहा है? घर first नहीं रेड हो रहा एक्चुअली, thing which गराज you were रेड हो रहा telling था about for the the red scratch 37 vehicles. how cop goes. वो वाला part मैं कह रहा हूँ. That was for the red मतलब scratch vehicles. tracking वाला ना. No, no, not the. Ignore the K9 part. Before that, if somebody is there, like अगर कोई है and K9 Yeah. is not there, वो वाला part एक बार मेरे को Yeah. बता क्या For बोला that था तू? part, हाँ for वो that वाला. part is वो वो तो बता. अभी आया ही नहीं. That part is not even here. I'm covering the K9 part first. Okay, okay, just continue. मैं I'm बता covering the दूंगा. K9 part first. Just Okay. continue. You take out your K9, you tell it to track, or you request for K9. Okay. You request for K9, you tell it to track, it tracks for somebody. Then you go to that person, you talk to them. If they're found for the first time over there, you check their ID and you look for points. In that, you talk to them. You start questioning them, and you have the full right to do that, by the way. If somebody tells you that no, I refuse to, then it will automatically convert into a probable cause. Okay, if they fail बताना to ये रेड comply किस with पे that. थी मैंडे में? But अरे remember, शाहरुख का 15 you दिन से don't पेंडिंग था, have the तो right to cuff that them, was search being them, or frisk them. Remember that. got it. Okay, under reasonable suspicion. Don't directly go. Even if you seen somebody for the first time, you are going there and you saw somebody handing over something, you ask them that what are you handing out, बताया तो. blah blah blah, and everything. You play it smartly. That's all. Don't go by the book. Just a Be garage rig for creative. winch Play it vehicles. smartly. That I saw you handing something. What was it? Blah blah blah, and all that. Okay, you start playing smart, and if the person is complying and giving a very good RP, I don't think that you should have a reason to, arrest them or do something. If they don't have a very good reason, it's okay. It's first time. Tell them, okay, sir, I'm warning you that we are getting a lot of complaints from this area. You should clear out. But if I found you here again, like handing out some stuff, then I will have to frisk you and search you up. आंसर एक डाउट Yeah. है मेरे को. I'll take the doubts. Wait. Okay, Hans, I have a Yeah. conflict on this thing with you. Yeah. See, okay, there is no K9. I see a person handing something. Okay, one time is fine. ठीक है? I'm just waiting. I'm just on a rooftop. मेरे को एक बार कॉल आई. मेरे को बंदा नहीं मिला. मैं रूफटॉप पे वेट कर रहा हूँ. वापस सेम ड्रग कॉल आई उसी स्पेसिफिक बंदे से. And now if you are saying not to detain that guy on the basis of I'm not this. come on the second time yet. I'm still on the first time. No, even on the first. No, you are not understanding my point. Still. हाँ, that is something else. Yeah, so That is for that something I'm else. saying कि Yeah. पहली बार मैंने देखा ही नहीं Yeah, I बंदा है, have to बस मेरे cover को that call- point. Yep. Thank you for reminding me that as well. भूल गया था मैं. I forgot. Okay. Till now everything is clear. Whatever I said till now, because I'm gonna discuss the other point. Yeah, Gautam. हाँ सर. सो लाइक हम जब भी 37 पे रिस्पॉन्ड करते हैं, सो एक ऑफिसर बात करता है एंड बाकी के एविडेंस लेता है. सो जो एविडेंस जब भी ड्रग सेल्स होता है तो उधर लाइक वीड के बैग्स या ऐसा कुछ का फॉरेंसिक होता है वहाँ पर. तो वो एविडेंस यूज करके हम डिटेन या अरेस्ट नहीं कर सकते उसको. Forensics होता है मतलब क्या होता है? मतलब मैं बताता हूँ. वेट गौतम, मैं बताता हूँ. हंस, वो हुआ क्या था PD एक दिन meeting. कि Yes, I-24 PD तो meeting. वहाँ पे एक और क्या हाल 37 है? कॉल Welcome था. to the stream. That guy had 89 weed baggies. तो बेसिकली सर्वर मैकेनिक्स पे दिखाता नहीं है कि वीड बैगेज या नहीं, बस उस पे लिखा रहता है यूज्ड टू सेल दिस ऑन द स्ट्रीट्स. अब वो बंदे का आरपी इतना अच्छा था कि वो बोल रहे थे कि ड्राइड स्पिनच है उसके अंदर. ठीक है, तो मैंने अभी के लिए मैंने हार्डी सर को या किसी को तो पूछा था, बोला था कि उसके ऊपर है हम लोग का कि उसके अंदर वीड ही होता है, तो उसके लिए अभी तुमको सीज करना होगा. तो मैंने बोला कि देखो अभी मैं इसका रिपोर्ट बनाने जाऊंगा फॉरेंसिक्स में, लैब में जाऊंगा, तो मुझे वो वीड ही निकलेगा. तो मैंने सारा सीज किया था. इज दैट करेक्ट? You can take one pack from them. I mean, being a police officer, won't you know the difference between a weed pack? Give 1 minute. You can smell it out, but that is a very fundamental thing. Forensics में do we have that mechanism, by the way? I don't think so. No. No, वो बस खाली आरपी के लिए है वो चीज. that is your RP. है हमने किया नहीं अब तक. अगर हम ट्रैक डाउन करने लगे ना, जितनी गैंग्स है सबको ट्रैक डाउन कर लेंगे एक ही दिन में. कौन क्या बेच रहा है. That's the thing कि अभी वो के चलो लिए नहीं मैंने किया वो. किसी को वो रिवील नहीं किया, like how we can track the sellers.
Okay. The thing is, you get the forensic for that while selling. अभी तक मैंने किसी को बताया नहीं. Let's not talk about that. You tell Gautam this point. You clear out with Hardy and Abhishek later on. Okay? Not on streams. Okay? I don't want this on streams. This thing is hidden. Let it be hidden. Okay. Any other doubt till now? Because this. Okay, I have something to say. For example, somebody is selling something on the street, right? Yeah. So if you look over there from the torch, वहाँ पे drug sale के लिखे रहते हैं, like evidences रहते हैं. So can that be a probable cause? Because that person is directly Ask the person. Ask the person. That I've been. ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे वीड पड़ा हुआ है, ये किसका है, ये वो. एंड ही विल से मुझे मालूम नहीं, मुझे नहीं मालूम किसका है. ठीक है, यहाँ पे एक बंदा था. ही विल गिव यू एन एक्सक्यूज that there is that okay there was somebody over here and he was handing out something as well. अबे बहुत सारी पुलिस आई थी हमारे घर पे, क्या सीन है? But I am not selling. Oh, कुछ नहीं, normal. That is still, by the way, पुराना garage check था वही. That's it. Yeah, that is still शाहरुख suspicion. नहीं, बट सर हम बोल रहे थे कि अगर वो बंदा बेचते हुए देखा हम लोग तो कब पहले पकड़ा था, बहुत 15 दिन पहले पेंडिंग था. But still, it can be anything. You cannot assume. Pre-assume नहीं करना है. Nothing. बस garage में देखने आते हैं when vehicles आए. What is the proof that it came? शाहरुख का ही देखा है. तुम लोग ऐसे कर, तुम लोग में भी है क्या? वारंट डालता हूँ. क्या नाम है, नाम बताना. पूछने आया इतनी पुलिस हमने अपने घर पे. इसका कुछ बोलूं एग्जांपल. उनका वारंट निकला है, बता के क्या करूँ. So आप देखे वो कुछ और लोग भी रहते हैं. अरे कॉल लगाया था, कॉल नहीं लगा उसका, और क्या. You have seen something like he's exchanging with the locals, not once, twice, thrice. Okay, you're standing and observing, and you got only once the call of suspicion activity. Now you go there, you ask, and he says, "No, I was giving some chocolates or biscuits." But और लोग भी रहते हैं ना, सब समझ रहे हो. When you get to the PD, when you're getting the evidence of लोग रहते हैं, बहुत aggressive लौंडे, पेल पाल दिया फालतू. The pocket is empty, no traces of any kind of suspicious substance in his pocket. Now करते बाद में बात करते हैं, मीटिंग में वो, मीटिंग में वो. Now tell me, how will you prove in the court that he was exchanging weed? While if you check the pictures also, he's hiding something under his hand, and lawyer will argue that we get the got it. उसमें अरेस्ट होगा ना, उसमें डायरेक्ट सर्च तो कर ही नहीं सकते. He will get arrested, but on what basis? On what basis will arrest? Have you seen what he's exchanging? Let's not confuse that. The simple rule is that when you spot somebody for the first time handing out something and you get a call from there, right? Sorry, you get a call from some place and you spot somebody handing out something, that comes under strictly under reasonable suspicion. You're allowed to investigate on that. You're allowed to talk to them, get their ID, question them, and if they refuse to do so, you have to tell them, okay sir, I will be detaining you if you refuse to comply. It's as simple as that. Hello, and they have to, but always remember, as a police officer, you have to be transparent as well in some things. You have to get to things, like you have to tell them that, sir, okay, I won't be searching you, but I'll be needing a positive ID on you. Okay, so that thing should be there. Always remember that. Now also, comes the what? Also, just when Hans says, if they fail to comply by not giving their IDs or not removing the mask, it gives you probable cause to arrest them based on they are disobeying your orders as well as obstruction of justice. Like, you need to know it's legally. Because when you respond to a suspicious activity call, your investigation starts, right? Your investigation starts. You get into situation legally. You are getting into some situation, and you are what do you say, investigating on that area. So if somebody refuses to do so, they're hampering your investigation. Somebody is interfering and they're hampering your investigation, or let's say somebody is refusing to do so, to comply, so that comes under obstruction of justice. That will convert into from reasonable suspicion to probable cause immediately. Okay, now comes the second point, what Rock said. Now let's say I got a call from the area, I saw somebody handing over something, and I decide to wait. I don't go and talk to them. I decide to wait. I see them handing over some stuff. Okay, now what happens is they're handing over stuff
And again I get the call, I see them handing over stuff, again I get the call of what do you say, this thing, reasonable suspicion call. So that will become reasonable, from reasonable suspicion that will become probable cause immediately, because you saw them handing over लोगों को something text करता है and then you were like and the call also came from हाँ that भाई area. So that is करो like messages basically right in front of you ओ a जिमी drug sale happened, because a local called you up and said that a drug sale is happening over here and you saw हाँ जी somebody हाँ handing over जी some ओए stuff. बकचोदी नहीं ये पर्सनल Is this नहीं point बड़े clear? ओए Okay, Hans, I think many people will be again not cleared about your last बढ़िया Yeah, line. सब you clear it out then. Yeah. You clear it out. Okay. बहुत लोग का माइंड में ये होगा, अगर रीजनेबल सस्पिशन है तो हम डायरेक्टली डिटेन क्यों नहीं कर रहे. तो जस्ट अ थिंग, अगर तुम्हें कॉल आया, तुमने हाँ देखा कि उसको पकड़ते हुए, हाँ तुम जाओ, तुम डिटेन कर सकते हो, बट as a part of PD, we are requesting you to provide a little bit more RP. तो पहले जाओ बात करो, and if he is like completely denying your what we say words, then yeah, go ahead for a detain. But yeah, don't just directly go and cuff. ये कहने का मतलब है हमारा, you are authorized to do it, but prefer to give more RP to the person. Are you getting us? Like ये point है उसका, Hans का, to provide more RP rather than going directly go and simply cuff him. Is it clear या किसी को भी इसमें डाउट है? Anybody has any doubts? No, sir. Okay, बीस yeah, so you मिनट का can मीटिंग detain बोला him था, 1 and घंटा हो गया. okay, एक चीज और बताता हूँ. Frisk कमांड में क्या होता है? Frisk is about आप नहीं guns आ and सकते all क्या that thing, तो मीटिंग drugs में नहीं आते. तो मैं मोस्टली अगर हूँ उसका तो गन नहीं होगा तो वो ज्यादा कुछ इशू नहीं होगा. तो बट RP करो पहले, उसके बाद ही जाओ उस पे डिटेन. नाम क्या वैसे आपका So don't go directly, please. Like that's a request from किधर? Hans. आपका नाम Now comes the माया second माया point, the main point. किधर क्या होता है यही पे नाम Now, पूछूंगा ना what और क्या if you पूछूंगा found somebody in a suspicious area called, you had an ID check on them, and you warned them, and you left the area. And now again you got the call of drug sale from the same area, and you found the same person. And you then ये what कल to कौन do, सा इमोट right? था वो Then भूल गया it comes under probable cause. अरे It कल जो directly पहाड़ comes चढ़ते under हुए probable cause when it's their second time. But don't start pointing weapons directly on the people. Okay, don't start cuffing them. Okay, there's somebody hiding in the bush. Fuck. हंस Yeah. मेरे को एक चीज बतानी थी कि I have seen Can you please officers go outside? arresting You know, I have something. I have not something sorry that belongs arresting to you. detaining people in felonies. Belongs to you. Yeah, felony Yeah, stop take is the there. Felony, six. they will be But detained. हाँ. नहीं Let's see the detain ground. like What the hell? without proof वाला सीन बोल रहा हूँ मैं. There is मतलब कि कैसे, मतलब समझ आने में. I mean, there Not is getting you it. don't have any Can you please go reasonable outside? suspicion or probable No, cause. oh my, thank you, man. Under felony stop ना. Felony I mean तो felony होगी stop नहीं हुआ है तभी ना जब जब कोई नहीं probable नहीं cause. अरे suspicion हो या बट probable नहीं cause बिना मतलब का हो रहा है मैं That ऐसे was बोल very रहा हूँ. mean of you. I didn't like that. he means to say that कि वो felony stop without reason नहीं हुआ होना था चाहिए था. इंस्टेंस से वैसा हाँ ऐसे मतलब एक बार नहीं हुआ, मैंने ऐसे 3-4 बार देखा है उस So हिसाब से. if you have clips for that, just forward कर दे हम नहीं देखते बस मैं ऐसा बता रहा हूँ, ऐसे No, क्लिप्स no, no, वाला no, सीन no, नहीं है, no. जस्ट टू लेट I'll यू I'll be नो. I'll be very clear on the felony stops. There is कल only कल there are हंस भाई कल yeah. करते हैं ना इस पे बात. कल मीटिंग है हाँ ना उस चीज की. कल कल करते हैं करते हैं इस पे. इस पे कल करते हैं. वैसे भी there will be training sessions like this on particular situations frequently. So yep. Walker, do one thing. Take the screenshot and let me know who the people who did not come and who did not post up a reason or DM you or me or anyone the reasons. Okay. I will take some sort of action against them. Okay, and let them know as well. So now comes the main point, is that second time what you do. Now you go there second time, you see the same person and you tell them, okay sir, I have spotted you again over here and again from the same area I'm getting the same call. So what I'm gonna do, don't start directly pointing weapons and cuffing them. Don't do that. That is like dirty job you're doing. हाँ तो पर Directly just going in, pointing the weapons and telling them to put their hands up, and if they ask, you just say, okay sir, you are second time here, so I'm gonna cuff you up and I'm gonna search you up. No, you have to talk to them. RP is not cuffing somebody. I'll tell okay, out of the topic. Okay, it's
off topic from this training. The biggest L a cop can take is the paperwork, in my opinion, personally. Is arresting somebody, bringing them to PD, take the fingerprint, attach photos, blah, blah, blah. That is the end of cop RP, in my opinion. That is the end of cop RP. You're stopping your own RP that way. Okay? So you don't have to directly go and start cuffing them and start searching. No, you have to go and talk to them. Talk to them and okay, sir, this is happening again. So what I'm gonna do is that I'm gonna bring my K9 if you have a K9. So there are two situations. First, the K9 thing. I'm gonna bring in my K9 and he's gonna sniff you up. And if you find something suspicious, and then we'll go search you up. And if everything is clear, you are free to go. But if everything is not, you'll be getting. Okay. Now here comes the next thing. The other person, now you will say that the other person doesn't comply. Obviously, he won't comply. Why would he comply? He will start arguing with you. It's as simple as that. Okay. He will start arguing with you. So what do you have to do? He's not complying. Obstruction of justice. Again, the same point. I'm checking something. You are under a probable cause and you are not complying. So you have to use force. You tell them. You exchange dialogue. No need of comms. You three of you keep visual. Okay. Is there any 80? वीड है वीड फूक ना नहीं नहीं है नहीं नहीं है. You will get a smell of food when you examine me. Whenever I smoke weed, you get or like when you will examine me after like. हाँ वही मेरे को चेक करना था वो वीड वाला. तो that not happens like that. You have to like you have a thing police action then examine target. I got it. I mean, no, this is not RP. This is competitive fucking RP. Competitive. Is it positive? Huh? This is not good. Huh? I don't want this in my PD. I'm actually trying to मेरा GSR positive है क्या? Many days I've been observing a lot of things. I've been third party complaints. I've been observing myself. I shot a reverse like that's it. Less of talking is there. It's a more rubber of cuffing bullet. and shooting is there. Why? हाँ rubber bullet आ जाते हैं. You talk to them. If they don't comply, then you tell them that okay, sir, I will have to use force. I'm gonna cuff you up and I'm gonna search you by force then because you are under a probable cause now, and I have the full authority to do that. Okay. Now then you can cuff them up, search them up, and if you don't find anything, you let them go. If you find anything, then you take them. That's it, Ranger PD. Now if you don't have a K9. Now the second point, if you don't have a K9, if anybody wants to make notes of it, make notes of it. Okay, he's not saying. Maybe you will remember this, and my stream will be there. It will be public. You can anytime get into that thing, get on the stream and check the thing for reference. If you don't have a K9, second time you saw somebody in the same area, you talk to them. You tell them, okay, sir, this is happening. Please tell me that what is happening. Why are you doing this? Like, what are you handing out? But he will say, I told you I'm handing out some, let's say, something. Okay, but you tell them, no, it is not that. Now I know because the local called me up. He said that somebody is handing out something very suspicious over here, and you are found here for the second time, right? And you talk to them and you give them a chance to talk back, right? Now, then if the story doesn't match up, as Levi said, story doesn't match up, is giving very shitty reason, you detain them and cuff them up and search them up. Is everything clear till here? Everybody, anyone has any shitty question you have, put it on me and I will answer it very calmly and systematically. मेरे को एक डाउट है अंशु भाई. अभी कल देखे हमारे पास K9 नहीं था, राइट? In that case, can we use that mechanism of examine target या नहीं? Examine target is there. Can we use it like अगर वो weed use कर रहा है हमको? Examine target is simple. I'll tell you. Examine target is like just stand at one place. Examine target is simple. Examine target is nothing but what you see. What are you seeing? IRL, let's say you're standing in front of somebody and where is it? Police actions. Examine target. And you see that, okay, why are you sweating? Why are you breathing so heavily?
right? Yeah, got it. It is like that only. Yeah, even if you like smoke make na, a though reasonable it's suspicion. like comes like smells एक like मिनट मैं ये smoking आपको दिखाना weed, या चाहता हूँ फिर it smells like हाँ alcohol if एक you मिनट drank एक मिनट alcohol. मेरे पास That's वीड only है for ये like our यूज करता हूँ personal. मेरे पास वीड है एक बार चेक करो ना वो आपको स्मेल कर रहा है क्या मैं वीड पूरा स्मेल करने के बाद एक मिनट रुको मैं वीड स्मेल कर लूंगा हो गया ओके उसमें रेड आइज दिखता है हाँ smells like marijuana हाँ एक हाँ मिनट चेक कीजिए ना stable भी होता है नॉर्मल भी होता है so But अभी smoking एग्जामिन and कीजिए selling ना is like no, different like many things. people are not using this. Okay, body sweat. Uh, you know, you can ask them. Well, Have you smoked any pot recently? Smells like When marijuana. was the last? Okay, you ask them, bro. I can smell some pot on you or some weed on you. Like you have you smoked recently? You don't go and directly say there is weed in your pocket. No, you ask them. Have you smoked it recently? I When did think when the last time you ये smoked? Yeah. हंस भाई इसका खाली जब बंदा यूज करता है उसका आता है ये एग्जामिन टारगेट उससे हाँ कोई ये मतलब मतलब नहीं वो ड्रग्स बेच रहा है तो it's उससे very कोई मतलब नहीं Examine होगा target, you तुम्हारा can do it. It's no I'm simple. या saying It is a server do examine mechanism. target, Yeah. but don't use it to turn your reasonable suspicion into anything. No, no. Just Don't take a use really it. small It is thing. for basically it is for your RP only. It is for your RP only. Okay. Your RP is getting enhanced over here. Right? You can use these mechanics to crack onto his story. If his story is weak, examine him Yeah. and then start questioning about those, and his story will start falling apart slowly. Simple. The simple examine target. Okay. What happened? Did you have any workout or anything? You're like you were running. You know, like that. Don't use it like, bro, you are sweating. I can tell. Body sweat, labored breathing. What is happening? No, don't be that dumb. got Okay. it Use it. This is for RP purposes. So, is that clear to everybody? yes The second point, reasonable suspicion, probable cause, drug calls, everybody cleared. Command members, whoever is the command thing, head yes sergeant, senior officer. If senior officer is not clear, command member will tell you again. Their job is there to train you. You can ask as many questions to them. Okay. Now comes the next thing. Now, sometimes what happens, what I do, how I like to do it, you know, let's say for the first time I found somebody and I talked to them, you know, I had a word with them, I had a chit chat, blah blah blah. Okay, you can always request them, always remember that you can request them. You can say that, okay sir, if you mind, only if you allow this to be used only under reasonable suspicion, not under probable cause. Always remember that. Okay, you need a permission for the other person. You know, you can tell the person, sir, only if you allow, can I get my canine sniff you and anything, right? You can do that. But if they say no to it, you have to say, okay sir, it's fine, chill, I'll go. That's it. Okay, that is like you tricking them, you know, you are tricking them into something. That is also one thing you can do. If you want to catch somebody, it's okay, you can use it, do it smartly, giving them more RP. They will say, no, I am allergic to jogs. I think there was somebody yesterday at the pier, right? Asuna is there? Asuna is not there. There was somebody yesterday at the pier, and he was like, he was selling something, and I went there and I talked to them, and I get an idea. And at the end, I said, if you mind if I get my dog sniff you, only if you allow. He said, no, I'm allergic to dogs. Then I was like, okay, it's fine. Then I left him, and I told him, okay, you can go, but clear out this area. I told them simply. So more of an RP is there. Now the thing comes, which happens most of the times. Now, whatever I said, this happens in fairy world. This happens 1 in 100 times that the person doesn't start running or something. You know. Now comes what happens if they start running. You know. Now you will say, sir, अगर ऐसा बात करने लगेंगे, if we start talking, they will run away and it will hamper the RP. Why are you going alone on a reasonable suspicion or on a suspicious activity call in the first place only? Get a unit with you. Only one guy, let's say. Did anybody come over? Who's on the bike? Who is this on the bike? Come over here. Over here. Yeah. Let's say Aaron is there, okay? And I am the first one to respond, right? And my backup is there, right? And one unit is standing there. So what happens is, I should be the only one talking to Aaron, right? Or maybe one more officer who's my ride along.
Okay, and the other unit's job is not to come out of the vehicle. Other unit's job is to have engines on and be ready just in case Aaron starts running and going towards the car, going inside. Okay, he gets into car, takes off, the other unit goes boom. That should be the whole system. Okay, now that is there. Now comes the next thing, south side. I was actually looking at some situation which happened few days ago in the Vagos area. That is a very good example, by the way. Just a second, give me a second. Yeah, can you guys hear me? Yes. Yeah. So I think Coco, Raptor, and few more people were there. Are they here? Anybody from the Vagos shootout? Yesterday, I guess. I'm here. Yeah, I'm yesterday. Yep. So I was looking at the situation. I think somebody was streaming. I forgot who was streaming at that time. Okay. Now, Baby Gupta and Aaron, don't move. Okay. This is the guy who was selling drugs, and here was a girl. I think it was Asuka. Aap the na? It was you, right? Yeah. Okay. So what happened is, this guy standing here, the girl is standing there. Okay, and there are houses behind, and there are people everywhere behind the houses. Now, what the cops are doing? 1, 2, 3, 4, 5. 5 cops are standing here, and 5 of them are looking at them. Like one guy's job, 2 guys' job. What the fuck? Other 3 are doing? Okay. Start responding tactically to the south side. Start giving it a certain importance. That's the second thing. Start having a fear RP, not like Durham. Not fear RP is not that. Okay, there's a misconception in people's mind that fear RP is basically a Darna. You know, that you are too scared. It is not scared. There should be some fear in you. Okay, fear means that you are cautious. Remember that you are cautious of responding to the south side location. Let's say if you want to respond to it, that is up to you. But you should have that cautious fear in your head that okay, this is a gang hood. I am going. ऑल यूनिट चाहिए? हाँ ठीक है, जा रहा मुझे। यूटर्न मार के आ रहा वापस। What is happening still, that fear is not there. Fear RP responding to south side doesn't mean only getting responding there with units. It doesn't mean that only. Okay, it means that, but not only that. It means that you get your units there and you start thinking tactically. You are more cautious there. You are more careful there. You are doing a very good RP there if you're cautious and careful. You know that there will be people around. It's their area. It's very violent area. What do? You do that. Okay, 1 or 2 people stand and talk. Rest of the people scout. Rest of the people can scout. Right? That just in case if it turns into a shootout because this area is hot and this area is violent, you are ready to respond to that. It is. I'm not saying that you have to win that. That is a gunplay thing. Win-lose gunplay thing. That is your aim, shooting. Whatever, you die, you win or you lose. I don't care. You catch them, you don't catch them. They loot you, they dump you. Whatever happens. Yeah, I don't care. Okay. What you have to do from your side, you have to portray that proper tactical cop RP while responding into a gang area on a drug call. मैंने कब चढ़ा दी? Okay. More of dialogues. अरे वहाँ से आपके ऑफिसर ने मेरे पे गाड़ी चढ़ा दी, 2 गाड़ियाँ। Remember that. देख के चलाया करो सर। A very good example. थोड़ा ना। मैं बाहर हूँ अंदर हूँ? Just a second. बाहर हो बट के आप थोड़ा वो आप कर क्या रहे हो वैसे? ऐसा लग रहा है मून वॉक की तरह ना। I did that on purpose. हाँ बेटी। Anybody remembered there was a traffic stop at the Strawberry Avenue of a purple Bentley? सर रेंजर हो गया। अभी एक बात बताओ मेरे को। लाइसेंस के लिए मेरे को ट्रेनिंग चाहिए। अभी हो फ्री? आऊँ मैं? 15 मिनट में पीडी आ जाओ। was just to showcase that how these things are. सुनो मेरे डॉक्यूमेंट वगैरह सब है मेरे पास। 15 मिनट में आ जाओ। 15 मिनट में आ जाओ। In character information I had
is that few days ago, some people wearing purple mask with purple car got into PD. They started shooting. And there have been regular reports of people from the purple color thing, shooting cops and everything. And most of the situations are always ending up into a shootout or a violent activity, right? So I had that fear and caution in my, sorry, my character had that fear in his head that okay, this is a purple car, this guy is wearing a purple bandana, and this guy is dangerous. This guy is dangerous, so I have to be cautious. What I was doing, Caudal, tell me, while talking to About him. what? I mean, you were trying to get as much as information you can. And I was continuously telling people to be on Hello, a Amy man. certain point. I think I was telling one guy, explorer, I was telling to roam around the area, right? So you have to do that. You don't have to like collectively go at one place. सारे लोग एक जगह आ गए. Sorry for Hindi. Some people, all the people at one spot, talking to one guy and having no fear, chilling and treating it like a casual situation. No, that is a Hello, gang Amy ma'am. member. ये That बोलना is और a क्या? violent character you have in front of you who has a नहीं वहाँ history कुछ of नहीं बोला. shooting cops. So you have to be cautious. I was cautious. I was telling explorer to move around. I was telling one interceptor to stay at the back of the car just in case he takes off. I was telling other explorer, I think Anubhav was there, right? Anubhav, you were there with Maya? Who was there with Yesterday? Maya? No, few days ago. Purple I was birthday. there No, with no. her. Yeah, you were I there was. with Maya. I was telling Jungle to, stand by on the other intersection. Just in case somebody comes up from there. His backup came, and they were with the backup, and they could not do anything, right? But I'm not saying that is an achievement. I'm saying is that I was cautious enough. So you have to deal with those situations that way only. Okay, and always remember Roger that I have seen Roger that doing these things only, him and a few cops only, and I want everybody to do that. Don't try to escalate the situation. Try to de-escalate the situation. Okay. Yeah, I found this Your line. job I is don't know not what to it is. escalate. Your job is to de-escalate. Looks important. Okay. Have your lethals out in a certain situation. You have fear. It's fine. It's up to Should I you. keep it? Don't start pointing weapons. No, leave it. Don't start Can I pointing take weapons it? on somebody. And always No, you remember, can't. on Leave a the drug area, call, sir. बाहर Oh, जाइए. okay, man. Trespass if you are able to convince क्या somebody दिखेगा ये? to मैं search them बताना. up, वापस don't उठा cuff लिया. them किसने first. उठाई? First search Mark them bills, up mark because you bills. don't have the right मैंने to उठाया, cuff मेरे को anybody मिला नहीं, until किसी और and ने उठा unless you लिया have फिर. the proper evidence. Remember that. इसने मेरे Cuffing को somebody पहले means एविडेंस दिया detainment. है. Proper ये भी evidence, ठीक which है. means probable cause. You don't have the right हाँ to do बोलता है it. मैंने कहीं You से tell दिख के them, आया okay, था sir, बोलता है. face towards the car. I'm gonna search you up. You search them up. You find something, and you tell them, okay, sir, I found weed on you, and you have to pass on information to the other person. That is a cop's job. Anywhere you go, any server you go, even in real life, a cop's job is to pass on information to the suspect. The suspect has the full right to know it. You give them more RP. Okay, you found weed on them. Okay, maybe he will try to run. It will turn into a very good chase. Maybe he will, his boys will start shooting. Right, as soon as you say that, he gives a call on the radio. Okay, shoot. Right, it will turn into a shootout. Maybe it will turn into some other good RP. You never know. So that's all I want to say regarding the drug calls. I won't be pulling it long. Drug calls is basically Yeah, I have talking. one last Yeah, point on this. go on, Gary. Like just for one suspicious activity call, you need to think about the optimization of your resources as well. Like अगर एक I know. call, like if one call is coming, like गलत everyone है is भाई. like, yeah, take 2 charger to intercept a one bike unit on standby just for one suspicious activity call. Like I knew that like if the area is hostile, yeah, go with the backup, but don't take all the resources just like for one suspicious activity call. And if there's just one person standing and doing RP with you, right, your aim should be to promote the RP, not just to win the situation. Winning the situation, I told you. You are not winning situations by arresting people. You are losing it. You are taking the L of paperwork. Biggest L somebody has to take is paperwork. Who likes paperwork? By the way, how many people like to make MDW? Right? I don't. Anyone who likes? Say it. I want to know. Who likes making MDW?
नहीं I tell I mean me सबका काम ही है वो तो करना. Then नहीं you are नहीं avoiding that part. काम है that is there but who likes to make who's like मतलब बनाने में जोर नहीं आता बस. I love making MDW anybody ऐसा कोई नहीं होगा, कोई नहीं होगा यहाँ पे. मजा आता है. हाँ मतलब ऐसा है like ऐसा नहीं कि If it's चार लोगों का interesting, काम लेके yes, बैठ it जाओ. No, अच्छे केस में हो तो कभी कभी. most of the time चैनल में पूछ रहे हैं हंस, बता दो किसको पसंद है. anyone nobody likes it. Okay, Nobody likes Plus it. one from my side. कल Nobody करते likes हैं it. बात इस बारे में. So if you don't like it, why are you trying so hard to make it? I'm not saying leave them. I'm saying portray proper RP. You wanna catch them, catch them. If you wanna do try hard, there should be some reason for it. Same thing. वो purple Bentley. I made a very good reason out of it. I said, okay, these purple people breached inside PD today this morning and shot the police officers. Na okay, bring in the A1, bring all the interceptors. There is a proper RP behind that. So there should be a proper RP. Even if you're trying hard, it's fine. It's up to you. It's up to your character. But there should be a reason for that try hard as well. Okay. Always remember that trying hard is a term created by bamchas in the fucking streams and everywhere. Okay. That try hard is a bad thing. No, that is RP. If you want to do try hard, there should be proper RP. That's all I want to say. And I'll be very strict. I'll be very, very strict. From now on, if I see somebody directly going coughing, starting doing that, actions were there, but this time there will be more severe. That's one thing. Second thing, start providing RP to yourself and to others as well. Always remember, whenever a cop provides some RP to any other RP player in the server, any other criminal, civilian, gang member, anyone, they are providing RP to themselves as well. Okay. Third thing, anyone seen, again the same thing I'm repeating it because it's important, very important, and it's been pissing me off since 3-4 days. I've been looking at things and they were like really dirty. Always remember, whatever wrong you do, people are not gonna tell you that you're a bad cop. People are gonna come up to me and tell me that you're a bad cop, that your officers are doing that. So I am a kind of a person who doesn't take जो मतलब कि सुन के नहीं लेता. ठीक है, कोई somebody comes up to me and tells me that you are not a very good chief, ये वो, okay, that's gonna piss me off ASAP, and that is the reason I've called the training. So that's all for today. That was the 37 call training. Next time there will be a 99AB training, okay, and that will also include the pursuit trainings as well. Tomorrow there is a meeting, a feedback meeting from you guys on Discord. Please be there. That's all. Anybody has any doubts can ask me. Go back to your RP. मैं पॉइंट रेडी रखता हूँ कल के लिए. जिसको जो भी दिक्कत है, जिसको जो सजेशन देना है, अपने कल रेडी रखना 6 बजे की मीटिंग के लिए. ठीक है. Alright, sir. That's all. If anybody wants to go. I'm here till 10-15 minutes to take doubts. If anybody has doubts. किसी को डाउट है 37 कॉल का खाली. हाँ 37 का ही है. Basically, it's the second time we are catching that suspect. वो second time हम लोग देखे, मेरे पास K9 है मेरा, and what I do is कि मेरे पास probable cause है उसको sniff करने का. So he doesn't give his consent कि मैं sniff नहीं करना चाहता हूँ. In lawfully I can detain him and sniff, but वो बोलता है कि मुझे allergies है and everything. So he'll take it to court. That's okay. Then no. Then don't let the canine sniff you. You search them up. Tell them, okay sir, I'm gonna. You have 2 options. आपके पास सिंपल करो ना, उसको सर्च करो. Yeah. Lawfully work according to their RP na. If he's saying I am allergic to dogs, okay sir, I have another option. I can search you up. Alright. But remember that second time search is also not mandatory. If the other person is giving a very good reason, very good RP, then back of the mind you know he's selling drugs, but he's giving very good RP, innovative RP. You have to leave them. Your job is to promote RP. Yeah, one of the worst things a criminal can go through, and this is talking out about experience, is setting up RP, spending time to, set up a whole plan, a whole, an excuse, whatever, taking your time, the effort, and then a cop just instantly denies it and arrests you. That is one of the worst things that can happen to you as a criminal. So try not to do that. Always give people a chance, to provide their RP. Yeah, one more thing. One point I forgot to cover.
I've been selling weed from Cream Character on very hot areas. By the way, I don't sell at fucking what do you say, Palito or somewhere. I've been selling inside the city just to check as well, right? I've been doing that. I'll be very honest and straightforward. I'll be doing that. Today I was selling weed at the fucking Dean's World. 1 hour I sold weed, nobody came. At the end, after 1 hour, when I sold like 100 baggies, Hardy came with his team. People are not responding to 37 calls. Chief, Start responding. just Yeah. open the dispatch and check how many calls are we getting. Just Yeah. hit the dispatch Okay. once. Now How 37 many calls officers are are on duty? okay. If there is no other priority call, you're on code when respond to 37 calls. The reason for that is it's been happening a lot. Okay. With that, you will be able to promote RP in the server, in the whole server. Trust me. How? I'll tell you. I am selling weed. I come from 6 to 12 in the server, and I sell weed a lot. Nobody is responding. I will sell it. I will sell it. Now, if cops start responding, I will see cops responding. Maybe I'll get arrested once. I will stop selling weed at that time. I will reduce it and I will go for some other RP. अब even 6 से लेके 12 बजे तक I will be grinding and not doing any RP. आफ्टर रेक्स हाँ तुम गिर गए नीचे। ये भी ठीक अरे है। सुनो ना हाँ ओली कोई मिसिंग है क्या कि जिसको जॉब नहीं मिला? मेरे को तुम्हारा डायरेक्टर का मैसेज आ रहा है कि लाइक लोगों को जॉब नहीं मिला। यू नो एनीथिंग एनीवन? मेरे को उस सर दिन मैंने मेरे सबको दे दिया था ना। को मेरे को सर मेरे हाँ को उस दिन तो मेरे को भी सर मेरे को भी नहीं उस दिन तो मैंने लेट मेरी यू गन नो ट्रेनिंग क्या हो रहा है। उनके ठीक है साइज से क्योंकि उनके साइज के कपड़े नहीं मिल रहे, समझ रहे हो? तो पा रहे साइज के कपड़े नहीं मिल रहे। ऐसे कैसे मतलब साइज के हैं अच्छा वो? कैसे कैसे है भाई? नहीं अच्छा नहीं है समझ पर गया पता समझ नहीं। गया। गॉट इट, मैं मतलब वैसे ही वो पूछा। थोड़ा यहाँ के लोकल जैसे दिखते हैं क्या? नहीं देन अरे यार पता नहीं। क्या ये जितना वही दिया था ऑफिसर है उतना जो मेरे को कल नहीं गाड़ी आगे से तो रगड़ पता के चला गया? क्या वो वही है जो मेरी गाड़ी ब्लास्ट करने का कोशिश कर रहा था जब इंजन ऑन थी और पेट्रोल कैन लेके? हाँ देन सही है। पता है रेक्स सर ये आपके आपके ऊपर कंप्लेंट कर रहा था जज को। हाँ तो मैं भी बोला ना कि रेक्स सर चलती आपको गाड़ी में पता है ना मैं पेट्रोल जज भर को रहा था ये। कंप्लेंट हाँ तो चलती गाड़ी में पेट्रोल भरेगा, माय लाइफ इज इम्पोर्टेंट एज वेल। अरे मेरे को कंप्लेंट करने से कुछ होगा नहीं जब तक केस प्रूव वही नहीं तो होगा ये देखो कोर्ट में। कैन लेके घूम रहा है, अभी भी देखो खुद इसने हाँ तो प्रूफ कर टैंक दी। में तो पेट्रोल ही नहीं है, बताओ। मैं तो टैंक में पुलिस पानी भर के करेंगे। घूम रहा हूँ। अब वो मेरे को थोड़ी पता है, अब वो तुम्हें नहीं पता, हम क्या करें? तो मेरी गाड़ी चालू है, तुम भाई पता कैन करो। डाल रहे थे तो। इसके हेलमेट पे सर दिवाली ऑर्डर में क्या ऑर्डर, लेके घूम इसके रहा है? हेलमेट पे मारो ऑर्डर ऑर्डर। हेलमेट पे मारो आइडिया अच्छा है वैसे। इसको मार ही दो रेक्स सर। जरा मारना को इसको कुछ टपली। काम करना है। नहीं ऐसा नहीं कर सकते। अरे नहीं, फुल सेफ्टी है सर। डबल प्रोटेक्शन दिखाता हूँ। एक वापस बैठो वापस बैठो। फर्स्ट, ये सेकंड, एक थर्ड लगाना भूल गया। बोला ना सर ये हेलमेट वेलमेट ऐसे मास्क वास्क लाके बूस्टिंग करने जाता है। बोलो बोलो है क्या किया? सर देखो मेरा एक दोस्त है। रेक्स सर, मैं जज के सामने बोलूंगा, डिफेमेशन का चार्ज लगाऊंगा मैं आप पे, ठीक है? तुमने खुद बोला था कि हाँ मैं बूस्टिंग करता हूँ, एफआईआर लिखवाते लिखवाते। तुम जो बोलोगे वही मैं बोल रहा हूँ ना। यार क्या हो रहा है ये ओ माय गॉड, बूस्टिंग क्या चल रहा है? तुम्हारे डॉक्टर्स ये सब होमवर्क कर रहे हैं। हाँ अरे हम होमवर्क की जरूरत ही क्या है? मेरे को कॉपी पे अरे सर ये होमवर्क पे कुछ निकालो यार, ये लोग खुल्लम खुल्ला ये लोग पे जो ट्विटर पे होमवर्क कर रहे हैं। फ्री में पास हो रहा हूँ, क्या बोलूँ? हाँ सनी क्या बोल रहे थे? मेरे को कुछ बोल रहे थे। हाँ मैं कह रहा था मेरा एक दोस्त है वो कुत्ता उड़ाने के चक्कर में जेल में है, छुड़वाना है तो केस जित हाँ केस जितवा दोगे? मैं अरे एनिमल क्रुएल्टी ऐसा। हाँ पेटा वाले किधर है? मतलब उड़ा चलो मैं कल आता हूँ। आई मीन यस यस को चल दिया। हाँ दोस्त ही था वो मेरा। एनिमल क्रुएल्टी दोस्त नहीं था मेरा, मतलब मैं उसको देखता हूँ मैं कहीं पे। देखते हो मतलब क्या? मैं मिलता हूँ ऐसा, कभी कभी मिलता रहता हूँ। ऐसा दोस्त नहीं है लेकिन मिलते रहते हैं ऐसा। हाँ सही बोलो, अलग समझ आ रहा है। जेम्स सर जानते हैं उसे, जेम्स सर ने बताया मेरे को। हाँ जेम्स सर। नहीं अगर पकड़े गए तो कुछ नहीं कर सकते। पुलिस के पास अगर एविडेंस है तो हम ज्यादा से ज्यादा। अगर एविडेंस नहीं हो, नाम क्या है वैसे? डेड बॉडी है ना कुत्ते की, और उन्होंने रैम किया और क्या? नहीं रैम थोड़ी ना करा है, कुत्ता उड़ा। हाँ वही मतलब कुछ ला ट्वीट डाला है। होमवर्क
रेक्स ऑफिस मेरा रेक्स डेविस नाम है। पीछे वाला पीडी में एक और रेक्स नाम से बंदा था, रेक्स रीड। अरे रेक्स सर मेरे को जरा वो बनाना है, गन लाइसेंस बना दो जरा। ठुल्ला ठुल्ला 30 ठुल्ला ठुल्ला मेरे 7 दिन पूरे हो नहीं, गए। फिशिंग एंड वेपन फ्रॉम मी ओनली। आई मीन सॉरी, फिशिंग मेरे एंड पे फिशिंग हंटिंग। लाइसेंस नहीं है ना, क्या बोलते हैं, देना वो सर नहीं है, फिशिंग बट ये देखो मेरे पे ये रेक्स है। सर। लॉयर से रेक्स बात सर, कर लो पहले, फिर आ जाओ मेरे पे ट्रेनिंग फिशिंग के लिए। लाइसेंस नहीं है, बट ये है। किससे? कहाँ का? बिना लाइसेंस के भैं। देखो बिना लाइसेंस कर रहे हैं इधर इसको। स्टॉप बीइंग भैं। नहीं है सर, फिशिंग वो लाइसेंस। चार्जेस ढूंढ रहा है, चार्जेस ढूंढ रहा है। हाँ ढूंढ रहे अरे क्या है, ये तो मेरे मटके का मछली है, मैं टिफिन बॉक्स से निकाला। चिंटी बिटिया तुम्हें कोई भी वो जॉइंट दे तो मना करना, ठीक है? मेरे को दे देना, नहीं नहीं लेके मेरे को दे देना। हाँ, या मेरे को भी, हाँ मेरे को भी अरे चलेगा। वो तो जस्टिस अंकल ने दिया था, वो तो बहुत बड़े अंकल है, मैंने सुना है। हाँ, अरे बहुत बड़े जज है वो, ठीक है भाई, बहुत ठीक उम्र है हो भाई। गई है उनकी, बहुत बड़े अंकल है। अंकल ही है पर जज वो घूमते हैं बस। जज है। और चलो मैं आया एक मिनट वही पीडी से। जो any actives right now? आलू ले लो, आलू ले लो करते हैं। यस। You're riding with someone or so just... नहीं सोलो था मैं, तो बोला तो 10,700 में तो ऐसे ही घूम रहा था मैं हॉर्न मारा, यू वर डांसिंग, तो मैं निकल गया था तब तक के लिए, ऐसे ही पिल बॉक्स पे खड़ा था। वाह, सोलो ही तो था, पीडी पिक करने आया बेटे ने डाला था। अरे रुको, हाँ इधर से। अरे मैं बोल रही हूँ, मेरे को पिल बॉक्स पिक करना हो। ठीक। आ रहे हो? मैं आओ। आया। मैं अरे आई नीड अ हेल्प बिकॉज हाँ। बहुत लोग आ रहे हैं ना, जो लोग ना रात को नहीं आ पाते, वो लोग सुबह के टाइम ही आते, तो थोड़ा सा मैं हान से भी बोलूंगा, थोड़ा सैटरडे और संडे थोड़ा मॉर्निंग शिफ्ट में भी अगर कुछ थोड़ा ट्रेनिंग और ब्रीफिंग का बंदोबस्त कर दो तुम लोग तो किस चीज अच्छा के लिए? होगा। फॉर वेपन और फिशिंग और हंटिंग? आई मीन मोस्टली वेपन का तो मैं करवा दूंगा, बट अगर रेंजर डिपार्टमेंट थोड़ा सा ठीक है, सुबह विल कोई नहीं विल आएगा डू तो फॉर तुम लोग, आफ्टरनून टाइम। हाँ आफ्टरनून में रहते हैं ना नोवा वाइट और हाँ मैट मतलब कॉर्डल। 12 बजे के बाद ही बोल रहा हूँ मैं, या 12 से 6 के बीच में you just 12 के बाद के लिए मैं एक बार बात कर लेता हूँ अपने उसमें। हाँ एक असाइन कर दो, तो क्या होगा कि लाइक लोगों को थोड़ा, जो या लोग नोवा नहीं आ वाइट पाते एंड रात मैट को, कॉर्डल देयर ऊपर गिर मोस्टली, गया। तो मैं एक बार उनको बोल देता हूँ। विल हाँ अनाउंस इट प्लीज बोल टुमारो, दो, कल या तक मैं एक बार हम लोग ट्वीट भी डाल देंगे एक बार। यप दैट विल बी गुड। या हाँ सैम बोलो, आ जाओ पिल बॉक्स, आ जाओ क्या? पिल बॉक्स आओ, पिल Let's बॉक्स go. मैम आप बनाते हो लाइसेंस गन का? मेरा बना दो। नहीं, मैं पिकअप कर सकता यार कोई गन का लाइसेंस ही बनाता है यार, जो कांटेक्ट वाले हैं हमारे। अरे ये तो पार्क रेंजर्स है ना, ये लोग नहीं बनाते हैं, ये लोग हंटिंग और वो फिशिंग का देते हैं। मैं सैम को लेके आता हूँ। अरे हंटिंग और फिशिंग का मैं बनवा लूं, मैं वैसे करता नहीं हूँ। बनवा लो। बंद करते ही नहीं तो क्या फायदा? तो बनवा के रख लेंगे ना, दिखाएंगे लाइसेंस दे हम। आओ चलो आ जाओ, लाइसेंस बनाना चलते हैं। मैं कॉल देता हूँ, करेंट ओले गोइंग टू मेक लाइसेंस फॉर पुलिस। फॉर पुलिस करंट डोले व्हाट? सनी रोला पे गाड़ी से तो उतरो। भाई यही कर रहे आओ। हैं, समझ रहे हो? जरा पेट्रोल भर दो सर, पेट्रोल कम लग रहा है गाड़ी नहीं पेट्रोल भर देता हूँ। नहीं, Get a bike out, give your bike petrol. 10-4 sir, I'm just gonna be 10-7 for a few minutes sir, just have to do something. 603 tonight. Any actives? Negative on that. +170 latest 37 call.
पीने के लिए है तुम्हारे पास? चलते हैं बर्गर शॉट। पीने के लिए तो नॉर्मल वाटर वर्क्स एज वेल। Wait. No food, 150 empty. अरे इधर To उधर। dispatch, update me when a rider along is available. I'm on a 10 at Corbin solo. 10-4, I can ride down with you. What's your 20? I'll be 76 to MRP. इसे ले लो, पानी ले लो, चलता है इसका भी पानी। I'm an anchor. Yep, I'm telling you. Oh, like. रिकॉर्ड करेगा एक्चुअली। क्या नहीं क्या मस्त दिख रहा है। For you to dispatch, did someone respond to the wheat plantation call? I'm not sure, but I know the location of it. 20. It's gonna be Tantavian Mountains, the second second off-road road. 10-4. लॉस एंटोस फ्रीवे की साइड पे एल्यूमिनियम की तरफ है। 10-4. Aaron and Yuvraj, you guys respond, okay? I'll be coming. 10-4, sir. देखते हैं, बात करके हम लोग कर लेंगे, ठीक। अच्छा बाकी लोग में तो वो भी है, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक वो जो है केटल, और फिर वो क्या होता है, वो क्या बोलते हैं, स्टोव। चला रहा हूँ। मैंने एक बार सारे अपने ट्रैकर क्लियर कर दिए, ठीक है। मेरे पे क्लियर है। मेरे को वो आ रहा था बार बार रेड कलर का ट्रैकर। वो अभी 37 का अब तक रखा था, नहीं मेरे को तो अभी 71 का आ रहा था। अरे वो मैं भूल गई थी, मीटिंग चल रहा था ना, तो वो सुन रही थी, मस्त मतलब बकचोदी भी कर रही थी। ठीक ठीक। क्या हुआ? कुछ नहीं। कोई कॉल्स भी नहीं आ रहे, बारिश हो रहा है तो 99 का भी नहीं आएगा। बारिश में 99 का नहीं आएगा? सीरियसली नहीं आएगा बिकॉज पीपल स्लिपरी। 409 plus 176 was latest 99B good to आ गया ना, देखा। 406 same traffic. Same traffic +1. रेडी टू। पता है अंदर। I didn't आई गिव अप, मेरे को चेस ही नहीं करनी भाई, तुम जाओ भाई एस्केप कर दो। मैंने चेंज नहीं की भाई, मैंने टच भी नहीं की। अबे यार डिसेबल हो गई, छोड़ दे नहीं करनी चेस।
हमारी टिक्की बैठ जाओ। आओ भाई मुझे तुम्हारे साथ ले लो, मुझे तो अपनों ने ठोक दिया। बैठो टिक्की में। 23 भाई मेरे में टच भी नहीं हुई बाबा। भाई जल्दी लो, मेरे को ठोक दिया, मैं क्या करूं यार। चलो मैं ये गाड़ी लेके चेस करूंगा अब। इस गाड़ी में चेस कर रहा हूँ भाई। सर जी यार क्या कर रहे हो सर जी? अबे आओ कोड रेड करेंगे, पुलिस वाले मारेंगे। आओ आओ, मैं भी आ रहा हूँ। ये ब्लैक है राइट? It's activity now. Currently Bay City Avenue eastbound. Crossing the Burger Shot now. Crossing the Bob Smith PD now eastbound. Sanders Avenue. Took a left toward pillbox, northbound. Going inside the parking. Elgin. Left. Straight. Yeah, we have. Currently Adams Apple Boulevard. R74 Elgin Avenue, southbound. They don't know. Taking a right towards Capital Boulevard. भाई मैं साइड बोलने थी नंबर में। Vehicle on the northbound El Rancho, turn left. Vehicle went off-road on the highway. We'll be needing additional units dispatch. Had a major 50. on frequency 2. Yeah, currently on the freeway La Mesa. आ रहा हूँ गाड़ी बना रहा हूँ पहले। Vehicle going with the traffic at the southbound Delta Road Freeway, Elgin Street Freeway. Vehicle exiting the highway at the southbound La Mesa. Turn left, continuation on the northeastbound National Boulevard, Amarillo Vista. Turn left, continuation on the northbound El Rancho Boulevard, First Lane. Vehicle still continuation on the northbound El Rancho Boulevard. Moving towards the Mirror Park at the northeastbound. 560 dispatch, you still require an interceptor? Interceptor is already 76. Come with the CVP or a charger. कौन था ये? We have the visuals. Vehicle continuation on the northwestbound. उसको बचने के चक्कर में
किससे ठुके? अरे वो ब्लैक चार्जर से ठुके नहीं, मैं उससे ठुकने वाला था हेड ऑन, उससे बचने के लिए राइट गया तो उसमें ठुका मैं ऐसा। I'll be 76 after a quick repair. Vehicle turned left, turning straight on the southwest bound last 11 hours. हाँ खराब भाई, बिना बोले अचानक बीच में रिपेयर भी नहीं हुआ। Testing for the traditional TSAP. We have 76. The current location would be Burton. We update comms. The visuals currently vehicle movement mostly turn left. The legions here. Okay, backside of the pillbox tunnel. Okay. Got the visuals, vehicle running straight on the Los Santos freeway. रुका क्या वो तुम्हारे आंखों में? नहीं, अपडेट करना मार्क। My 10-2. 10-4 10-4 2020. Jimmy sir was driving and he just spoke, I guess. And it's a VCD. Okay, I'm switching to frequency 1. I saw officer Oh, curved perform over a here. score. मेरे सामने कर्व किया ऑफिसर को। एक सेकंड मैं रेडी 1 पे आता है। नहीं उधर कोई नहीं है, वैसे भी हो गया। 409 back on radio 1 plus 1. And Fabio, to this person, they were saying that they were after some girl. They said that he's not the person, so they might be after officer, I think. Lady officer, right? 10-4. हैप्पी बर्थडे अनुभव नहीं, उत्कर्षमान क्या हाल सर, दिखते नहीं आजकल। सर तुम बिजी हो डायमंड पुश करने में, वैलोरेंट में, क्या ही कर सकते हैं हम, बताओ। रुक 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 रुक, पीछे जा रहा हूँ आबा। भाई मेरे में पता है, मैंने टच भी नहीं करी थी तेरी गाड़ी। चिल है, मैं कौन सा सीरियस हूँ। अब बता रहा हूँ, उड़ गई फिर भी, मैं कहा ये कैसे उड़ा। भाई क्या मस्त उड़ के गिरा भाई। मस्त क्या था इसमें, एक तो मेरी गाड़ी पूरी फुटबॉल क्या बना दिया मेरी गाड़ी। एक तो डिसेबल भी कर दिया। स्टोर रॉबरी गोइंग ऑन एट हेज स्टोर, दे हैव अ चल हॉस्टेज चलते हिज हैं। लाइफ। करो रिस्पॉन्ड करो, मैं एक सेकंड ऊपर से आर्मर वो सब 409 plus 1 will be 76 to the latest 911 call at the Hayes store. आजा। Unknown to ReX. Send it sir. 311 by number, call me, okay? I have your number, I'll call you. बोले सर। Yeah, go. Lead me. Yeah. Okay, hello Rex. Yep. Listen. हाँ. What do you say? This is the thing, okay? We've been catching a lot of weed plantations, okay? And the fertilizers वो सड़ रहे हैं, ठीक है? पड़े हुए, ठीक है? Yep. ऐसा करो, as a park बहुत ranger fertilizer executive. Yeah, as a park ranger executive, collect them all in one locker. Okay. जितना भी पुराना है, ठीक है? And send a invite to all the 3 dispensaries and the farmers that PD is holding an auction for the mass sale of fertilizers. Okay. Okay.
Hello? Yep, got it. Can you hear me? Yep, I Yeah. can. Huh. So mass auction for the fertilizer. So anyone who is who is interested, I keep a can day. pardon. Yep. Yeah, keep it from Park Ranger side, okay? Yep, we will keep it from Park Ranger side. So I'll Yeah. arrange And the I'll fertilizers yeah today, and yeah I'll, today, I'll and yep. send an invite to all the dispensaries and all the farmers. Tweet it out, okay? Okay. So, but they should go to the dispensaries only, registered Yep, dispensaries, obviously. because do one thing, send it to dispensaries only, not to the farmers, okay? Yep. Because farmers, we never know who is dispensaries, we know who they are, right? वो तीनों जितना 3-4 डिस्पेंसरीज हैं सबको भेज दो, ठीक है? ठीक। और मैं ये आंद्रे पेट्रोव की पेन ड्राइव लौटा के आया, ठीक है? हाँ। ब्लैक आज वाली कार्ड कर ही देते खत्म। अच्छा तो फाइनली रोस्टर्स एंड मैन। अच्छा 6+1 is at the latest 911 call. It seems to be a slow robbery with a motorbike involved. Can we get a bike unit? I'm coming to the back unit. Switch over to some other radio for the 72 situation. 409 plus 1, the radio one. I'll get one bike unit, don't worry. Because I'm already on the bike. If you okay, that's fine. Get 2 bike units actually, because this bike can go on the barricades. Okay, then we'll get a bike unit. रेक्स तुम्हें 1 पे बुला रहे हैं। रेडियो 1 पे। 10-4-409 back on radio 1, send it. Yeah, you free? 10-4 sir. I was in 72 situation. I guess they have a unit. Alright, Some unit. see my 10-4. tracker, okay? 10-4. Join us in the weed hunting for the Aaron and Yuvraj, okay? I'll fall back then when you come. 10-4. Dispatch anyone for how long? 409 to dispatch in the store at the 72 station. I'll be falling back. You can call from another unit from radio 1. Their units available. Wait, 10 to dispatch. Air one, it's a bike, right? अबे रुको भाई बोल. Guys, listen. Are we on radio 2 or 3? Wait, Zoe. Yep. Call some units from radio 1. I'll be falling back. I have a sign for some other work. So. Oh, okay. Sure. Hello sir, how you doing sir? All good, bro. Hey boys, what's up? You robbing that shit, eh? Hey. Damn son. Listen. I was just trying to get some supplies, man. I need some sandwiches. Keep some distance. No. Keep some distances. So I can get the sandwiches in there. No, burger No, shot. not right now, sir. Are you so stupid that you're gonna go in there? Bro, They are literally hunger. right now, man. When you're fucking hungry, you act stupid, man. That's what's up. Well, you can go to Burger Shot, man. Hey, is that the same guy I'm thinking? Okay? Gotta go How see about ya. you just, yeah, Is that the same guy whom I'm thinking? Gotta go. ए, आवाज नहीं आ रही क्या मेरा? इग्नोर कर रहा है बहन के लोड़े. Ari. अरे assault. Fucking assault. What's your call sign, man? Going for cuff. What's your name? Going for cuffs. What's your name? You know what? We'll What's start my putting name? a tattoo किसको? on our कौन? forehead. तुम्हें रेडियो 1 पे बुला रहे हैं। 10-4, send it. Yeah, I'm 76. We are at the Winewood Boulevard, by the way. We're moving west. 10-4, I'll be 76. Tracker लगाना? Lunch का? would be a little southeast of the fish selling spot. If you guys are hunting wheat plants, let me tell you, it's mostly in the slope sides, and like they plant it near the plant so that. They have this spot. They have Oh, this 10-4. spot. Just get to that place. Okay, 10-4. I'll be 76. Okay, Rex, fall back from the weed thing. We respond to that A class, okay? 10-4. चलो भाई. मार्क लगाना इस पे. Yeah. Let's go. 409 plus 176 to the 99. ओ भाई, उसके ऊपर से निकल के लंबाओ. मत क्या अभी ठुकता वो.
फिर करता मेरे ऊपर से उड़ा दिया, हेड ऑन मारा। अरे रात को आया ऑन ड्यूटी। अरे भाई उसने मारी भाई, मैंने नोआ के साथ भी यही हुआ था। मैं नोआ के साथ सुबह राइड लॉन्ग कर रही थी, उसको लोकल ने ऐसा उड़ाया मस्त। भाई हेड ऑन मारा भाई, SCU से SCU। Southwest Aguja Street. मैट को ज्यादा ही वो नहीं हो गया। He's gonna be heading southbound basically. Come on man, pull over bro, let's have a word. अरे अरे I was stationary man. I'm not driving the Explorer, alright? So don't charge on Caudal. Yo, listen, don't charge on No, just Caudal. take it, bro. Just take the boost. I don't want No, it. listen, Fuck it. listen. Come, take I it. didn't do anything. Nah, nah, because take it, I take the it. CVP. Don't Yo, who's charge this? it on Who's this? Caudal. Yo, go take, bro. Take. Bro, I'm giving the boost, bro. I didn't even touch you, man. You just came, Enjoy, slammed enjoy. me. It's okay, it's okay. Take it, take it. This fucking guy bubbled and fucked me, bro. I'm just giving the boost, bro. I'll get arrested. बट टच भी नहीं हुआ हमारे साइड से तो। Yo, listen up. Don't charge it on I Caudal can't. because I It's in am a not driving. fucking pothole, dog. Alright, it was a Caudal man. Thanks for the sub, Roger. Yeah. No shot, Lodu. This guy pushed me in a fucking pit. Let me do it. I didn't even touch you. You're gonna cry. What bubble, bro? He's standing. आप मार दो guys. Let me take out your car. I just woke up, guys. अरे वो डैमेज मत करियो। नहीं अभी हो गया कर दो। नहीं निकलेगी, तेरी फंस जाएगी। अबे ये क्या? मारो मारो मारो। Get in the car and reverse. Reverse. I'm stuck, bro. What the fuck? Reverse it. Yeah, you good man. I can't. I'm on a wheel, man. Who said the 10-4? Respond to reception. You good? You good? ETS will be 3 miles to you. Push me. कहाँ से stuck भाई मुझे? For you. Drive. I'm not driving. Yeah, okay, Yeah, let's go. Yeah, if someone picks you, 303 I'm to not dispatch. the one. All Assign right, I'm a yourself with your passenger. unit. I won't with your ride along officer. I want to break check and all of that. 10 for you. Serious, sir? Can you get assign me with a ride along partner, please? Ash, can we switch over to some other frequency? Yeah, let's go 3. Okay, and 400 plus 1 back on radio 3. I think you should just stop, bro. Now that wasn't a ranger, huh? Now he's also wearing green. Now that wasn't a ranger, though he's wearing green, huh? He's a paid actor, bro. Ash, tell him that if that was a ranger, huh? Though he was wearing green. You should drive a... आगे से राइट लिया। Don't have eyes, huh? I stopped. Nice. पीछे गया। Nice. go. आज बारिश में ना मेरा भी राइट लिया। He's in the driveway in the burger shot. he can't escape from बस that. देखा रहा। Like this car's parked. Oh, he's gone. He's in front of me. Yeah, go for it. The rain is चली भी getting लिया me होगा headache. पक्का। He took a right. He's going north. I see him. वरा। He's in the alleyway again in front of the burger shot. राइट लिया। He took a right, then I don't know.
Do you get visuals? 74 as of now. No. VCB. I am guarantee that he was hiding in some alleyway or something. Probably. Flower on the right. Performing code 6. Same traffic, probably take the highway. Yeah, I can check Ocean Highway though. लवा पीछे देखो. I did see that S15 near Hayes, by the way. I'm gonna go back there. 10-4. क्या हुआ पीछे? जीप गई उड़ गई इस पे से. वाह. ऐसे. I showed you what happened. Huh? I think I see the comment. Or is that local? Oh, that's a local. I don't see the cylinder. Never mind. I dispatched last night and be chasing super from our side. No visual on the person. Same traffic switching over to radio 2. Sorry, 74 radio 1. Like भाई क्या भाई आकाश. 409 plus 1 back on radio 1. Figured back on frequency 1 last night and be scored for VCB. 10-4. हेलो सर कौन से चीज में भेज देते हो? बंदा स्टार्ट होने से पहले रो दिया था. क्या बोला? मैं नहीं करूंगा ये वो फिर बाद में कहता है अच्छा इट इज माय बैड डे ये वो. भाई क्या ही बोले. वही था क्या बैड डे वाला? यस यस. क्या बात कर रहा है? हाँ भाई रो दिया था भाई स्टार्ट होने से पहले. पता है मैं पहुंचा. आई वाज स्टेशनरी इन द अपोजिट लेन. मेरे में आके ठोका. खुद 2 बार ठोका और खुद जाके गड्ढे में गिर गया. ही इज लाइक तुम पिट कर लो बबल कर लो तुम. मैं बोला व्हाट द फक. मैंने तो रुका हूँ तुम खुद आके मारे हो. अरे आई एम नॉट डूइंग इट. चलो गाइस अरेस्ट मी डिटेन मी. एंड फिर अगेन गाड़ी में बैठ के चलो लेट्स गो. आई एम नॉट गोना. ये मैं कहा भाई हो गया भाई ठीक. मैं बोला अच्छा इसलिए मेरे को आंसर नहीं इसमें भेजा है. कौन लेकिन? बेस्ट फ्रेंड. कौन? बेस्ट फ्रेंड. नहीं पकड़ा कि नहीं पकड़ा ये पूछ रहा हूँ. नहीं भाई. तो कैसे मालूम होगा? क्या पता था? वही तो नहीं पता. बेस्ट फ्रेंड. ठीक. आर्डर कर रहा था बस ये बता रहा हूँ. और ये गाड़ियों की चाबी नहीं होती क्या अपने पास आजकल? अरे नहीं ये प्राइवेट गाड़ी में घूम रहा होगा. आयरन था ना. आयरन की व्हीकल प्राइवेट है. आई मीन पर्सनल व्हीकल है. भाई इंटरसेप्टर का पूछ रहा हूँ मैं. हाँ आजकल कभी कभी नहीं होती. इफ यू आर नॉट लाइक यू हैव टू इफ यू डोंट हैव द कीज ना एक बार ड्यूटी ऑन कर लिया करो. फिर कभी कभी नहीं होती है. डोंट नो आजकल होती है. ड्यूटी ऑन करना पड़ता है कभी कभी. ओ राजेंद्र ले जियो मस्टैंग. चलो मैं रखता हूँ. हाँ चलो. एम्बुलेंस स्टील करना है. पुल ओवर करेंगे. 409 plus 1 performing a 38 on एम्बुलेंस. चलो चलो रहने दो. उस हाईवे चलेगा अब. भागी. Yeah, road's looking good though. Paris. मल्लू आंटी. ठीक है भाई. ये कर लो. ये सारे ब्लैक ट्रैकर ही क्यों देख रहा है? अरे भाई साहब मत कूदा करो भाई चलती गाड़ी के सामने. पार्क कर रहे हैं तुम गाड़ी के सामने कूद रहे हो. कहाँ कूदा मैं? वहां से बाहर आया. क्या बोल रहे सर? 15 के बाद मिलेगा K9.
हेलो रामजर पूरी पीडी साथ में आई है। सर हमारा लाइसेंस वो मिल रखा है हमको K9 का फिर 1 भी 2 3 4 5 6 कॉल कर मेरे को। हाँ तो +1 राइड अलोंग SCU और सेंटर बताओ से डेकू नल्ले। हाँ बताओ सर बताओ क्या हाल है। अरे तुमसे मिलना था ना चलो हाँ इसको थोड़ा Wait, बात करना था चलो हमारा जरा नाम नल्ला हमें है। क्यों करनी है बात? वो रूम उस दिन जो बात किए थे ना अभी तक तुम तो कुछ काम आए नहीं चलो भाई चलो मैं बात जेब करते में हैं 3 लेके घूम रहा हूँ। किस क्या दिन? अबे क्या पीडी बना दिया है दूसरा, ये क्या चल रहा है? आ जाओ चलो चलो आ जाओ कहाँ जाने बताओ? वही वाला इन्वेस्टिगेशन अबे हम क्यों जाएंगे? बोला था ना तुम काम तो आए नहीं कुछ यार कुछ इतनी बोला मदद था करी तुमको जितनी हो नहीं सकी। नहीं, चलो चलो I'm just preparing in the boxes. वो ऐसी बात डाटा है, बोल ऐसा देंगे ना हो कि डाटा बोल देंगे थोड़ी देर हाँ क्या धमकी दे रहे हो क्या बड़ी डाटा रुको उड़ सर को नहीं, बोलता ऐसा हूँ ना होए चार्जर कि वापस हम डाल खुद लें आ जाएं तुम्हारे साथ। रुको खुद रुको आ जाएं तुम्हारे साथ, नहीं समझ रहे हो? नहीं ये एक बोल रहे हैं। सेकंड हाँ वही तो वे ऐसा बोल रहे खुद ना आ जाए तुम्हारे साथ, हम खुद आ जाएंगे। बात ऐसा लगा के देखो जरा। पिछली बार भी आ गए अरे थे। मैं रॉक सर मैं कह रहा था ये देखो काम नहीं आया इस पे लगा देते ना चार्जर क्या हाँ लगा देते हैं भाई? बताओ भाई क्या हो गया? अरे नहीं वो एक्चुअली ना एक को डराने के लिए वो फोन ऐसे लगाया मेरे को लगा अधिकतर तुमको जब कॉल लगाता हो तुम होते नहीं हो तो अभी फिर लगाया तो थे तुम उठा लिए वाह भाई ये बढ़िया टैक्टिक है तुम्हारी। हाँ यार करना पड़ता है अच्छा सही है। हाँ लैपटॉप चलेगा? डरा हाँ हाँ बोलो यस सेंड इट अकाउंट मॉनिटर पे डाला क्या उसका या नहीं? पूछा मैंने अब परमिशन आया तब तो किससे? अच्छा परमिशन किससे ले रहा है तू? जज से ऑब्वियसली अच्छा तो फिर क्या बोला उन्होंने, डाला कि नहीं? रिप्लाई नहीं आया ना जाके मिलते हैं ठीक है, हम खाना लेकर वहाँ पे जाएंगे उनके पास डायरेक्ट। अरे मैं कॉल करता हूँ रुको भाई परमिशन मत ले, बोल कि ही इज मैं बोलता हूँ बोल कि कल बात वारंट है करता हूँ हाँ for- करता हूँ हाँ डाल 5 देना 5 मेरे लिए भी रोजर खुद लेना हाथ यार पैर नहीं है ब्रो भाई खरीद देना भाई VPN लगाया मैं 6 दे दे मेरा क्रिमिनल एक्टिविटी 8 दे दे मैं दो हाँ भाई सॉरी तुम्हारे में चले गया भाई। वो खाना चले गया तुम्हारे में, थैंक यू खाना सो चले मच गया। मैन, थैंक यू सो और ये पेनड्राइव से पता नहीं क्या आ रहा है भाई जॉब वॉब आ रहा है कुछ तो अभी नहीं रोगे कि तुमको कैसे सर्च कर लिया ब्लू प्लाजा क्या है कहाँ आ है गया। हाँ अरे और कुछ था क्या उसके पॉकेट में देखा होगा ये ना तो बेटे को पता चला होगा रखा होगा आ रहा हूँ भाई बीवी आ देखो गई एक तो मदद कर रहे हैं आंसर की, तमीज से बात करा करो हमसे ठीक है क्या लाइक हाँ वापस फोन लगाता हूँ रख सकते रुको उससे मैं डिटेन करूंगा यार, इसको मैं इन साइड हो आ रहा हूँ मैं तो बर्गर शॉट से फूड खरीद रहा हूँ मस्त 37 at Cyprus Pay Flats, from here and question 177 versus आ रहा हूँ 3000 what's your exact venue? Murder meal in your pocket. Yep, thank you. 77s on the Cyprus flat for 37s. 5 or 6 plus on Take the order from the tray, sir. Have a nice day. चलो भाई चलो पॉकेट में रख दे चल गए Okay. गिड़गिड़ा थोड़ा गिड़गिड़ा रो There's an order for you. Oh, no. मैं आ रही हूँ। हैं? वैसे मैं आज ड्यूटी बहुत ज़्यादा ही दे दिया 3 घंटे मैं आ रही हूँ। हो गया गॉट इट नहीं चाहिए ले लिया मैंने तो मेरे से क्यों मंगवाया बहन चो 3000 अबे भरे तेरे से ही लिए तेरे ही पॉकेट से 2 मील ले लिया मैंने देख योइंग कर लेता है नाइस डूड नाइस पावर गेमिंग नाइस डूड वहां सर्च तो क्या Nice तेरे man. को पॉकेट See you से on निकाला forums, buddy. See you on forums. ओके लेट मीट ऑन फॉरम ड्राइव चलो 10 फॉर यू सेंड इट 10 to डरी हुई आवाज में लग रहे हो शरीफ
भाई रुको भाई मेरे को जॉइन चाहिए. This one from like super activity with the white 9F Cabrio fleeing away from the scene of 37 super stars heading north on Edition Base Travel requesting additions. He's taking a left heading westbound on Capitol Boulevard. No visuals from code 6 in the area. It was a white sports car, possibly on 9F Cabrio. From code 6 in the area, it's still a VCB on the white sports car. Last 37. I 322 plus 76 to another call near Cypress Flats of 37, requesting one more addition on this one. Plus 1 would be 76. Listen, मैं ना 2 मिनट में आई, ठीक है? ठीक है. 2 मिनट कंसिडर. हाँ भाई क्या कर रहा है? किधर है? ये पिलबॉक्स के सामने है. एक स्टोर रॉबरी का सस्पेक्ट को ले जा रहा पिलबॉक्स. अच्छा पिलबॉक्स में मिलते हैं. पिलबॉक्स में बात करना. हाँ क्यों, क्या हो गया? अच्छा जेसन फर्नांडिस था क्या? मैं बादशाह सिंह को कॉल लगा रहा था तब से. क्या हो गया? अरे मॅडम कशी आहेस? मी एकदम मस्त. तुम्ही कशी आहेत? आम्ही पण एकदम चांगला. टूटी फूटी मराठी आती है यार, थोड़ा जोड़ फोड़ के बोल देता हूँ. ठेल दो एक और, मुझे भी ठेल दो. एक और पेशेंट मिल जाएगा. सर आप ही के मस्टैंग ने वो साइड तोड़ा है. वो आ गई फिर. किसी का भी डाउन नहीं किया. मैं करूँगा. तीसरा आ गया. नोआ हाँ की किडनी निकालनी है. आओ सर मैं भी निकाल लिया. 14 फेब्रुअरी क्या मिल रहा है? और रोशन कैसे हो? अरे मैं बिल्कुल मस्त हूँ, बिल्कुल बढ़िया. आज मैंने एक बंदे का ऑपरेशन में साथ दिया ओलिवैम के साथ. और में ड्रिल करा, ड्रिल मशीन से. कल ऑक्शन रख रहा हूँ. ओए नोआ कल ऑक्शन रख रहा हूँ. तुम तो ट्रीटमेंट के लिए के तो आओगे है ना? आओ. कोई नहीं लाता तुम्हारे. और सी जाओ, तुम्हें बुलाया. ऑफिसर नहीं आता. 14 को मिलने तो 14 को ही लेके आऊंगा. क्या लेके आ रहे हो 14 को तुम? सर पता चल जाएगा तुम्हें 14 को. क्यों नहीं? अच्छा 14 को तो 14 को तो हमको भी मिलेगा. 14 को तो हमको भी मिलेगा. 14 को तो मैं भी मेरे को भी मिलेगा. जमाने में क्या था भाई? ये रेंजर सारे रेंजर लॉर्ड क्यों हैं? कमिटेड क्यों है अभी? क्या? नहीं लॉर्ड है ये. हर कोई साबोटाज करने में लगा रहता है. अरे 14 को कुछ और है भाई. ये 14 ये वैलेंटाइन वाला समझ रही है. लो भाई 14 हाँ बहुत कमिटेड है. हम क्या करेंगे? बहुत कमिटेड है. कौन कमिटेड है? कार यूनिट चाहिए अभी. नोआ सर आओ, कार यूनिट चाहिए. नोआ सर जल्दी जल्दी मस्टैंग जाएगी. वो तू मेरे साथ आ. वो बात करनी है. अरे सस्पेक्ट के साथ तो दिस गाय किल्ड मी. वो तू मेरे साथ बात करनी है नेता. अबे मेरे एक्सपर्ट तू लेके जाएगा.
ऑफिसर, I need one officer here. इसने मुझे गाड़ी से धक्का दिया है ऑफिसर। ये भी ठीक क्या हाल है सर? ऑफिसर Something to Aaron. 482 UV, I'm gonna code 1 and making the MDW once again. 10-4, did Chayton come to MRPD? It's an outlaw. Switch to frequency 3499. हाँ भाई मैं अपनी बात कर रही हूँ। खुला आ गया, खुला आ गया। रेक्स सर। हाँ 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 रेक्स सर, मेरे को प्रमोशन नहीं मिल रहा, क्या करूँ? पता नहीं। प्रमोशन दिलाओगे? क्या आप पता नहीं क्या होता? What's your rank, sergeant? नहीं, सीनियर FTO HR। हाँ तो बस प्रमोशन का बात करो। मैम इनको क्या हुआ था बेसिकली बता सकते हैं? ये बाइक नहीं, मैं वार्निंग और स्ट्राइक दे सकता हूँ, प्रमोशन नहीं। they robbed a store he had an accident. and इधर तो प्रोफेशनल he दिखा was साले जेम्स आराम जाता। हट हट हट, जेम्स हटियो जरा। Putting bandage on the गोइंग फॉर कॉफ। लग गया उसको। लग तो फिर भी गया। कुछ बोल रहे थे। पप्पी भाई को क्या हो गया? पप्पी भाई की डेंजर शिट। और नवा कैसे हो? तुम मिलो जरा, आजकल दिखते नहीं हो एकदम। हाँ बताओ बताओ, दिखते नहीं हो बिल्कुल भी आजकल। अबे बार FI UI लैग हो रहा है। UAR कर लेता हूँ। अंदर सस्पेक्ट है। हाँ हाँ, वो शोरा वाला ही है जो स्टेयर में हम लोग जाके बैक ऑफ मारे थे ना, वही वाला है। पकड़े गए। ओ भाई डाउन हो गया बेचारा, पकड़ा क्या गया। हाँ वे दिखते नहीं हो आजकल। एक सेकंड, तो रेंजर शिट बोलने के उसमें बोल रहे हैं, रेंजर सार शिट ऐसा बोल रहे हैं? नो रेंजर शिट। हाँ थोड़ा सेटिंग करके ना मेरे को एक मेंशन दिला दो, बताओ। तो फिर ठीक है भाई। चाबी चाबी भी तो बता देना मैम को, सर का दूंगा। ठीक है भाई। ठीक है, मैं आप और सर जुत रहेंगे। गाड़ियां धनाधन। माय बट। आपका नाम क्या है? अच्छा खासा हाथ आगे था, पीछे का को क्या मेरा हाथ मैडम का आपका कैली कार्ड आगे से कफ कर लेता। ठीक ठीक। आपके ना एक पीडी डिपार्टमेंट की एक फीमेल है यहाँ। अरे चक्कर आ रहे हैं शादी। ओके, कौन सी? कैश रोड्रिगेज। सनी आगाज को बहुत पता चलता है। ऑफिस चालू हुआ है 9 मंडे से। अच्छा, वो तो कुछ और भी चालू हुआ है। हाँ, मेरे को वर्कर का टेक्स्ट आया था, तभी मैंने देखा, मेरे को पहले पता नहीं था। मॉडरेटर। मैंने यार अब तक भरा नहीं यार, मतलब क्या बोलूं, आलसी भाई, क्या बोलूं। टाइम निकालना होगा, भरना पड़ेगा असाइनमेंट छोड़ के। ट्रूपर सीट जैसे होता। हाँ तब ठीक है, तब ठीक है। वही तो थंबनेल पे भी वही लिखा है वैसे। और बता कैसा है? अगर वो इलाज उनका हो गया तो नहीं हम लोग वो जो पावर रेंजर पहले अपने हाथ पर मारते हैं, फिर जाके वो क्या गुंडों को मारते हैं। सर गोइंग फॉर कफ्स बोल के कफ करना, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। मैं वो नहीं सब नहीं बोलता, सीधा बोलता हूँ कफ्स। There are like an active warrants of multiple people, so look for them. यार पीछे पीछे क्या चल भरो भरो बहुत शौक है क्या तुमको? हैं? भरूंगा। Okay, put direct as we exited the mirror park boulevard, there is a gear ये 37 बनेंगे call. I ऑफिस, want देख लो। at least 2 units patrolling around over there at mirror park. 10-4. क्या क्या? मेरे लिए भी कपड़े चेंज होते हैं। किसके? तुम्हारे नहीं वही है। 10-4, I'm on a CPI. हुए थे। Circling around the mirror park. Going off road. I need a bike unit and the air one is going off road. I can bring air one.
I lost visuals. He went off road somewhere up. My charge is upside down. जाओगे हो गया ठीक हो गया ठीक ले लो ले लो ले जाओ बचाने लग रहे हैं अरे भाई ये फिर से पकड़ा गया The person saw me. He went on सैम road पप्पी like Dana. उस दिन भी आए थे ओ सैम बेड बच्चा से उतर जाओ started evading from the scene. हाँ सैम शायद वो उतरे हाँ भाई पप्पी पकूर फिर से पकड़े गए Okay, cool. Easy coming. और अरे जोई को बुला दो जोई को राम सर और नहीं क्या अरे केली जोई को बुला दो जोई को नहीं मैम का सर नीचे क्यों है अभी यहाँ कैसे आया Where's the GTR? Where's the heading? आप यहाँ कैसे आए? आपको सब याद दिलाएंगे सर। अरे वैसे पूछ रहे हो क्या आप कितने क्यूट हो मैम थैंक यू सर। ये ऑफिसर भी देखे हुए लग रहे हैं हाँ हाँ लगूंगा ये देखा हुआ ही लगूंगा आप मुझे डेट से लेके जाने वाले 062 dispatch requesting additional on frequency to for the 80 of 90 store robbery. 90 strawberry? Like there's a bank going on? नहीं store robbery पहले का. Which is the escape unit? It was a Vindicator. There are two bike units following the Vindicator. He switched to Sanchez. अबे लेट आता हूँ थक जाता हूँ सुनो और भी बस थोड़ा काम करता हूँ देन स्लीप हाँ मेरा भी कॉलेज ओपन होगा कुछ दिनों में तो खेलना तो और भी बंद हो ही जाएगा बस डिस्कॉर्ड पे थोड़ी देर चिल मारूंगा ऐसे कुछ कर सकता हूँ बट खेलना कम हो जाएगा 22 Matt Cordell. I think he's on different frequency I guess with Ash 603 to 400. Sorry. For any person who will be responding to the latest 99A, I mean B, correction code 2, plus 1. Units responding to this, please switch to frequency 6. 10-4, switching to radio 6. The respondency will pay because there is already one interceptor. 10-4, I'm in the CBI, I'm switching channels now. हो गया To dispatch. Which radio frequencies for the? बोला आप 77 नहीं चाहिए ना क्या? आप चाहिए नहीं ना बैकअप हो गया ना पूछ लो। तुमसे पूछ रहा हूँ तुम ही बोले थे ना यूनिट चाहिए ले जाने के लिए पिल बॉक्स से अच्छा अरे ओके अब नहीं चाहिए अब नहीं चाहिए। हाँ वही पूछ रहा हूँ हाँ भाई किसकी बढ़िया था बढ़िया बिल्कुल तो एकदम लग ही नहीं रहा था भाई क्या लग रहा था लग ही नहीं रहा था जोएल है मुझे लगा कौन ऑफिसर आ गया ये लेकिन बाइक किलो 35 हो गया तेरा भाई पता है मेरे को चोर तो हूँ बोलो लोड है वो तो चुप रहो चुपती है चूती है तेरी माँ चूत बैठ के लोड़े ट्रेकोल की आवाज आ रही है मेरे को कहाँ चले गए थे मैं बाइक में 35 हो गया गाइस हेलो गाइस जोएल कैप्टन इज कॉलिंग फॉर प्रोटेस्ट क्या बात है व्हिच कैप्टन रॉकस्मिथ क्या रॉकस्मिथ इज कॉलिंग मी फॉर एस This is Indian deputy. I don't give any FFP test. Let's go. What? I gave it, and I'm a sergeant. ये क्या कर रहा है भाई तू क्या पहन रहा है You are a sergeant. अरे ये नहीं पहन रहा हूँ चिल मार क्या पहन रहा है भाई अरे ये नहीं पहन रहा हूँ चिल कर क्या पहन रहा है भाई Park Ranger officer do we have right now? I only write bike. I don't give a Go and tell that captain. Right, this is fucking senior deputy. I don't care. Who the fuck is Sir, it is Matt Cordell or Noah White. Turn it to Nova White. What's the 20? I think no had a code 0.
लेट्स गो अपना एसओपी टेस्ट हो उससे पहले। भग जाओ, पहले ही भग जाओ भाई, बहुत बुली करेगा वो। Uh, 200 to ReX. Send it, sir. हो गया। 25 at captain's office right now. 10-4, sir. I'll be 76. हो गया। खत्म। We'll arrest the Skyline if he appears again. Obstruction of justice. 406 back on frequency 1. हाँ बोलो। अबे रॉक स्मिथ बुला रहे तो करोड़ियो 1 पे तब से। अरे आ गया, मैं आ गया, नीचे ही बैठा हूँ। हाँ तो जाना मिलना रे कैप्टन ऑफिस। हाँ तो मिल लिया, चुप हो जा। अच्छा मिल। Yeah, one more happy good news. I'm just gonna send more units for you. Yes, sir. Like, yes, Mr. Rex Davis. Yes, sir. All the what we say Rangers. Yes, sir. At what's the time right now? It 9 is o'clock. yeah 9. Call them at 9:20. I need all the Rangers. अगर ओशन नहीं आ पा रहा it's fine. Yes, उनके sir. बाद जो हमारे एडी ब्रॉक हैं और जितने भी तुम्हारे सार्जेंट्स हैं, जितने भी कमांड मेंबर्स हैं, मेरे को सारे 9:20 पे ऊपर चाहिए। It's gonna be the big day for Park Rangers Department. 10-4, sir. Big deal, man. अभी मैं सर Big वैसे deal. वही कर रहा था कि आई वाज कलेक्टिंग और द फर्टिलाइजर्स। हमारे पास बहुत फर्टिलाइजर्स पड़े हैं तो सारे फर्टिलाइजर को मैं एक जगह एक लॉकर में डाल रहा था। एंड लेटर वी कैन गिव डू अ लाइक बिडिंग डील फॉर द लाइक 3 जो हमारे पास वो हैं जो लाइसेंस शॉप्स। Don't worry, today will be such a big day that Game changer. LSPD and sheriff units will be like ऐसा destroyed. क्या हो गया? तेरे को बुलाता हूँ। तुम बस बुलाओ मीटिंग, तुम बस मीटिंग The बुलाओ। fuck? 9:20 एंड उसमें हाई कमांड्स रहेंगे और सिर्फ पार्क रेंजर्स रहेंगे। क्या सकते? अरे तुम बस सुनोगे वो मीटिंग के बाद जो रिजल्ट आएगा उसके बाद बोलोगे कि कोई आया। लगेगा बोलेगा किसका? वही मैं लग ही रहा है मेरे को ऐसे। Rex. Call Rest all in the peace, units. brother. इसी बात पे मेरा बैच बनेगा कि उसी दिन बनेगा जब टेस्ट होगा? नहीं तुम्हारा बैच दे दूंगा मैं। Okay. तुमने मेरे को ईमेल कर दिया था ना, मैं कर दूंगा आज। 1314. Yeah. Who is this? Yes, sir, बताइए। My name is Bill Browns from DOC. I wanted to have a word. 402 Radio 1 interceptor unit. Yeah, join we in, need join you in. at Radio 6. और कौन है? Yeah, what Sir, happened? so can you spare me 2 minutes of your time and talk in person? Yeah, sure. Guys, can you just give us some Yes, time? thank you. Thank you, officers. Yeah, I'll Davis be just going email on. them. Yeah, man, I'll mail him. On this radio. Yeah, so sir, first thing, my name is Bill Brown. Wait, प्रोजेक्ट इनकी आइडिया क्या होने वाला है? भाई तुझे तेरे साथ जो होने वाला है ना, क्या होने वाला है बता ना। मैं क्या ही बताऊं, मैं क्या ही बता ना। भाई मैं तो जा रहा हूँ, निकल रहा हूँ बाइक चलाने। Shut up, man. I'm back क्या to my ही होगा मतलब एसओपी टेस्ट। रेगुलर सार्जेंट सीनियर नहीं पता नहीं भाई क्या my होना। मैं तो सिर्फ तभी ऐसे बैठा था, मुझे नहीं पता कुछ भी। बताना। कोई आइडिया नहीं है भाई, कोई आइडिया नहीं है भाई। एक बात बता, ये हेलमेट अच्छा लग रहा है या फिर पर जो होने वाला है मतलब क्या ही बता, वो बोलूं। हेलमेट अच्छा लग रहा है या फिर ये हेलमेट अच्छा लग रहा है? बे लिपस्टिक भी लगा ले यार तू मत इसकी क्यों मार रहा है भाई? लिपस्टिक भी लगा ले भाई जोएल, मेकअप भी लगा ले थोड़ा। ये अच्छा लग रहा है भाई, ये अच्छा लग रहा है ना। ऐसी घूमूंगा आ जाओ। बाइक यूनिट 35 दोनों बाइक आउट है भाई। तू क्या कौन सी बाइक चला रहा है भाई? बाइक को यहाँ वापस बुलाऊंगा, बाइक को बोलूंगा। ये क्यों स्पैम कर रहा है? शायद पागल हो गया क्या?
Dispatch got the visuals back on the bike. Dispatch, I'm at 2. Dispatch. Dispatch. Enforcer, you are. We'll be needing a bike unit. Like we got the visuals back on the bike. Dispatch will be needing units. I think Sari unit reduce 6 पे है. हटो रे छोटे मोटे लोगों से बात सर वैसे एक बात बोलूं, हाँ मोस्टली सारे दोपहर को रहते हैं, मतलब आई मीन नहीं, मैट अगर कॉडल तो अगर अभी है. नहीं आए तो अगर नहीं आए तो तुम्हें इन्फॉर्मेशन में पास ऑन कर दूंगा, बाकी तुम्हारे ऊपर है. हाँ, मतलब रहने पे हमारी नहीं लगेगी ना, तब सोलो वाले सबकी लगते हैं. लगेगी, सबकी ही लगेगी हाँ पूरे लगेगी तो सबकी ना, हाँ तब चलेगा. यस हाँ यस तब यस. चलेगा, क्योंकि मैंने सबको टैग करके बोल तो दिया है, मतलब वो टैग नहीं हो रहा ना, तो इंडिविजुअली मेरे को टैग करना पड़ रहा है. Vehicle condition on the northbound center of freeway. Got the visuals back on the bike. थैंक्स फॉर द सब साग्निक बैनर्जी. there's a bike certified travel available, but there are no bikes, so I will not be able to. Can you please ask Mark to come with the bike? He's running around with the bike. I'll do a 311 for you. चलो रेक्स, मैं आता हूँ थोड़ी देर में बाद. सर अचानक कल से क्या हो गया, सबके एकदम बजा रहे हो एकदम. मैं अरे नहीं नहीं. Vehicle condition on the towards the Mount Chiliad. 311 then. Sassol. ए फालतू कैसे बोल रहा है सर्जेंट? सर्जेंट से फालतू नहीं सुनूंगा मैं. भाई ये पैंट पहन ले तू, मैं बोल रहा हूँ. ओए ये वाली पहन ले, मैं बोल रहा हूँ. नॉर्मल पैंट पहन के जाऊंगा मैं. हटो ये तू आगे. अबे अबे सुन तो, देख तो देख मेरी आउटफिट देख, मेरा रेंजर वाला मैं बनाया था, ये देख, ये वाले पैंट पहन सही गंजा लगते दिख हैं. रहा है तू, गंजा गंजा दिख रहा है गंजा. गंजा नहीं, देख ये देख, ये पैंट्स पहन ले सही लगेंगे. नहीं जी. और माया क्या हाल तेरे? लॉन्ग टाइम नो सी. Get the units. Long time no see, तेरे को नहीं दिखती हूँ मैं. नहीं देख भाई एक बार जवाब नहीं दे रही तो खामोश बैठा ना भाई. दिमाग खराब, डिस्पैच ये वो ये. क्यों छोड़ना चाह रहा है? पागल हो गया लगता है. नहीं नहीं मिलेगा. देख लग तो बढ़िया रहा हूँ. कैसा लग रहा हूँ? सोकर. लगेगा. हेल्प करना पड़ेगा अब तो. अब ठीक है एकदम. संकार. सीरियस बाइक में. क्या है? पैंट से शूज बाहर आ रहे हैं. आ रहे हैं ना? ये शूज मैंने रेक्स के पहन लिए इसलिए. चेंज कर. छोटी सी बात है. ये ठीक है. ठीक तो है पर ये अच्छा था, ये अच्छा है. अब ठीक है ना आउटफिट? लग रहा है प्रॉपर वीसीएस का बाइकर आ गया. एक बात है, ये हेलमेट अच्छा है या बेंच जो हर दूसरा बाइकर बैंक घूमता है वो अच्छा है? बता दो. वो बिल्ली वाला नहीं, बिल्ली वाला तो जी ये प्लेन, ये वाला प्लेन अच्छा. ये अच्छा है, पर ये बहुत सुपर है और हर बंदे बैंक घूमता है, तो इसलिए मेरे को इतना अच्छा लगता है. तो चेंज कर ले. ये कि वो ये बताओ. ओए दोनों बताओ कौन सा, ये या पहले वाला? पहले वाला ही पहनने, क्योंकि हर किसी को मैंने यही देखा. छोड़ दोनों पहनता हूँ, मतलब दोनों जिम में रखता हूँ, जो बढ़िया लगेगा वो पहन लूंगा. हटो ये छोटे मोटे रेंजर से बात नहीं करता. डॉक्टर मैं कमिंग थोड़ा सा. मैं कमिंग थोड़ा सा. डॉक्टर कम डाउन. Dispatch. क्योंकि ये रेडियो पे क्यों समझ आ गया इतना? पागल. Needing a bike unit or maybe a car unit. I still have the visuals on the bike.
Please contact Mark. He's with white. Get in touch with Mark. Ask him to come on the radio. भाई लौंडा बाइक लेके भाग गया, अब रेडियो पे नहीं है, मैं बाइक मांग रहा था तो दे रहा था। Enforcer? They had a 50. Aye. That's me, sir. Mark Lee, sir. Mark, I need 10 for sir. Yes. Let me give you 20. Suspect what? Why? Cordon 20. I am on radio 1. I am on radio 1. I was in a situation because they needed it. The bike unit got escaped. I have one suspect with me. कहाँ पे है मैं? What's your 20, Jimmy? Near the आता हूँ मैं बस में। 10-4. Number yard, you can भाई see my tracker. ठीक है भाई, देख लेंगे जो भी हो। आ रहा हूँ मैं धीरे-धीरे खाते-खाते। The biker guy left, but his occupant is down. At a 50. आता हूँ। I was in a situation in which अच्छा है मैं कमांडिंग ऑफिसर नहीं हूँ भाई, बच गई। 10-4, I'm coming towards Montreal. Leading units. You might shoot me. अरे वो व्हील फील्ड का तो खुला हुआ होगा ना? तो पार्क रेंजर का अपना है। हाँ तो फिर ठीक है ना, कोई ना। एडी तो सबसे पहले क्या 41 आया। We'll be needing units. The bike unit is trying to hurt me. I'm coming. Just give me ETA 1 minute. Also need a car unit. Suspect down है. इसको गोली मारो रे कोई। I'll send some units. मैम भाई मेरे को भाई हाँ कि वो सही अच्छा विल कार्ड। अरे वो छोटू होगा ना तो चलेगा। लेकिन रॉक्स में तो मैम भी साथ में कैसे आए? ठीक है भाई। मेरा रिएक्शन देखो। अरे एक बार मेल पे जो अपना जो पार्क रेंजर्स वाला मेल है वो लास्ट मैसेज तो देख एक बार। लास्ट मैसेज जो मैंने डाली अभी डाली है। लास्ट वाला मैसेज देखो। लास्ट वाला देख। ये कौन सा आउटफिट है? कुछ नहीं आया। कैप्टन ने ट्रांसफर कर दिया एलएसपीडी में। एलएसपीडी का ये नहीं होता है कलर, लेकिन ब्लैक होता है। अरे मैं यूनिक आदमी रॉक्स में जाके बोलेगा चल। ये नहीं होता है कलर, ब्लैक होता है। I'm currently in a meeting. Is it urgent? I'm the only officer here, and there's one bike roaming around. कौन है? तेरा बाप। ओए कौन है तू? पहली बार दिख रहा है बहनचोद। आते ही कैसे फालतू बोल रहा है? क्या नाम है तेरा?
My 20 is first floor meeting room, but he needs some additional units. Wait, I'm just gonna help you out. Jimmy. The bike unit is here. We'll be needing just one car unit. ओए हाँ वो बैम्बी सर का वेट audible. कर रहे हैं। हाँ बैम्बी सर का वेट Okay. कर रहे हो कॉर्डेल का और He नोवा got वाइट। fired. He got fired yesterday, Oh, by the way. Bambi's fired. अच्छा he's fired. Yeah. Oh. 22 officer who just shouted, can you provide 77 to Jimmy? सर नीचे लोअर पार्किंग में बहुत सारे खड़े हैं, 5 से 7 खड़े हैं, कोई नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा। 4131. Can I get the 25 out? Joel, 25 or towards the location of Officer Jimmy. Yep. 10-4. Is it an active shootout? Or what? Yes, 10-4, sir. 10-4. What's the 20? I think they. देखो शूटआउट के नाम पे सब चलेगा। 4132 Rockstar, did you set me to 25 at Jimmy's side? I want you to 25 at Lumber Yard. Help them out. कॉर्डल को बुला देता आ हूँ। गया मैं। व्हाट्स अप हेलो गाइस। कॉर्डल को बुला दे रहा हूँ। Okay. क्या बे? आना भाई, मीटिंग रूम बुलाया है। 311 भी देखा बेबो करो। मैम को रॉक सर को बोल, बेबो मैम के साथ हूँ, स्टेटमेंट दे रहा हूँ, कुछ नहीं अच्छा बोलेंगे। कॉर्डल बेबो मैम के साथ है, स्टेटमेंट दे रहा है। क्या तो कर वो रहे नहीं हैं आ रहा। कपड़े? कोई नहीं कोई नहीं। Suspect down. 2 suspect down. Both of them down. Nice. No need of backup. Enjoy. मार के एंजॉय किस बात का भाई? No need to back Enjoy up. wherever Yeah. you are. You don't need any more additional. No. Can we get car units? AR-76. Can we get a car unit over here, please, at the lumber? ऐसे ही खड़े रहना है। 3 suspects पता down. नहीं। भाई एक कॉल 3 बार देते हैं ये लोग। 4+1 will be 76. भाई नीले वाले हैं? ये क्या है? वेट करो। मैट कॉर्डल को कितना टाइम लग रहा है? अच्छा एक बार पूछता हूँ ETA। हाँ पूछो। हाँ कितना टाइम भाई? सर पूछ रहे हैं। भाई देखो यार, मैं क्या करूँ यार, वो चल रहा, स्टेटमेंट दे दी उनकी सिचुएशन में, क्या करूँ बताऊँ मैं। तो तुम किसी और यूनिट को दे के आ जाओ ना। क्या कहते हैं? यूनिट नहीं है ना, DOG की DI हुई है, उसको देना है। तेरे को स्टेटमेंट देना है। Yep. हाँ तो इनका ETA? कुछ बेबो मैम के बस स्टेटमेंट दे के आ रहा हूँ 5 मिनट। 5 मिनट बोल रहा है, स्टेटमेंट देना है DA को ऐसा। बाद में कर दियो। फर्स्ट फ्लोर जहाँ नॉर्मल रोज की मीटिंग होती है, जल्दी आओ, इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए और हांस के लिए इम्पोर्टेंट है।
Trigger requesting a ride along at MRPD. yes sir, बताइए. हाँ मैं अभी दे देता हूँ. सैवियो देवराज. बना दिया. हाँ हाँ ठीक है. Yep. Yes Eddie. मैं उधर ही आ जाता हूँ, सही से सुन पाऊंगा. बताइए सर. कैसी लग रही है? पसंद नहीं आई. BCSO चाहिए क्या? नहीं. ओके कोई नहीं. तुम्हारी यूनिफॉर्म किधर? मैं तो पेंट काट रहा हूँ, सेकंड. हाँ मैं अभी असली वाली पहन के आता हूँ, ये रेंजर एक्स डिटेक्टिव वाली है. हाँ सब पहन के आओ. आज असली वाली पहन के आओ सब लोग यूनिफॉर्म जल्दी. मैं असली वाले में ही था अभी तक तो. अभी काम करने जा रहा था. नहीं तुम तो इसी यूनिफॉर्म पे रहना, तुम इसमें ज्यादा अच्छे लग रहे हो. असली वाली कौन सी पे? अभी मतलब वही अपनी जैकेट वैकेट या वेस्ट वेस्ट. मैं वो मैं तो सैलस पीडी to Jimmy direct. एलएसपीडी नहीं पहनना है. ना ठीक है चल. एलएसपीडी को पहनना, असली वाली तो यही है अपनी. Yeah, go ahead. हाँ सर, बैक. हेलो. मैं Someone was asking for me हाँ on the तो radio. मैं क्या कर खराब नहीं हो पाओगे. अरे नहीं कोई इशू नहीं. नहीं, if you wanna join me in the meeting you can right now. A meeting right now. First floor. Did you all take the evidences? Park Rangers. Negative. I haven't searched them. I'm just taking evidence just at now the first. Is cordon free? Yes. Okay. Is this the frequency for the lumberyard situation? It's a code 4. It's a code 4 right now. Yeah, the owner of the bike that was involved is right कुछ with me at फायर MRPD क्यों हो right गया? now. ना He's सस्पेंड reporting this stolen. Yeah, we got. Forgot you. violation. Yeah, just bring the bike as well. The owner of the bike is right here. क्यों चाहते हो क्या? Okay. It's a Sanchez, you mean? सुनो डांटे, इधर आओ, बाहर आओ. हाँ जल्दी आ जाओ, मैं बस मीटिंग स्टार्ट करने वाला हूँ. Yo, what's wrong, boys? क्या पता. डोंट नो. या तो आज अच्छा काम होगा या तो मैं रिजाइन डालूंगा. Okay, you're on phone. अरे This Captain Rock और फिर मैं सपने देखूंगा जहाँ मैं गांजा बेचूंगा. Yeah, send it. The good news is There's an attorney who is here to receive his badge. Savio Dev. There's an आजकल attorney बहुत here गंदे who गंदे ड्रीम wants आ to रहे speak भाई to you यार. about his badge. Yeah, come to me. Come to the first floor and take his badge and give it him. I'm currently in a meeting. भाई 5 रीटेक दिए हैं भाई एक स्टेटमेंट के लिए. Trigger dispatch anyone for Ardon. रीटेक पे रीटेक. Okay, yes guys. How क्या हालत? सर आगे आ जा तो रुको, आवाज नहीं आ रही. बिल्कुल. आ जाओ पड़ल बैठो. सर बैठो So, मैं उधर बैठ जाऊंगा. What do you understand by park rangers? Park rangers equals to power rangers. One view नहीं, I mean sir, park rangers are the one who protect outside city. सावियो देवराज ऐसा कुछ है. जी yes हाँ, क्या समझते हो park rangers को? Park rangers are the one who protect the wildlife and the illegal things happening there. Yes, so I'm just gonna frame your answer a little bit. Park rangers are the most professional force, okay, who are there to deal with all the irregularities having through humans
to the natural world. Okay. Am I right, Matt Cordell, on that? Yes, sir. समझे प्रोफेशनल फोर्स. हाँ सर. चलिए ठीक है. हाँ, पाक रेंजर्स में इन टोटल अभी कितने ऑफिसर्स हैं? It's gonna be 11. It's gonna be 11. It's gonna be 11. Why सर एक other डैगर और है guys वो are आया not here? नहीं. Dagger. सर 11 तो नहीं है बे. सर 11 हुए में तो कितने 4-5 हुए 8 होंगे. 8 है. नहीं आज ये क्या है so my bad 10. सर 3 8 है. जन एब्सेंट है. 3 जन एब्सेंट है. 10 कैसे हुआ? 2 कौन है और? Okay, guys. I know you are lacking in your commanding. Like आपके ओशन सर ही नहीं आ रहे बहुत दिन से. सर वो तो समुद्र में बह गए. मेरे पे अकेले पे बोर्ड है. वो है वजन है. Yes, आपका वजन मैं हूँ आपका वजन हटाने. So we in the sense me and Jun Nakamoto, after having several discussion about park rangers, we come to a conclusion that instead of appointing a new lieutenant or anything, we have a new proposition. Since we are lacking in units in BCS and LSPD, and we are lacking resource, we are shutting down park rangers from today. सर ये मत करो सर इससे. देखो यार पूरा मैट कॉर्डल इतना फेमस हो रखा है. सर देखो मैं 2 चीजें के लिए फेमस हूं सर. देखो मेरी एक्सप्लोरर और पार्क रेंजर. सर ये मत करो बस. बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं. I'll agree on your point. सर देखो मैं जब देखो एक काम करो, रीजन दो क्यों पार्क रेंजर को बंद ना किया जाए. चलो एक एक करके. सर सिटी में इतने सारे लाइसेंसिंग अप्रूव कौन करेगा? होल्ड. सो ये सेम इसी मीटिंग हुई थी पहली व्हेन आई वाज एट द एलएसपीडी. सेम थिंग वाज डन विद द बीसीएस although at that time Vikram and Teddy we were here with Brian. Sir, I don't know why I'm getting same vibes today. उस दिन बीसीएस से बंद हुआ था. Rock sir, can I suggest one thing? No. भाई माउंट से पे टपक पड़ा भाई जिम्मी. Grab and heli easy peasy. Oh. Rock sir आवाज नहीं आ रही है. Rock sir आवाज नहीं आ रही. Give me a minute, I'm getting it. Yes sir. मेरे को देख के सर क्रिमिनल्स की फटती है. आप मेरे को ही मतलब ऐसे कर रहे हैं. ऐसे क्या चल रहा है? सर नहीं सर वो फील अलग आता है रेंजर्स में. मेरे ऊपर क्यों बैठे? No problem boys. If your department get dissolved, my doors are open. My office is there for every one of you. किसी की डोर नहीं चाहिए हमको. सॉरी सर हम अपने डोर में सर हम अपने घर में खुश हैं सर. या व्हाट? हम अपने घर में खुश हैं सर. Eddie, I have a special couch for you at my नहीं सर कोई काउच वॉच नहीं चाहिए. अपना काउच मैं खुद बनाता हूँ. सर ये बताओ सर जो काम होते हैं ना रेंजर के वो भी हम करते हैं. मैं आज दिन में 5 लाइसेंस की ट्रेनिंग देकर आया हूँ दिन में. ठीक है सर. अभी तक जितना भी डिपार्टमेंट है बहुत मुश्किल से मैंने खड़ा किया है. और सर सुबह मैं चाहता नहीं कम 7-8 नेट हटा कर आया जाके फिशिंग स्पॉट पे. बताओ मैं अपना काम कर रहा हूं. I actually don't know what's going on with the SSP department's thinking. Yeah, fuck it. Let's. There are better options rather than closing the department, to be honest. Yeah, so yes. So okay, yeah. Let me go back my point. I was a little bit busy. Yes. So yeah, we decided to shut down the department for a time being. For a time being means once Ocean is नहीं चलेगा. नहीं चलेगा. Ocean नहीं आएगा कभी. आपको कह रहा हूँ मैं. Ocean नहीं आने वाला. So Ocean का जिस दिन मेरे को proper letter का and once we think one of you guys are ready to handle the department, we will appoint a new lieutenant accordingly. Sir, why don't you handle as a supervisor and let us work? Buffalo 99B is code for. I have more things to go. It's not like I mean sir, आपके अलावा भी बहुत लोग हैं which are in the high command, so anyone of them can take care of the department until Ocean's apart from that, as I mentioned
we are lacking in some of the manpower सर resources, सर even in सर the सर other department as कैन आई well. नो Yeah. वन थिंग? Yes. आप मेरे को एक चीज बताइए किसका डिसीजन था सर ये? कैन आई नो प्लीज? क्या ये करेक्टिव डिसीजन है मेरा और क्या कहते हैं नाकामोटो का? कि रेंजर्स डिपार्टमेंट बंद कर दिया जाए बिकॉज ऑफ ओशन? No, it's not because of Ocean. There is many then other things about your so can you tell us perspective. about that please? Yeah, because the fuck ups you guys are making first. Can you tell us about the your fuck ups like please? First, I already told you, man. I already had a test today. I told you what the Yeah. your fuck up you are making during the situations as well. Okay, do you know you have some complaints, Mr. Eddie? Yes, sir. Most of them we are neglecting it, but Yeah. we are also monitoring them. That you are not Mhm. following chain of commands. You are just going against some of the thing. You are just arguing with the seniors and all that thing. And Plus one will be 76 I to the think ladies from 90. Dante will also agree with me on that. Dante, I think you have also received I complaints already against faced it. what you say like consequences on that purpose is like legit. Yeah, so that is the reason we are not making any consequences on you right now. I'm taking this decision on a collective base. Okay, tell me one thing. Earlier, who was your lieutenant apart from Ocean? It was Jason. Was Jason active at that point? 7 बजे 7. That's not the main point. अगर सर अगर कोई ऊपर का बंदा inactive है, that doesn't mean कि आप कोई डिपार्टमेंट बंद कर देंगे. That doesn't mean का मतलब नहीं है, ठीक है? मैं चाहूँ मैं बंद कर सकता हूँ. सर मैं कहता हूँ और अभी बात मैं खत्म करो. ओशन सर आ गए हैं, इनसे बात करते सीधे. ओशन सर कुछ कहना चाहेंगे कि पाक रेंजर बंद हो रहा है? पूरा तो बताओ. Great, मतलब I mean I just came in. रॉक सर आप ही बात करो. You are not active, कमांड करने के लिए कोई है नहीं, तो that's why. Yeah, I wasn't, and मैंने कन्वे भी किया था उसके बाद, but I'm like this week I'm going strong, and I'm back, so I will be here. But of Like course, I was there not there for a. Okay, I was not there for a month, so I'm not really in the place to say anything. Yeah. Go ahead. So the thing is that Ocean, apart from you, the person who was been in charge first, okay, and was next to you, Mr. What was your name? Second guy. Jason Snake. Yes, Mr. Snake. Mr. Snake was in charge, and suddenly he left. I think after that, Eddie got promoted, and he was handling the situation. So what exactly happened? Jo Eddie the, like it's not only me. Okay, I think Rio will also agree on me that we were getting several complaints against him, and we would he faced consequences and everything. But as a command member, I don't think so. He should be having that much what we say dismal reactions on him, and he should be a proper commander. Okay. So for now, apart from you, we were not seeing anybody who were good in order to lead the department at that point stage. So yep. Okay. So the thing is that Ocean, if you like make a written statement to us ki yeah you will be active and you make your force first of all professional. Okay, I know they do fun, it's fine, but not every time. Okay, if you are ready to make your team professional and be back on duty and handle the situation well, then yeah, we have no issues to shut the department off. But if yeah, so it totally depends on in terms you. of in terms of activity, I know I was not there for a month, but I mean I had my reasons, and I gave my word that if I am not active this week, then I will resign myself. So I'm here and I will be doing the duty. No worries. So the thing is that it's better you need to focus back on the work. So if you are fine with it, so I'm not gonna shut it down for a time. But if the things goes wrong again and the things continues, we need to. I would appreciate if you could tell me about whatever the problems you have, so I will personally. Okay, and for a time being, Mr. Eddie, until he learns the meaning of professionalism, he is being transferred to LSPD. Once he learns back what is professionalism, he has the thing in his dictionary, he will be back at Rangers. Eddie? Yes, sir. Okay? Yes, sir.
Yeah. So you will be back as a head sergeant to park ranges once you are done with your learning skills on professionalism. But can I know one thing, like, please? Yeah, sure. Like, yeah, you're talking about what you say, like my complaints and all. But Uh-huh. you know, it's regarding what you say, the ranges thing, or the normal SOPs, or like that. About you. Yeah. Okay, who were the next two apart from क्या कहते हैं Ocean? Who were the next two leads? It was you and Cordell. Cordell, Yeah. what happened with you in the SOP exam today? सर याद मतलब लाइक सर रटी भी नहीं है, अब ऑन फीड में कर लेता हूँ, लेकिन अब ऐसे वर्ड टू वर्ड चीजें नहीं रहती हैं याद सर, बीइंग वेरी केस लॉस ऑनेस्ट। ओके, केस लॉस में 0 एक भी नहीं आता था, तुमने तो मेरे को मुंह पे बोल सर दिया था याद without- नहीं था, मैंने इसलिए बोल दिया था, मेरे को याद नहीं है, हाँ। क्योंकि मैं फालतू झूठ बोला ही नहीं, मैं इसलिए बोला सर जो नहीं आता नहीं आता, हाँ, रट के सर मैं ऐसे। जब नेक्स्ट टू कमांड्स को ही एसओपीज नहीं पता तो फिर क्या फायदा, डिपार्टमेंट कैसे चलेगा, मेरे को बताओगे? सर मेरे को एसओपीज पता है, लाइक ऑन फील्ड में कुछ हगास नहीं करता, कभी कभी करता हूँ, मानता हूँ उसकी, फिर मेरे को सजा भी मिलती मैं है, लेकिन हगास की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ जब नेक्स्ट इन जो कमांड्स हैं उनको ही एसओपीज नहीं पता, जो पीडी कमांड में है, रेंजर्स कमांड में है, उनको एसओपीज नहीं पता, सिंस ओशन इज नॉट देयर, हाउ विल द डिपार्टमेंट विल लीड, मेरे को वो बता दो, समझा दो, उसका आंसर दे Tell दो। you मैं something, sir. Sir, Yes, can I tell you बताओ। something? Yeah, हाँ। regarding this, like, sir, डिपार्टमेंट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको SOPs नहीं पता। हाँ, आज उन सब का टेस्ट हो रहा है और उसमें से 4 तुम्हारे अलावा और भी डिमोट हो चुके हैं। I know। हाँ, तो मैं बता ऐसा रहा नहीं हूँ है कि अब नहीं, आप बात कर रहे हो लीड करने की, तो आई एम टॉकिंग अबाउट लीड ओनली, बाय द वे। हाँ, There are some people who, what do you say, like, who are leading the departments and all shit, but you know, those guys, those people don't know the SOPs and all. सर एसओपी छोड़ो, बहुत कुछ नहीं वो पता भी है, लीड कर रहे हैं अभी बीइंग भी वेरी still। ऑनेस्ट। Yeah। एसओपी की तो कुछ बात दूर है, बहुत कुछ नहीं पता उन मैं लोगों को, ऐसा नहीं है कि मैं मुझसे अपने आप से किसी को कंपेयर कर रहा हूँ, बट हाँ, आई एम हाँ। जस्ट टेलिंग यू द ट्रुथ। No, I see. I know the truth, and that Yeah. don't like. I know, and what actions I will take. I know what's gonna happen with them as well. So my point was that कि तुम लोग को ही अभी क्लियर नहीं है, तो फिर आगे किसको बताओगे? सर ठीक है, बात क्लियर रहने की नहीं है, बट हर हाँ। टाइम यू नो, लाइक ऐसे कुछ कोई भी याद करके ही नहीं रहता, लाइक आई टू बी ऑनेस्ट, लाइक आपको भी इतना। Okay, tell me one thing. Yeah। Are you guys FTO or not? I am FTO, FTO। you are a FTO. केस लॉस सबसे बेसिक चीज है, वो तुम Yeah, I लोग को know। नहीं पता तो मैं क्या करूं? सर केस एफटीओ के लॉस टाइम पे है। फोर्थ और फिफ्थ अमेंडमेंट नहीं पता तो तुम लोग बंदे को किस बेसिस पे सर्च करते हो, मेरे को ये बता दो, किस बेसिस पे मिरांडा राइट्स सुनाते हो, इतना मेरे को बता दो। पीडी कमांड हो गए, तुम लोग को फोर्थ और फिफ्थ अमेंडमेंट्स नहीं पता तो फिर बताओ, बाकी का छोड़ दो। मैं केस लॉस में ये सबसे बेसिक चीज होती है। सर पता है और पढ़े भी हैं, लेकिन याद नहीं है ना एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड की हेडिंग कौन सा था। क्यों याद फोर्थ नहीं और है? फिफ्थ में सर आई विल टेल यू, लाइक लेजिटली आई विल टेल यू वन थिंग, फोर्थ और फिफ्थ में मेरे को, लाइक पर्सनली मैं बताता हूँ, मेरे को बस ये रह जाता है कि फोर्थ वाला कौन सा है, फिफ्थ वाला कौन सा, राइट्स अगर वाला ये और सर्च और सीजर मेरे वाला को अगर कौन एक सा है, चीज मैं बता दो, उसमें मिस हो जाता हूँ थोड़ा। यही चीज अगर, अच्छा मेरे को चीज बता दो, अगर तुम कोर्ट के हेयरिंग में होगे, ओशन मान लो ओशन तुम्हारा जज है, ओके ओशन जस्ट टेल मी यू आर द जज, ठीक है, एंड इन कोर्ट हियरिंग इसको बोला जाता है फोर्थ और फिफ्थ अमेंडमेंट यूज किया गया था, अब ये एक्सप्लेन करता है फिफ्थ को फोर्थ अमेंडमेंट में, व्हाट एक्शंस विल यू टेक एज अ जज ओवर देयर, लाइक ही इज अ सीनियर मोस्ट ऑफिसर ओवर देयर, विल यू नेग्लेक्ट इट? Of course, no, of course not, of course not। मतलब वो केस तो हार हो गई, उसके बाद डिसिप्लिनरी एक्शंस भी हो सकते। So I think Eddie, you should understand that. Yeah, I get my point, but I'm telling you that thing, like regarding SOPs and all, you're telling me like apart from motion, like it's gonna be me and Cordell who are the commands, okay? So according to you, like we guys are, what do you say, like we don't know the SOPs and all, according to you, but there are, what do you say, okay, like okay, tell me one thing. What did I convey to Cordell and you that after a week, that this thing is only for a week, and after a week you will have a test again and you will be back at your positions? Did I mention that? Yeah, just a temporary thing. So yeah, you mentioned that. Yeah, I agree. Yeah. So what's the issue with it? है ना, like you're telling me like कि जो लोग सर लाइक कमांड कर रहे हैं, लाइक डिपार्टमेंट्स को, उन्हीं को एसओपीज नहीं पता तो कैसे चलेगा? ठीक है, आपने यही बोला। सर डिपार्टमेंट में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, जो पार्क रेंजर्स में नहीं है, या फिर नहीं मतलब मेरे को बाकियों से अभी मतलब नहीं है, अभी जो सर बाकी लोगों पे एक्शन नहीं होता सर। क्यों नहीं होता? एक्शन सिर्फ मेरे पे ही होता है, आपको भी क्यों पता नहीं है होता?
आर यू श्योर? ट्रे से पूछा कि तूने ट्रे के साथ क्या हुआ? पूछा मैंने उससे। क्या हुआ Owen बता? is gonna उसका एग्जाम हुआ। हाँ तो उसके साथ वो भी दूसरे उसका भी डिपार्टमेंट एग्जाम नहीं हुआ। है? हाँ नहीं गया वो। क्या नहीं गया? दूसरे डिपार्टमेंट में मुझे नहीं, मेरी इतनी बात नहीं हुई, फिर आपने बुला लिया मेरे को। तुम्हें आपने डिपार्टमेंट ऊपर क्यों बुला लिया। ट्रांसफर किया है? तुम्हें डिपार्टमेंट क्यों ट्रांसफर किया गया पता है? क्यों? मैंने जब तुमसे पूछा कि प्रॉपर एग्जाम हो रहा था तुम्हारा, तुमसे पूछा कि पैशनलिज्म का मतलब पता है तुम्हें क्या होता है? तुमने क्या मेरी डिक्शनरी में नहीं है। और हाँ तो तुम्हारी डिक्शनरी में नहीं है तो मैं ला रहा हूँ तुम्हारी डिक्शनरी में दूसरे वे में। अब मेरा तरीका है उसको सॉल्व करने का। अब तुम्हें उसमें प्रॉब्लम है, मेरे को कोई इशू नहीं है। तुम्हें सुनना है सुनो, ना सुनना है डिपार्टमेंट चेंज का उसका कोई सेंस लाइक। मेरा मन है, मैंने करा। बोलो। 10-4-603 will be 76. और कुछ उस पर झगड़ना है तुम्हें? कुछ बोलना है उस पर? नहीं मेरे को झगड़ना नहीं है सर। हाँ नॉर्मली बात करो, मेरे को झगड़ना नहीं है। हाँ तो मैं बता दिया ना तुम्हें डिपार्टमेंट ट्रांसफर क्यों किया और किस लिए किया मैंने। उस रीजन पे सर मैं एक किया चीज मैंने पूछूं डबल। क्या? हाँ बोलो। बाकी सब तो सही है सर, मेरी एक्सप्लोरर क्यों ले ली लेकिन? एक्सप्लोरर क्यों ली? डांटे जरा इसके एक्सप्लोरर के सिचुएशंस के बारे में बताना चाहोगे कॉर्डल के? या वेट रियो तुम ही बता दो इसके एक्सप्लोरर के सिचुएशन। याद है अपन कल एक सिर्फ चेस पे थे अपन, तुमको मल्टीपल टाइम्स मैं बोल रहा था मत करो उसको पेट, बार बार एक बार भी पिट नहीं करा सर इसको, एक बार भी पिट नहीं करा था। वो ब्रेक चेक करा था मैंने, इसलिए तुमने आपको बोला। उस गाड़ी को तो ब्रेक चेक करता तो समझाया था ना, दूर रखनी चाहिए गाड़ी। सर तो ब्रेक इतना चेक दूर कर रहा है तो रखो, अब 10 उसमें मीटर पीछे बबल रखो हो गाड़ी। जाता है, मैं नहीं करता। अच्छा रॉक सर आपको भी पता है अब ये जैसे जवाब मैं आएगा पहले। तो फिर एक ऑफिसर से तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो सर? सर ये वो एक ठीक ऑफिसर है से ये लेकिन जवाब Okay, अच्छा लगता है? listen, we are not here to discuss anymore. Ocean, just tell me, you wanna continue with your thing or not? Else, Yeah, no, I'm ready. I'm here. I'm here. Okay. So it's better you take care of the department and please take care of their professional skills as well, because they are Okay. going out of their hands. No And we are worries. getting a tons of complaints specifically for rangers. So please stay close. Go. For now, okay, we are not shutting it down. And Eddie. Yes sir. So, see, I'm not your enemy over here. I'm just telling you just Yeah. कि जब जहाँ बात करनी होती है ठीक तरीके से बात करो। अगर मैं एग्जाम लेने आया तो वहाँ पर मजाक से जरूरत नहीं था तुम्हारा। I don't know like वो सीरियस है कि नहीं, that's why. हाँ तो अगर नहीं पता सीरियस, अगर तुम्हारा कोई एग्जाम हो रहा है, अगर तुम उसको सीरियसली नहीं ले रहे हो तो देन आई डोंट नो व्हाट्स योर जजमेंट ऑन दैट। ओके ओशन, सो इट्स बेटर तुम बात कर लो अपनी यूनिट्स, और जो मिस्टेक्स हैं मैं तुम्हें बता देता हूँ अलग से पर्सनली। एंड यू गाइस हैव 1 वीक टू व्हाट वी से टेक द थिंग्स बैक इन योर हैंड। अगर नहीं होता तो फिर बता देना, फिर हम लोग अपने तरीके से डील करेंगे। ठीक है ओके जाओ, यू गाइस आर डिसमिस्ड। ओशन आप कैप्टन ऑफिस में आ जाओ। डांटे तुम भी। मेरी कंप्लेंट है ये। कम प्रॉब्लम वो है, नीचे वाले कुछ नहीं करते, ऊपर वाले के ज्यादा कंप्लेंट। बुला रहा है और डांटे पीछे बुला रहा है। अरे अपने ऑफिस में बात करें। हाँ चलता नहीं इनको बता रहा हूँ। 73 विन स्क्रैचेस पकड़ूंगा तो आएंगी ना कंप्लेंट्स, गेट इट? वहाँ पे आओ। चलो 37 ने भी वो भी काउंट करा बे। रेंजर स्टेशन। हाँ 37 ने भी तो काउंट करवा, वो भी है अराउंड 10 या 12 प्लस। अब मेरे को जहाँ तक है हाँ 13 से 14 है कम से कम मिनिमम। For it to read you one, anyone up for a co-pilot? आजा भाई बैठ जा। Negative, I'm transporting the suspects from the last shootout. I gotta wait for like 3 minutes. Copy that. Other officers? जैसन किधर गया? अबे उनको फर्क नहीं पड़ता डिपार्टमेंट बंद होने से। Can you repeat that? My radio got cut off. Yeah, I need someone to respond and as my co-pilot for the 90 and किधर गया? 3, I believe. Yeah, ready 3. Yeah, लेना भाई तू रेंजर स्टेशन ले बात रेंजर स्टेशन। आर्या पार खेलूंगा मैं आज, बात खत्म चल।
Copy that. What about the other officers on this radio? भाई वो कैश को I am हेड not साइड में sure ना there's रखा, a उसको lot ये of नहीं पता hackers सस्पेक्ट पे and चार्जेस mounted कौन से here. लगाने, फिर कहता है कमांड को सब आता है। Copy that. I'll be switching back to D3. ये लोगों का बोल सकते छोड़ो कुछ। बबल में पिट करता कहते हैं तू पिट कर, क्या बोलूं भाई, छोड़ो। अबे आज ही एक बंदा रो दिया, मैं सामने आके स्टेशनरी हूँ, खुद भाई पिट होके फिर गिर गया, कहता है रॉक तुम को भी पिट कर पता है रहा। और एडी तुझे ही पता है, जो मैं पहले जैसे पिट करता था अब नहीं करता, लेकिन इनके समझ में आएगा ही नहीं। या पीपल लाइक मेरे अबे ऊपर कंप्लेंट्स आ रही हैं, ठीक है, बट टेल मी वन थिंग बॉयज, लाइक लेजिटली तुमको पता है मैं जो भी करता हूँ मैं अपने एसओपी के अंदर होके करता हूँ। कंप्लेंट्स आ मैं रही भी है तो आई एसओपी डोंट के गिव अ अंदर फक करता अबाउट इट, हूँ। नहीं आई डोंट गिव अ फक अबाउट इट, मेरे ऊपर कंप्लेंट्स आ रही है कि नहीं आ रही, मैं अपने एसओपी में हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता उससे। अबे तू वो छोड़, मेरे को आज रॉक से पता क्या कहते हैं कि तेरे कॉम सही नहीं, तू ये करता। मैंने बोला मेरे को आज तक एक ऑफिसर ने मुंह पे आके बोला नहीं कि तेरे कॉम सही नहीं है, मेरे को एक दिन में आके तुम बोल रहे कॉम सही नहीं, तो मैं कैसे सुधारूंगा? मेरे को पता है तो मैं क्या गलत कर रहा हूँ, और आके बोलते नहीं कि तू ये गलत कर रहा है, ना स्ट्राइक पॉइंट दिए ना कुछ दे रखा है, फिर भी बोलते हैं तू ये कर रहा है, क्या बोलूं? अब इनको सीधे एक्शन लेने तो मैं फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, ले लो एक्शन Are भाई। you processing one of these suspects who involved the shootout? और एक्सप्लोरर में बबल ज्यादा बड़ा होता है, ये भी नहीं पता इनको। अबे इनके इनके नहीं आता समझ में। उस दिन रियो सर ने कंप्लेंट, ना इसलिए उस दिन रियो सर ने कंप्लेंट कर दी ना जाके कि नहीं एक्सप्लोर ठोक रहा था। मेरे पास लेजिट वीडियो प्रूफ है कि क्या हुआ था उस टाइम, लेकिन नहीं ना, फिर ये बोलेंगे कि अगर ये ऑफिसर एक ऐसा कर रहा है तो बाकी लोग क्या करेंगे? What's क्या happened? बोलूं? Is the other suspect running on foot? That and 4. I shot him on the leg, then 2 is running. You uncuff him, right? यहाँ पे सब मस्ती करने आते हैं लेकिन ये सीरियस करने आते हैं यहाँ पे सब। Two is hanging. Oh, okay, get it. Where's the other suspect? Give me 20. Backside of the box. Got the suspect. I'm trying to come. Give me 2 minutes. Sir, they're requesting a bike unit as well. Do you want me to go? Yeah, but are we not? Where's the third suspect? I guess. क्या? Like, 322 plus 415 will be on cycle for bank robbery chase. All the other suspects to the PD. Okay, then you go to the. Are you going to the 90 then? Yeah. Okay, 10-4, sir. Take some IFAX actually. He asked me to take some IFAX. ये नोआ को बुला रहा है, उसका वो हुआ था कोड 0। एक सेकंड गाइस, अब मैं आज वाला अपना निकालता हूँ एक क्लिप। हाँ, youtube.com। जितने भी कमांड मेंबर्स हैं एक लॉस हो गया। Took a right. He's going north. I see him. Whatever. Jimmy, sir, are you going to the 90? Because they need him urgent. No, I guess it's super. I didn't even man. 10-4, y'all. Gonna be heading southbound. You need additional. अरे Negative for now. There's a active 99A A plus going on. अरे Anyone spotted it? There's Ba- bank robbery. I was stationary, man. I'm not driving the Explorer, alright? So don't charge on Caudal. Requesting for a ride along the- No, just take it, bro. Just take the boost. I don't want No, it. listen, Okay, listen. come take I it. didn't. अरे To other frequency. They need backup. Gonna be heading southbound. Basically. We'll be there at the 90 dispatch. Come on, man, pull over, bro. Let's have a word. अरे But Yo, I was stationary, man. I'm not driving the Explorer, alright? So don't charge on Caudal. Yo, listen, Take don't it. charge on No, just Caudal. take it, bro. Just take the boost. I don't want No, it. listen, Okay, listen. come take I it. didn't do anything. Nah, because take I it, did take the it. CV pair. Gonna be heading southbound. Basically. Come on, man, pull over, bro. Let's have a word.
Nigel's situation is on which radio 2? Yo, go take, bro. Take. Radio 3. Yo, go take, bro. Take. Push, bro. I didn't even came Enjoy, slammed enjoy. me. अरे अरे ओए कॉर्डल हाँ वो तेरे को वो याद है क्या बोलते हैं ये जो अभी हुआ था कॉमेट वाला हाँ तेरे को भेज रहा देखिए जरा भेज भेज इस बार 0 show me 1041. Dispatch 0 1041. 10-4, sir. Anyone need 77 78? There's an active 90, but I think they are good on units right now. 10-4. भाई छोड़ो भाई देखा मैंने अब बोल इसमें मेरी गलती है रो रहा था वो मैंने इसमें क्या किया भाई छोड़ो कोई दिक्कत नहीं तुम्हें पता है ना बस छोड़ो अपने क्या जा अब इसमें कहेंगे हमारी गलती है देख भाई अगर बता इतना सीरियस रहना है तो मैं जॉब responding to छोड़ the दूंगा 90 मेरे से and नहीं alpha होगा इतना blocker? सीरियसनेस वाला काम Same. बता लो मैं मस्ती करने आता हूँ भाई मैं यहाँ पे ज्ञान सुनने नहीं आता किसी का कि हाँ I'll भाई take ये that ऐसे as a करो no वो ऐसे difficulty करो ये responding ऐसे to करो the 99 and alpha. एक टाइम तक ठीक है बाकी ज्यादा नहीं चलता मैंने पहले ही बोला शरीफ को things are getting too much serious like nowadays I'm not भाई feeling बहुत anything ज्यादा हो रहा है भाई पहले नहीं था इतना Hey, पहले available मजा आते थे units on चीजें करने shadow. में अब मजे नहीं आते अब लगता है भाई तुम्हारे ऊपर इतना 10-4. बोझ डाल रखेगा नहीं तुम ये चीजें ऐसी करोगे Is there any unit responding to that 99 alpha trackers over at Palito? I'm here to retrieve my car. 10-4, sir. I'm 76. you need to do You're that you talking need about to the do tracker that near Palito, right? be professional Yeah, ये 10-4. वो मैं हूँ भाई मेरे को जो करना होगा I'm मैं going वो on Los करूँगा Angeles freeway. भाई मैं Easy अभी 5 तक minutes from मैंने Palito. बताया एसओपी तोड़ के कुछ भी नहीं करा जो करता हूँ सब एसओपी में I'm करता on a हूँ CUPI. अरे नहीं भाई इनको Try to get लगता है a तुम ये charger. कर रहे हो वो कर रहे हो स्टेटमेंट रटो भाई क्या समझाऊंगा It would be a blue control. It would be full blue. Disregard. It would be a blue on white. A plus. 22 McCoy. I think he's on radio 3 for the 1090, sir. आवाज नहीं आ रही तुम्हारी मेरे को बोलो मैं कुछ बोले हाँ अब आ रही क्या कंप्लेंट्स है ओशन कुछ regarding बोलूंगा नहीं us? कुछ बोलूंगा नहीं तो सुनाई देगा अबे भाई मुझे ये हाँ। बता दो मैं एक 2-3 हफ्ते आया नहीं कि तुम क्या हो गया भाई इतना भाई क्या कुछ ही नहीं हो गया कुछ भाई नहीं मैं हुआ बताऊं ना भाई सुनो अचानक से अरे मैं ऐसे बताऊं ना ओशन सब सर शांत सब एक शांत बोलो बोला ना एक मैंने बोलो एक बोलो जब बोला ना मैंने सब शांत ओशन आप बोलो कि क्या हुआ बात कर भाई मैं पहले बताता हूँ उन्होंने जो भी जूनियर रेंजर है सीनियर रेंजर उन्होंने बोला वो सारे अच्छा काम कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं बट उन्होंने बेसिकली बोला कि जो भी कमांड की पोजीशन में और जो बाकी मतलब बेसिकली नेमली अपने टीम ऊपर के वही बोला उन्होंने और कि इन तीनों से इशू है Negative. We're still एंड following the tracker. यार बचपन से कि
कि डिसिप्लिन नहीं है, और जहाँ पे तुमको जितना बोलना चाहिए उतना नहीं बोलते, रेडियो पे लड़ते हो और मस्ती करते हो, प्रोफेशनलिज्म नहीं है, मतलब समझ रहे हो ना, ऑन फील्ड बकचोदी सीरियस करते हो। कॉप बनना है क्या फिर, ये बताओ? नहीं मतलब सीरियस कॉस मत बनो, बट सीरियस Like, tell me मतलब मस्ती one मजाक। thing, Ocean, like regarding this, okay? You are you. मैं तुम बनने से नहीं रोक सकते, लाइक समझ रहे, जो तेरा मन करेगा वो तू करेगा अबे ना। भाई इतना डीप मत जाओ, वो बेसिकली पॉइंट ये है कि बकचोदी करो पर अपने अपने साथ बकचोदी करो, मतलब किसी के सामने मत करो या किसी और के वहां पे, बकचोदी किसी के मैं भी सामने करता हूँ नहीं भाई। करी है भाई, किसी के सामने नहीं करी। भाई हम तो करते भाई उससे जो कंप्लेन सामने वाला देख है, के करते हैं, समझ रहे हो? सामने वाला बंदा देख के करते हैं, कौन बंदा वो है मैं फिर हम समझ रहा करते हूँ, हैं। बट अब कंप्लेन आया है तो मैं क्या ही बताऊँ तुम्हें, मैं तो बता बस रहा यही हूँ कि भाई कंप्लेंट ये तो है, हुआ है। आएगा ही भाई। मैं तुम्हें कौन सा बोल रहा बस हूँ, तुम कर यही रहे हो। यही कंप्लेंट है हाँ बस। यही है भाई, यही है जो बोल रहे हैं कि So, मैं नहीं like, होता तो आउट ऑफ according to ऑर्डर। you, है ना, according to you, like, tell me one thing, like, it is a valid reason department, according to you. Not really, I mean BCSO Yeah, is it's not a not big doing thing. anything। Yeah, भाई मुझे तो इतना बड़ा डिपार्टमेंट खोल रखा है उनका, कुछ उसके होता नहीं है, अलावा बस लाइक वो भाई मैंने डिपार्टमेंट फुल एक्टिव है, ठीक है। हर बंदे का काम पता है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, ठीक है। सब कुछ उस बेसिस में चल रहा है। हो क्या रहा है कि हम लोगों ने ना सिटी में लोगों की मार रखी है गांड, ठीक है, बस वो सीन है। सब ओशन सर एक बार बताओ, एक बात, एक जगह ये लोग कहते हैं डोंट बी रीनेट विद क्रिम्स, एक जगह ये कहते हैं बकचोदी मत करो। I'll tell you one thing regarding that, Ocean. एक हाई कमांड कुछ और कहता है, एक हाई कमांड कुछ और कहता है, एक हाई कमांड कुछ और कहता है, तो उनमें खुद में ही नहीं पता उनको कि क्या चल रहा है, लाइक टू बी ऑनेस्ट। आधी अगला चीजों बंदा में क्या खुद कर रहा कंफ्यूज है, रहते हैं। अगला बंदा क्या कर रहा है उन लोगों को नहीं पता है। अगला बंदा कोई और कमांड देता है, अगला बंदा और कोई और कमांड देता है। सो लाइक व्हाट यू से रिगार्डिंग द व्हाट यू से चेन ऑफ कमांड, जो मेरे को सही लगता है मैं वो करता हूँ, सिंपल। एसओपी में ये भी लिखा है ब्लाइंडली चेन ऑफ कमांड फॉलो नहीं करना चाहिए, सिंपल एज फक। अबे वो मैं बात समझ रहा हूँ, बट ये कुछ लोगों को अगर काम धंधा नहीं होता तो वो कुछ भी पॉइंट आउट करते हैं, तो उस सिचुएशन पे इट्स ऑलवेज टेल मी बेटर। वन थिंग, टेल मी वन थिंग ओशन, तेरे सामने बूस्टिंग हो रही है, ठीक है, तेरे सामने बूस्टिंग हो रही है, ठीक है, तेरे को सीनियर बोलता है जाके उसको टैकल करो, उसके गन पॉइंट पे हॉस्टेज, 603, same ठीक है, traffic. I'm gonna उसको जाके टैकल करो, उसको गोली मारो, ये करो वो करो, ठीक है, उसको दैट डजंट मेक एनी सेंस टू मी, ठीक है, मुझे सही नहीं लगा, मैंने नहीं किया, सिंपल। अगर मैंने वहां पे चेन ऑफ कमांड फॉलो नहीं किया, यू कैन टेक व्हाट यू से डिसिप्लिनरी एक्शंस ऑन मी, हाँ, और वो और वो लेते हैं डिसिप्लिन हमेशा, एक्शन, और और नहीं वो नहीं, और डिसिप्लिन वो एक्शन हमेशा लेते हैं, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई एक काम कर बट लो भाई, बट बट क्या बट इशू। दैट डजंट मीन कि लाइक दोस गाइस कैन व्हाट यू से लाइक शट डाउन आवर डिपार्टमेंट। तो एक काम करते हैं ना फिर, अगर तुम या तीनों को लग रहा है कि यू नो यू वांट टू टेक दिस इंडिविजुअली, देन एक जाके बात कर लो, एक साथ बोल दो नहीं, कि इंडिविजुअली की बात नहीं है, लाइक आई नो दिक्कत कहाँ पे हो रही है, वो चीज मुझे भी पता है, और मैं भी दूध का दूल्हा नहीं हूँ, ठीक है, मैंने कभी ये चीज बोला नहीं ना, मैं आज बोलूंगा, मैं भी ऐसा दूध का दूल्हा नहीं हूँ कि मैंने हर चीज परफेक्ट की है, मैं सर भी इस हम चीज तो में गलत बोलते ही रहा हम हूँ। करते हैं, लेकिन हम लिमिट में रह के करते हैं ना, सामने वाले को भी नहीं, दिक्कत नहीं हो, मैं तो खुद को भी चौड़े में दिक्कत। करता हूँ, नहीं नहीं, मैं चौड़े, देखो बस दिक्कत क्या हो जाती है ओशन, हम करते हैं चौड़े में, ठीक है, तो दिखता है, वो सीन हो जाता है, लॉस एंटोस जो करते हैं चौड़े में करते हैं, सबके सामने करते हैं, ना कि ऐसे लाइक यू नो वैसा सीन नहीं है, मजाक कर लिया आपने उसमें ही कर लिया, या जो भी एक्स वाई जेड, और लीनियंसी तो मैं देता ही नहीं किसी को, उसमें मेरी गलती नहीं है। हर कॉप का यार एक काम करने का अलग तरीका होता है, अब अगर तुम उसको उसके बीच में भी एसओपी गोड़ोगे तो फिर कुछ ही नहीं हो सकता, फिर तो डिपार्टमेंट छोड़ो, बंद करो, जाओ अपने, कोई काम मतलब नहीं है। सर तुम दोनों का तो वो हो गया, 3 लोग बोला ना, मेरा क्या कंप्लेन आया, मेरा तो सही भी तेरा नहीं कोई कंप्लेंट नहीं है, तेरा कोई कंप्लेंट नहीं, भाई कंप्लेंट कंप्लेंट कमांड सुन, की आती है हमेशा भाई, मेन कंप्लेंट है मेरी, आई नो, ठीक है, नहीं, 3 मेरी तो बोला ना कंप्लेंट, ओशन ने अभी, मेरी, अरे 2 हाँ तुम लोग हो छोड़, गए, तीसरा तो कोई मेरी बाकी नहीं कंप्लेंट तो है, देखो, मैं ही आऊंगा। सुन, मेन कंप्लेंट है मेरी, उसके बाद आ जाती है सेकंड कंप्लेंट ओशन की, क्योंकि वो एक्टिव नहीं है, ठीक है, और तीसरी कंप्लेंट आती है इसकी एक्सप्लोरर की, अबे ये वो अपना लिख लो जेसन मेरे से, ममोआ, ये तो ये रिजाइन देके उसकी तो वापस कोई आया कंप्लेंट है। नहीं आती ना, वो कमांड में है, हाँ वो अपना मस्त मजे से घूम रहा मैं होता तो है, कमांड में अभी भी नहीं हूँ। नहीं नहीं तू हाँ, वो शांत तो बैठ, कमांड अभी ही नहीं सुन, है, मैं मेरे से पिट रैंक तो जाएगा है ना तू, तुम्हारी, अभी क्या है रैंक तुम्हारी? यही मारूंगा मैं तेरे सीनियर को, ऑफ रेंजर।
हाँ भाई वो ऐसे बोल रहा है इसको ना नहीं मेरी नहीं तरफ सुन से। तो इसको बोलते हैं डिपार्टमेंट बंद कर देंगे, ठीक है? तो तू निकल जा यहाँ से पहले, चल। मैं ही तेरे को बोला था ना वापस आने के लिए। कौन? मैं नहीं आया, जेसन मेरा जेसन की बात अबे कर रहा तुम हूँ। क्यों नहीं? अबे तुम्हारी बात ही नहीं हो रही है भाई, तुम चिल करो भाई। ठीक है तू भाई तेरे ऊपर कोई पॉइंट नहीं है, तू एकदम पापा का पर है, शांति बैठ। अब यार देखो सिंपल है, मैं बताऊंगा। काम करो थोड़ा, ले लो करो कुछ टाइम, देखते हैं उसके बाद बकचोदी फिर करेंगे, फिर बोलेंगे अरे फिर सर थोड़ा ले लो काम कर के लेंगे। टाइम पे काम करते हैं, रोज के फिशिंग के लाइसेंस चेक करने जाता हूँ, मैं बनाता अबे हूँ मैं रोज के समझ रहा 10 हूँ लाइसेंस भाई, बनाता और हूँ। जो और मुझे मुझे पता है पता तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, things देख are भाई getting too much serious, pretty much serious like nowadays, and I don't get the point. You get it? यार मैं समझ रहा हूँ, मैं 100% समझ रहा हूँ, और ये चीज तुम करो बट अपने डिपार्टमेंट के अंदर करो, बाहर मत करो, बिकॉज लोगों को वो नहीं जच रहा भाई। तभी तो हम लोगों ने डिपार्टमेंट ये वाला खड़ा करा था, क्योंकि हमें ऐसे वक्त ऐसा Tell वो me चाहिए one नहीं था thing, ना। if I'm doing anything ना, if I'm doing anything under my SOPs, ठीक है, SOP के अंदर होके मैं कुछ भी कर रहा हूँ, that doesn't make like मेरे को नहीं लगता वो गलत है। सिंपल। अबे देखो अगर सर मैं एक मेरी बार बताओ, SOP के ये अंदर रह के कुछ भी कर रहा हूँ और मेरी ये पर्सनैलिटी हाई कैसी भी कमांड है, सर, हाई कमांड इतना कहता है तुम ये कर रहे हो, तुम वो कर रहे हो, आज तक ना एक एक्शन लिया है ना हमें वार्निंग दी, हमें बोलते ही ना कि तुम ये कर रहे हो ये मत करो, आज तक नहीं बोला मुझे तो आके एक बार भी। फिर मैं तो एक फ्री एक की दिन आ स्ट्राइक्स जाते खुद हैं, जाके लेता हूँ, खुद जाके मैं लेता हूँ खुद, फ्री की स्ट्राइक्स। और फिर है ना एक दिन जेसन लास्ट सामने में खड़ा आके है, बोलते हैं, एक दिन लास्ट में आके बोलते हैं तूने ये कहा था चल अब चल जा। ये कौन सा ठीक रीजन है भाई? यहाँ पे रेक्स डेविस बाजू में बैठा है, फ्री की स्ट्राइक्स मैं खुद लेता हूँ जाके। मेरा तो तुम लोगों को पता ही है मेरे साथ तो क्या ही होता है, मेरी तो बात ही छोड़ो। सिटी की तरफ आ रहा है क्या? स्पेशल कोड। मैं तो स्पेशल ये आइटम हूँ, छोड़ ही मुझे दो। लग रहा है सब जब कल बमचा आया था ना उसकी वजह से हो रहा अरे वो उस अमचा बमचे को बमचा छोड़, वो तो छोड़, वो आए, वो उसको महीने छोड़ो। में एक बार आएगा, वो उसको छोड़ो। और भाई तुम्हें बकचोदी चिल करना है तो थोड़ा जब फिशिंग करने देखने जा रहे हो, तो मीट हंटिंग कर रहे हो, वहाँ वहाँ करो Things ना are getting सिटी में। pretty much serious nowadays. Don't know why, but you know, like यार देखो we are ऑनेस्टली the मैंने तो ones ऐसे बंदे, who's getting सुनो targeted. मैंने तो ऐसा बंदे, देखो मैंने ऐसे बंदे चूज करे, मुझे पता है कि भाई डिपार्टमेंट सही चल रहा है, मैं एक महीने भी नहीं था, मुझे पता है भाई ये जो बोल रहा है क्या सेंस बनता है कि अगर मैं होता तो कुछ और होता, अगर मैं नहीं होता। भाई तुमको कोई मैंने कभी सेंस कुछ नहीं बोला बनता है? सर। मैं तुमको कभी कुछ बोला ही नहीं है कि ये मत करो वो मत करो, मैं बस लाइक कोई कंट्रोल में नहीं रखता ना, ऐसा मेरा कोई वो है कि भाई इतना मैं स्ट्रिक्ट Yeah. हूँ कि मैं कुछ तुम्हें मैंने भी, डिसिप्लिनरी और एक्शन लेता हूँ या देखो मीटिंग करता लाइक हूँ आफ्टर यू मैंने भी वही बंदे लिए जिनको प्रमोशन डिमोशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, जिनको ट्राइहार्ड से कोई फर्क नहीं पड़ता, जो अपना चिल मारने आते हैं, फन करने आते हैं, ठीक है। मैं वही बंदे चाहता था और मैंने वही बंदे लिए, उसके अलावा मैंने एक बंदा नहीं लिया। मैं मेरा वही प्रमोशन अभी हुआ है, पता है, एक हफ्ते पहले। या मेरे को लौड़ा फर्क नहीं पड़ता प्रमोशन से, मैं स्टार्टिंग से और सीनियर रेंजर हूँ, पता है नहीं ना नहीं, अभी। और मेरे को एलएसपीडी में भेज दे, क्यों? बिकॉज ऑफ द केस लॉस। ओके, क्यों? क्योंकि मैंने फोर्थ को फिफ्थ बोल दिया, सिंपल। मेरे को तो डिमोट ही कर दिया, मेरे को बोला तुम एक हफ्ते के लिए सीनियर रेंजर, नो एक्सप्लोरर, नो कमांड, नो डिमोशन प्लस मेरे को ट्रांसफर मिला है। हैं? क्या है बोलूं? यस, ये कब ठीक हो है। गया? मैं हर चीज फ्री में ले लेता हूँ मैं, और मैं कुछ बोलता नहीं हूँ। हाँ मैं भी कुछ नहीं बोलता। मुझे और ऑक्सर आके कहते हैं कैप्टन ऑफिस में, हाँ मैंने पूछा क्यों, तो कहते तेरे एसओपी टेस्ट है, तेरे कॉम्स अच्छे नहीं, वो अच्छे नहीं। मैंने बोला सर आपने मेरे को एक बार भी पहले रिमाइंड करा कि मेरे कॉम्स अच्छे नहीं है? लास्ट डे सीधे दिन आके बोल देते हो कि हाँ तू अच्छे कॉम्स नहीं देता। मैंने कोई सेंस नहीं बनता इस बात का। यार आए नहीं बना क्या अभी तक? बंद हो गया अरे है, बन के बंद बंद भी हो गया। कल शट डाउन हो गया, डीओजे संभालेगा उसको। तो ये क्या है, नया आया है एसएसपीआर का? वही मैं दिख रही हूँ, क्या आया है दिखाओ, देख लो ना खुद नया ही, बंदा है हमारे डिपार्टमेंट। कौन? देखो हाँ प्रमोशन एंड डिमोशन में। सही है सहज गिल, अच्छा बंदा है वो। एडी ने बोला है, बंदा तो एडी ने ठीक बोला। है, बंदा तो अरे ठीक अच्छा बंदा है, सही है, मैंने एक्सेप्ट अच्छा किया है, बंदा। मैंने किया तो फिर ठीक है, तो फिर ठीक है, बंदा तो ठीक है, है, मैंने खुद एक्सेप्ट किया है। ठीक है, ठीक है, फिर ठीक है। नहीं सही है, कौन वो नाम कौन बंदा है? अच्छा है, सहज गिल, हाँ बंदा तो ठीक है। अच्छा बंदा है वो, ठीक है चल। वैसे डीओजे तो अपने जेब में है, तो वो टेंशन नहीं। मैं बोल रहा था देखो, अरे बट बात डीओजे डीओजे की नहीं है ब्रो, लाइक यू गेटिंग मैं माय समझ पॉइंट रहा ना, हूँ यार। व्हाट आई एम देखो मैं सेइंग। सिंपल, देखो यार या अभी जिस सिचुएशन में हम हैं, सिंपली मैंने बताया कि बस चिल करो, ले लो करो, थोड़ा ज्यादा मस्ती मजाक मत करो, अपने में करो, कोई सीन नहीं है। मतलब वही है, मत दिखो मत, बस सिंपल मैं तो ये बताऊंगा इसका, ये अरे बात मस्ती मजाक की नहीं है, लाइक दोस गाइस आर टॉकिंग अबाउट आवर प्रोफेशनलिज्म एंड ऑल शिट, लाइक भाई आई डोंट गिव अ फक अबाउट इट, ठीक है। जब मेरे को दिखाना है कि मैं प्रोफेशनल हूँ तब मैं हूँ प्रोफेशनल,
सर ये सिंपल। बताओ ओशन सर, आपने एसओपी पढ़ी है हर रट टाइम के? हर टाइम मेरे को ये नहीं हाँ करना कि कोई भी रट रास्ते रखी में है जा रहा एसओपी है। पूरी? हाँ नहीं pretty टेल मी much वन, नहीं एक बात बताओ, मेरे को ऐसा 100% नहीं तो है नहीं मन 80% तो कि होगा। कोई भी सड़क पे जा रहा है, हाँ सर आप कैसे हो, सर आपको कोई दिक्कत तो नहीं हुई। मैं नहीं हूँ ऐसा आदमी भाई, दैट्स नॉट माई पर्सनैलिटी, तो मैं क्या करूँ उसमें। भाई देखो यार मेरा देखो सिंपल सा पर्सनालिटी। फंडा है, सिंपल सा बोलो। फंडा है, मौज करने आता हूँ। जिस दिन ये मौज बंद हो गई, मौज बंद हो गई, मैं भी नहीं आऊंगा। सिंपल सी बात। वो तो बताया ना, मैं मौज करो यहाँ पर अपनों में करो ना भाई। भाई दिखे ना, बस रेडियो पे वक्त अरे खुद ही अब मत करो सब। सर दिक्कत रेडियो पे क्या है तो ना, कुछ किया ही सामने नहीं। वाले, सुनो सुनो मैं रेडियो पे बताता हूँ आई आपको। टेल यू वन थिंग, ठीक है, अगर आर यू टॉकिंग अबाउट व्हाट यू से लाइक दोस गाइस आर टॉकिंग अबाउट आवर रेडियो एटिकेट्स एंड ऑल, नहीं ऐसे ठीक है। ऐसा कुछ नहीं, हाँ मतलब हाँ बस ये बोला था नहीं कि तुम नहीं, सीनियर अगर को। अगर बोला अगर है, ये बोल रहे एसओपी एग्जाम में हैं, बोला था ये ठीक मेरे है को। ठीक है, अगर ये चीज बोल रहे हैं ना, तो गाली गलौज होता है रेडियो पे, जो कि हमने नहीं किया आज तक, ठीक है। सर और वो कोई नहीं देखता है, ठीक है, वो कोई नहीं सर देखता है। और मैं सर बोलना वो चाहूँ भी तो मैं हाई बहुत कुछ कमांड, बोल ठीक सकता है। हूँ। और सीन क्या होता है ना, वो खुद करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती, हम करते हैं तो सबसे बड़ी दिक्कत है। ठीक है, और गाली गलौज किसी ने किया नहीं है, हाँ गाली रेडियो गलौज सर, किसी ने हमारे पता किया है नहीं रेडियो है, एक्टिव, ठीक हम है। रेडियो पे बोलते क्या है, थोड़ी मस्ती कर लेते, ठीक है हाँ कि तो तूने मेरे ये पे कर भी दिया छुट वो रहा है, कर मैंने क्या दिया। किया। मैं आपको थोड़ा ना कह रहा हूँ, मैं सबको इन जनरल कह रहा हूँ, इन नहीं जनरल। इन जनरल बोल रहे हैं बात, हाँ कि अगर रेडियो एटिकेट्स एंड लाइक रिगार्डिंग आवर व्हाट यू से लाइक रेडियो मैनर्स एंड एटिकेट्स अगर बात हो रही है, तो हमने आज तक वो चीज किया नहीं है, ठीक है। और बात हो रही है कि आप नहीं रहते हो तो यू नो कौन कमांड देखता है कौन नहीं रहता, ये सब खड़े हैं यहाँ पे, पूछ लो किस किस में उंगली नहीं की मैंने और किस किस में क्या नहीं किया, सर ये सब यही बैठे है, हैं इधर इनसे पे। इनसे पूछ लो कि कभी हमने इनको कुछ बोला नहीं है, कभी हमने इनको कुछ हेल्प नहीं करी, पूछो काय का कमांड नहीं दिया कभी। पूछ लो सर, आप आज आए हो, पूछ लो, आज देख लो, आप पता चल जाएगा सब। कब किसी को किस चीज में टोका नहीं कि ये मत करो वो मत करो, अगर नहीं बोला ठीक है, अगर उनको लग रहा है नहीं बोला तो नहीं बोला, ठीक है, गेट इट, बट वैसा देखो नहीं है। सर, अगर हाई कमांड को लगता है कि एसओपी ही सब कुछ है, तो कैडेट्स को एसओपी रटी हुई है, बना दो कैडेट्स को सार्जेंट, हम कैडेट बन जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखते हैं फिर डिपार्टमेंट कैसे चलता है। उनकी मेन मोटिव आके रुकती है एसओपी पे, तो जो जो नए नए कैडेट्स हैं उन सबको Those एसओपी guys रटी are not पड़ी, talking बना दो about उनको our सार्जेंट। SOPs only, you know, I हाँ get the मतलब एक main point, but वो मेन SOP के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, वो चीज मुझे भी पता पता है। है, but I'm telling you like only one thing, like we are the one who's getting what you say like pinpointed, हमारे ऊपर ही उंगली उठ रही है, that's my main और point, सर आपको एक चीज पता है, ठीक है। एंड वहां पे ये प्रॉपर बात हुई गई, कही गई कि व्हाट यू से लाइक अपार्ट फ्रॉम ओशन लाइक देयर आर व्हाट यू से लाइक कमांड मेंबर्स लाइक मी, नोआ एंड कॉर्डेल, लाइक तेरी बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है नोआ, तो दिल पे मत ले, ठीक है, नहीं ले जिनको मैं एसओपी तो जिनको मैं बोल रहा एसओपी हूँ। नहीं पता, ठीक है, हाँ तो हम न्यूज़ वालों को क्या समझाएंगे? मैं 10 लौंडे खड़े कर दूंगा अभी जो कमांड में है, और एक चीज पूछूंगा और बोल नहीं पाएगा बंदा। नहीं सुनो एडी, मुझे प्रॉब्लम ये लग रहा है ना कि हमारा डिपार्टमेंट बहुत छोटा सा है। देखो गिने चुने लोग हैं, बहुत लिमिटेड है, और जो है ना या बहुत आते हैं। स्नेक को आपको और ओशन को छोड़ के बाकी सब रोज होते हैं, ओशन बहुत सर लंबे टाइम आपको तक एक चीज होते हैं। पता है कि उसमें प्रॉब्लम है। पाक रेंजर्स डिपार्टमेंट की वजह से सिटी में कितने लोगों को क्या क्या मिलता है, मैं बोल नहीं सकता बस यहाँ पे। बाकी डिपार्टमेंट से पूछो, कुछ ही नहीं होता। पूछो सिटी से हम जाके कौन जाके सबसे ज्यादा नहीं, इंटरेक्टिव है। हम जाके फिशेस भी पकड़ते हैं, हम जाके एस प्लस भी पकड़ते हैं, मैंने खुद अकेले 70, हाँ मैंने खुद अकेले जाके 73 विन स्क्रैचेस पकड़ रखी अभी तक। सर ओशन सर चलो एक चीज देखते हैं, रॉक सर ने एक बात बोल दी, पाक रेंजर्स का काम क्या होता है, ठीक है, वाइल्ड लाइफ देखना, ठीक है, हम पूरा पार्क रेंजर कल से शिफ्ट हो जाते हैं ना, हम सिटी में घूमेंगे, ऐसी सिटी की ऐसी तैसी रहेंगे बाहर, हमारे कोई फर्क नहीं पड़ता, आ जाएगा फिर प्रोफेशनलिज्म सारा, जो पार्क रेंजर का काम है हम करेंगे, वो हमें क्या मतलब। I got visual, westbound heavy continue, continuing straight, heading towards light wind there. करो देखो एलएसपीडी देखेगी सिटी में, बीसीएस तो देखेगी सैंडी में, हम अपना रहा करेंगे इधर की साइड एलएस फ्रीवे और He इधर, got a 50, U-turn, taking U-turn. बस हमें क्या दिक्कत है, आ जाएगा सारा प्रोफेशनलिज्म, पार्क रेंजर्स का पूरा काम भी हो जाएगा और इनका सेटिस्फेक्शन भी दूर हो जाएगा, हमें कोई दिक्कत ही नहीं, हमें तो बल्कि और मजा है। सो टेल मी लाइक, फालतू ठीक है ओके, ठीक है हमने बैक बेच कर लिया ना, ठीक है ओशन अकॉर्डिंग टू यू बताओ क्या कर। मैंने बताया कि भाई चिल करो,
लो ले करो क्या और चिल करो, लाइक एक हफ्ते अकॉर्डिंग टू यू क्या करना चाहिए? व्हाट मतलब डू यू मीन बाय देखो चिल? जो हम मस्ती मजाक करते हैं वो हमारे अपने में होना चाहिए, सामने कोई कोई और पुलिस ऑफिसर नहीं होना चाहिए और रेडियो पे नहीं होना चाहिए, और किसी पब्लिक से अगर बात कर रहे हो तो थोड़ा थोड़ा डिसिप्लिन और नहीं, सर सो पब्लिक से ना I'll tell you one thing मैं नहीं regarding बोल रहा this, हूँ तुम कर रहे हो, regarding सुनो मैं ये नहीं नहीं बोल नहीं रहा हूँ नहीं कि तुमने करा। रिगार्डिंग दिस ओशन, ठीक है, अपने पे उंगली उठ गई, अपन ने सुन लिया, ठीक है, हम उस पे काम करेंगे, ठीक है। नाउ यू हैव टू डू वन थिंग, ठीक है, फॉर अस, फॉर आवर व्हाट यू से लाइक फॉर आवर होल डिपार्टमेंट, यू विल गो एंड हैव अ वर्ड विद व्हाट यू से लाइक आवर हाई कमांड एंड ऑल, ठीक है। हम ही पिन पॉइंट हो रहे हैं इसमें, ठीक है, बाकी लोग भी करते हैं, बट उसका क्या, कैन यू डू दैट? हाँ तो श्योर कर सकते हैं। अब मैं रॉक सर को बताऊं, नाम लेके बोलता, लेकिन फिर वो अच्छी That's चीज it. अच्छी नहीं लगती कि नहीं नाम नहीं, लेके बोलूं सामने। that's pretty much it. मेरे को इसके आगे आई थिंक द बेटर रूट वुड बी कि हम एक हफ्ता आराम करते हैं और एक हफ्ते के जैसे ही एक हफ्ता कंप्लीट होता है और हम मतलब इट वुड शो सर कि हम सर I'll take a hell रुको of a द fucking बहन then. चुप बोलने तो दो यार, बोलने तो दो यार। बोलो बोलो। मैं बोल रहा हूँ कि एक हफ्ता जब ले लो हो जाते हैं, जब ये बात थोड़ी डाउन हो जाती है, तब हम लोग इंडिविजुअली जो भी तो डिपार्टमेंट जो कर रहा है, तब हम उनको जाके बोल सकते हैं कि भाई देखो अभी तुम जाओगे, मैं जाके बात करूंगा, ये है ये देखो। वो बोलेगा तू क्यों बोल रहा है, तेरा खुद कर से नहीं चल रहा है, समझ रहे हो ना, वैसी पॉइंट आ जाते हैं। पर एक हफ्ता जब हम थोड़ा ठंडा रहेंगे, उसके बाद आएंगे, उसके बाद जब बोलेंगे तो वो बंदा कुछ रिटर्न में नहीं बोल पाएगा। तो देखो गेम ये रहता है कि मुंह खोलने से पहले ये देखना होता है कि सामने वाला चुप होगा कि नहीं। वेलकम टू द स्ट्रीम एपेक्स। अगर तुम्हें पता है तुम सही हो, अगर तुम्हें पता है कि तुम्हें जहाँ पे तुम खड़े हो वो सही पॉइंट ऑफ वो है, व्यू है, बट उस समय मुंह खोलना है या नहीं खोलना है वो भी बहुत बड़ी चीज होती है जानना। सामने तुम्हें पता है कि भाई जिस कुछ है, कोई अगर ऐसा बंदा है जिसके सामने तुम कुछ भी मतलब बोलोगे तो उसका रिपरकशंस होंगे, चाहे तो सही है गलत है, वो चीज तुम्हें देखनी होती है भाई। कहीं ना कहीं हाँ, so यू हैव टू अरे so लर्न हाउ टू no, बैक ऑफ। tell me one thing then, Ocean. Okay, suppose like you are a judge, ठीक है, and I am Eddie Brock, okay, head sergeant. मैंने तुम्हारे साथ बदतमीजी की, what will you do? पनिश करूंगा Tell me. Yeah, so वहीं पे बात खत्म हो गई ना। तो फिर मतलब ये बेसिकली तो मैं समझ रहा हूँ यार कि मतलब एक बार हिस्ट्री में जो हो चुका है उसको बार बार खींच के फायदा नहीं है, समझ रहे हो ना, मतलब लाइक आई मीन दैट सर डजंट मेक एनी सेंस। पनिशमेंट तक तो आता ही नहीं है, लाइक जो चीजें होती है ना ये नहीं उसी को क्या करते हैं, पनिशमेंट एक मैं से उठा लेता के हूँ, पटकते हेलो हैं। हेलो, पनिशमेंट मैं लेता हूँ, ठीक है ना, जो नहीं लेता मेरे को उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मेरे को मिलती है पनिशमेंट। स्ट्राइक पॉइंट्स मैंने ले रखे हैं, सस्पेंशन मैंने खा रखा है, सब कुछ मैं लेके बैठा हूँ। If you guys shoot too much, the vehicle will disable, guys. Be careful. क्या देखो इसका यही सोल्यूशन है, तुम अभी हम लोग लड़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, पर कोई पॉइंट नहीं है क्योंकि वो हो जाएगा नहीं। वहाँ पे मैं नहीं, देख मेरे रहा को है कि वहाँ पे लड़ना नहीं है, सामने से लड़ना सामने नहीं से है। अगर सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तो यू नो ना गेम ना, खेलिए, कोई मेरा फायदा मेरा नहीं, मेन समझ पॉइंट रहे देखो अभी भी यही था, देखो मैंने तुमको पहले भी बोला था रिगार्डिंग व्हाट इज एसआरयू एंड ऑल, गेट इट ओशन? मेरा स्टिल अभी भी वही पॉइंट है। मेरा ठीक है, चलो मैंने किया, दूसरों का क्या, मैं तो मेरा मान रहा हूँ, ठीक है, आई एम रॉन्ग, आई एम एक्सेप्टिंग इट। हो। भाई मैं यही ही क्यों पॉइंट होता है हमेशा? यार, ये चीज कॉन्वर्सेशन नहीं चलती भाई, क्योंकि जब तुम ये बोलते हो तो सामने वाला ये बोलता है कि तुम उसका क्यों देख रहे हो, तुम अपना देखो, उसमें तुम कुछ बोल अरे नहीं उसका सकते, क्यों, अरे उसका तो ठीक है फिर समझो ना। जहाँ पे गेम खेलने का कोई फायदा नहीं है भाई, तुम्हें पता है कि ओके भाई देन बंदा, देन समझ रहे हो। व्हाट इज लाइक, मैं मेरी तरफ से एक पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ इस पे, ठीक है, मेरा अपना खुद का बोल रहा हूँ, किसी और का नहीं बोल रहा। एक हफ्ते देखते हैं, ठीक है, जैसा चलता है देखते हैं, नहीं हुआ तो व्हाट इज आई विल रिजाइन, टू बी ऑनेस्ट। क्या नहीं हुआ, बोल क्या रहे हो? अबे तुम एक तो रेजिग्नेशन नहीं पहुंच जाते हो सीधा भाई। नहीं, अभी नहीं बैठेगा तो नहीं जमेगा यार, और क्या, सिंपल। क्या नहीं बैठेगा मतलब? अगर नहीं हमारा डिपार्टमेंट चलेगा या लाइक थिंग्स जैसे चल रही थी वैसे नहीं चलेगी, बिकॉज लाइक आई विल टेल यू वन थिंग, मैंने अभी फिर से बोल रहा हूँ कि चीजें आजकल बहुत सीरियस जा रही हैं, जो कि मेरे को लाइक पर्सनली नहीं पसंद। वैसे लाइक एनवायरनमेंट में मैं तो काम तुम्हें नहीं कौन करता। बोल रहा है सीरियस होने को भाई? नहीं अरे तो तुम भाई फिर अब बोलते देखो हैं ऐसा भी फॉलो नहीं कर अभी रहे। अभी नहीं आई टेल यू वन थिंग, अभी जो मीटिंग बैठी है वो उसी लिए बैठी है। Popped already. I popped his tire. अरे तुम बता रहे हो ना भाई, बी जो भी प्रोफेशनल करो इन पर आप फील्ड, नहीं बी प्रोफेशनल इन फील्ड, बी प्रोफेशनल इन व्हाट यू से in front of your what do you say colleagues and all shit, so वही है, being professional equals to what do you say like be serious on field। तो क्या मतलब होता है? तो उसका ऑन यही फील्ड तो में है। हो भाई यार। मेरा पॉइंट यही आता है घूम फिर के कि तुम बकचोदी करो, बट ऐसा करो ना कि कोई बंदा है ही नहीं वहां पे खड़ा, उसके सामने मत करो। अरे तो सर हम करते उसके सामने, जो सामने से कंफर्टेबल होता है।
भाई क्लियरली नॉट द केस। वो सर वो कुछ नहीं हो सकता, वो एक हफ्ते बाद भी फिर है ना कोई नई चीज उठा के ले आएंगे। लेट्स सी, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ वही देखते हैं, थोड़ा चिल करते हैं, थोड़ा ले लो देखो करते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, उनको प्रोफेशनलिज्म चाहिए, हम कर लेंगे। हम भाई यार मैं पूरे तुम्हें ये टॉपिक बता दूं, करके देखो मैं सिंपल समझाता हूँ। अभी यहाँ ना रास्ता एक ही है, कोई और रास्ता है नहीं। जो रास्ता है, जो एसएसपी बोल रहा है वही रास्ता है। अब हाँ कुछ तो कर नहीं वही सकते। तो कह रहा हूँ ना, और रास्ता मेरे उनको को वही मजा तो। नहीं आ रहा रास्ते पे चलने में। अबे भाई रास्ते सर में मैं ऐसी बात होती है। मैं तेरे को गेम बताता हूँ, एक हफ्ता उनके रास्ते चल, उसके बाद अपना रास्ता, तुझे भी पता है ये बात। हाँ तो एक हाँ तो एक हफ्ता ठीक है ना, चलूंगा ना मैं उनके रास्ते पे, वही तो बोल वही रहा तो हूँ ना बोल मैं। रहा हूँ। उनको देखो प्रोफेशनल हाँ चाहिए, हम उनके रास्ते चलते हैं। हम एक हफ्ता पूरा सिटी के बाहर रहेंगे, ऐसी की तैसी सिटी की देखेंगे, वो अपना तो तुम्हारी काम, हमारा चॉइस है जो भाई, काम है हम देख लेंगे। अरे भाई मर गया तो बच्चों शहर के वाली अंदर बातें है। मत कर कॉर्डेल, ठीक है। Respond to 99B. हाँ तो ठीक है, चिल करो और करो भाई ड्यूटी, और बकचोदी करो अपने में, करो कि बाहर ना आ जाए बात। ड्यूटी तो मैं रोज कर रहा हूँ, सुबह 11 बजे से रात को ड्यूटी तो बाकी 11 डिपार्टमेंट से सुबह सबसे ज्यादा एक्टिव नहीं डिपार्टमेंट रेंजर्स सुबह है। सुबह 11 बजे से लेके रात को 11 बजे तक करता हूँ मैं ड्यूटी, ठीक है। तो ड्यूटी का तो मेरे को कोई कुछ हाँ बोल मैं भी नहीं भी, और सकता है। मैं भी ऑन द सेकंड पार्ट टाइम जॉब है मेरा भी, लोड़े लगे हुए हैं, वो नहीं। हाँ मैं नहीं वैसे नहीं, मैं एक नॉर्मल बात कर रहा हूँ कि अगर ड्यूटी की तो बात ही नहीं है, ड्यूटी आवर्स की रिगार्डिंग यू ड्यूटी जैसे मैं आवर्स तो दूसरे के निकाल के देख लो, रेंजर अरे डिपार्टमेंट मीटिंग सबसे ज्यादा होंगे। मीटिंग हो रही है, रुको आता हूँ। हाँ ड्यूटी आवर्स तो कंपेयर नहीं कर हाँ सकते थोड़ा वैसे। रेंजर्स मीटिंग के बाद लगाता हूँ। सॉरी फॉर द कॉल, दांते का कॉल हाँ था। और जेसन तेरे से तो मेरे को कोई उम्मीद नहीं है, ठीक है। तेरे को जहाँ पे भी लेना है ट्रांसफर तू ले सकता है, सिंपल। मैं क्यों ट्रांसफर लूँ? नहीं क्योंकि वहां पे डिपार्टमेंट बंद होने की बात की, तूने बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं, तो मैं भी तेरे को बोलता हूँ मेरे को कोई दिक्कत नहीं, तू जा सकता है ऐसे। ठीक है भाई। तेरे को ट्रांसफर चाहिए तू ले सकता ईएमएस में भी जा सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत मेरे को नहीं नहीं चाहिए ट्रांसफर है। तो नहीं फिर नहीं अभी वहीं पे क्या बात हुई थी, नहीं वहां पे क्या बात हुई नहीं थी तो मेरे को डिपार्टमेंट ट्रांसफर संभालने की, चाहिए ही नहीं नहीं ना। नहीं 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 तो आई मेरे टेल को यू वन ट्रांसफर थिंग, चाहिए ना, तो आई टेल जबरदस्ती यू ले वन लो। थिंग, नहीं नहीं आई आपस टेल में यू कोई वन लड़ रहे हो, थिंग। मैं डिपार्टमेंट के तेरे को अंदर ही नहीं क्यों नहीं लड़ रहे मैं हो? अरे तेरे तो को ये कितना बोल रहा है बोला ना, मेरे को जा सीरियस, सकता है। मैं तेरे को बराबर मैं कितना इसको बोला पूछ रहा हूँ, सीरियस उसको होने फुल के क्यों मसाला बोल चल रहा है, रहा तो है। ठीक है। बोलना। जब ओशन नहीं था लास्ट मंथ, ठीक है, उसका कोई सीन था जो भी था XYZ, यू वर द व्हाट यू से लाइक ओवरवॉच एंड व्हाट यू से जो भी था, तो जितना भी एक्टिव था उसमें भी तूने कुछ नहीं किया। और बम किस पे फटा? पूरे डिपार्टमेंट पे। मेरे को फिर काहे के लिए ब्लेम कर रहे हैं भाई? अरे तेरे को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, वहां पे वही बोला गया भाई, बोले हमने किसको मैं न्यूट्रल में गया बनाया था, मैं तेरे को सुन बनाया मैं था। हाँ मैं उसके बाद गया, ठीक है, मैं 10 दिन बाद वापस आया हूँ, और तब से मैं देख रहा हूँ क्या तो रेंजर्स अरे तो काम तू कर जो रहे, भी चेजेस में तू जा रहे, बाकी वहाँ कोई दिखता नहीं है मेरे को, जो रेंजर का कहाँ काम पे होता है उधर से। रेंजर के काम पे नहीं दिखता, हैं? पक्की बात है। पक्का? मुझे कोई चिल बात करो ना नहीं भाई, सर, और कोई बात क्यों नहीं बोल सर। रहे हो भाई, अब तो चिल करो। हाँ, चलो ये आपस में लड़ना छोड़ो। नहीं आ रही आवाज तुम्हारी। कोई कुछ बोल नहीं रहा। अबे अच्छा, मुझे लगा बताएंगे वो। नहीं नहीं कोई नहीं बोल रहा। चिल करो अभी थोड़ा सा, देखते हैं क्या होता है, Rio, उसके बाद वापस आ go जाएंगे and direct नॉर्मल to पे। Rio. Can you join frequency 3 for a minute? समझ रहे हो हाँ देखते यार, हैं अपने भाई। में तो बकचोदी चल ही रही है भाई। अबे ऐसे सीरियस लाइक इतना सीरियस काम करने में अबे तो थोड़ा doesn't करना पड़ता है ना, जस्ट doesn't बाद में अरे कर लेंगे। मेरी it बात doesn't सुनो, make any sense to सुनो me सुनो bro। सुनो, ओशन जो बोल रहा है वो सुन लो। एक हफ्ता तक थोड़ा है ना लो प्रोफाइल रहो, उधर रेंज बोल। में काम करो। अंडरग्राउंड अंडरग्राउंड। हाँ जो ओशन बोल रहा है एक बार सुन लेना भाई, आईडी क्यों क्यों कर रहा है, टेंशन कर तो रहा है मैं तो मैंने कुछ बोला क्या? नहीं अबे नहीं, रुको तूने भाई, ये कुछ लो नहीं बोला, पर चाय पियो, चाय पियो, लो चाय पियो। चाय पियो भाई, चाय पियो भाई, सब लोग चाय पियो। ठंडा पिलाते माथा गरम मेरा पिला। मेरा बहुत बहुत हाँ अच्छा मूड था, रॉक ने आते बराबर दिमाग की मार चोद दी मेरी। अरे चिल मार +1 भाई, हो गया। बहुत देखो बहुत ओशन भी आ अच्छे रहा मूड है। में था मैंने उसको आते बराबर ही बोला था, सर बहुत अच्छे मूड में हो, बताओ क्या हुआ। मुझे लगा मजे सर ले रहा है मैंने वो, बोला, मुझे क्या मैं पता था ऑन सीरियस ड्यूटी, चला जाएगा। देखो मैं ऑन ड्यूटी आया ही था, सीधे कहते हैं आजा एसओपी टेस्ट लेना, सीधा डिमोट, आउट ऑफ कमांड, आउट ऑफ एफटी और एक्सप्लोरर भी ले ली। अच्छा एक ऐसे बात मन में और कौन बहुत बता अच्छे ड्यूटी बताओ, मूड में करेगा? था आज।
सुनो सुनो एक और बताओ, रेंजर्स के अलावा किसी और का हुआ है ऐसे टेस्ट? हुआ है। हाँ हुए हैं, जेक में ब्रेक भी डिमोट हुआ है, और क्या कहते हैं चीफ स्मिथ भी डिमोट हुआ है। ठीक ठीक। कल हैक करके नहीं देना, मैं 1000 भेज देता हूँ। सिटी वालों बंदों से ना वोटिंग लेके आना कि उनके सबसे ज्यादा मजे कौन करवाता है सिटी में। अरे भाई तू बच्चों वाली बातें बहुत करता है। बढ़ गया भाई, चलो भाई छोड़ो, शायद अबे चाय पी चाय लो भाई, पियो, चाय रखी इसने। चाय पी लो भाई। हेलो नवा सर, हेलो क्या करना है? भाई, किसकी किसकी गांड में चुल हो रही है? ये कौन बुलावा कर रहे हैं जाके? क्या चीज का बुलावा? मैंने कर निकाल लियो, मैं नहीं चला रहा भाई। समझा नहीं मैं क्या बोल रही हूँ। पूरा स्ट्रीम ही एंडिंग का ना लास्ट 1.5 घंटा मसाला है, शटिंग डाउन ये वो सब है। रेंजर डिपार्टमेंट बंद कर रहे हैं ये वो समझा। Elysium. Welcome to the stream. हेलो 37 कोड 3 तो तू है क्या? नहीं तो 508 to Kelly. Send it. I've finished the MDW. Just have a look at it, okay? क्या हुआ? थोड़ा मैं म्यूट हो रहा हूँ गाइस, वो कराई थी जापान में। अच्छा अच्छा समझ रही है, लोगों को बड़ी पसंद आती है क्योंकि इस आगे छोटी आंखें, मेरी बड़ी आंखें, लोग जलते थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अरे ये तो पीढ़ी की बात है। डेमो चल इधर 12 और बस ये ऑफिसर आप उन्हें कुत्ते की तरह क्यों बुला रहे थे? Just add yourself in the officers है ना, environment. ये अपने अपने साथ दूसरे होने दो। ऑफिसर को बाहर आई तो बोला उसको। नहीं मतलब वही ऐसे तो। हमें लगा कि आपके डिपार्टमेंट प्रोफेशनली काम चलता होगा तो बारा। हाँ, वो सीनियर लग रहा था नहीं ना नहीं अच्छा अच्छा अच्छा। कपड़ों से। Is there any ओके ओके ओके, सारे कपड़े allowed है. perform 1038 at black हम भी color पहन रहे सर। photo near Linde Circus, need 78 top 1 unit. Hello officer. आपका नाम क्या है मैम? 10-4? What's your हेलो duty मैम। again? कैसे हो? Linde Circus पहले अच्छा नहीं, मैं नहीं जानता ना इसलिए पूछा मैं। 10-4 all sound is थोड़ा बहुत हो गया, ठीक है ठीक है. जाओ जाओ खाना खा के ठीक हो जाओ. ओके बाय. मैं ओके ओके श्योर। हेलो सर। अच्छा Flights active 1080 on that vehicle heading straight to the Kelly Save northbound. ये ठीक है।
Hello, how may I? Yep. Taking left towards the San Andreas Avenue westbound. Yeah, can I get what do you say, like your biryani meals? Like, can I get 4? 4 biryani meals, Right. right? Palomino northbound. Taking Yeah. right. Then I need what do you say, 2 meals. Okay, ठीक है. 10-4, I just passed Outer Street. I'll be there soon. Yes sir, pay कर दीजिए. It's VCB guy. He just pulled me. Sorry, sir. Vehicle description. Black photo. ये रहा सर आपका 2 बिरयानी मील. Towards the San Andreas Avenue Olympic Freeway. सर आपके लिए कुछ ऑर्डर करना है? अच्छा. Dispatch 76 1037 on a code 3. Is there any park rangers available for hunting up Ranger station. Okay, 10-4. मेरे को कुछ डिसाइड नहीं करना. I'm in LSPD now. Okay. You guys have to do it. Yeah. I cannot do anything right now. Anyone needs 27 or 78? Back on 361. 74 for the 7778. Respond to the 1037. 10-9. Respond to 1037. There are the multiple 1037 going. Everyone back base 48 181 should be 42. Dispatch need 1078 at Goma Street Aguda. एक्चुअली गाइस स्ट्रीम बंद ही कर देता है, बाद में फिर आते हैं. ठीक है, फिर स्ट्रीम बंद करते हैं. रात को अगर होगा तो फिर से मन कर लूँगा, ट्विच पे कर लूँगा. ठीक है, I'll end the stream. Boy, watch the sodium, law of attraction, money everlasting, Latina woman on me, she got me distracted, selfish with my ways, got time, I ain't passing, keep it 2 cents, man, this shit got me laughing. Shooting all the shots, no doubt, bet it goes in, we gon' make it out, make it out.